it is expected that all of you ask questions to all the dignitaries, those who are present on the dais. Now, for example, you're interested in one particular session and there are dignitaries on the dais talking about the same issue. If you wish to ask a question directly to the dignitary standing right here, where I'm standing right now, you will get that opportunity. All are requested to see on this side where I'm pointing. If you see there, we have kept podiums ready. If you see there, you can see podium number 3. If camera can point it to, please. On there, on that side, podium number 3. If some camera can please point there. Can I have some camera pointing there at podium number 3, please? Well, I don't have any. Okay, yes. Please wave your hand, my friend. Yes. So he's there, and you can see this is podium number 3. Similarly, behind that, there is podium number 4, podium number 1 on this side, and podium number 2 right behind. All these 4 podiums is the place where you should submit your question. Of course, because there's a large audience, large gathering here, I cannot take 200, 300 questions. I'll be taking very limited questions which are filtered. There is a process behind it. All are requested to submit your questions there on those podiums. You have to reach out to those podiums. You will find a question slip there. You fill it up, submit your question, and of course it will then be given to the selection team, question selection team. And if your question gets selected, you will be called on that particular podium to ask the question. You will be asking your question. Nobody else will do that. So you will be getting that opportunity to ask the question directly to the dignitary standing here. So you are requested to go there, submit your question, and if you get lucky, if your question is really a good question, if it gets selected, you will be called by name on that particular podium, and you will be given an opportunity to ask the question. It is a very, very unique and wonderful experience. Believe me, my friends, there would be very few opportunities such in your life where you will get an opportunity to ask a question directly to the person of the national stature, probably a central minister, a cabinet minister, maybe chief minister. So it would definitely be a very, very unique experience and a very special memory for all of you. Of course, because all the Bharatiya Chhatra Sansads are available on YouTube also, you can cherish these memories for lifetime. So please, if you're interested, the moment you know that you would like to ask a question, you are requested to visit any of the, podiums, podium number 1, 2, 3, 4, they are for your convenience, whichever is closest to you. Go there, ask your question, submit there, and during the question and answer session round, if your question is selected, you will be called to ask the question. Thank you. मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप एनवायरनमेंट के प्रति सजग रह के आप सब लोग ये मैसेज खाली पौधे लगाइए मत बट एजुकेट भी करिए। आप सब लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक तरीके से ट्रेनिंग टू ट्रेनर्स की भी बात यहाँ पे मैं करता हूं कि आप सब लोग जो है यहाँ पे मैं नहीं समझता कि खाली श्रवण भक्ति के लिए आए, बट मैं समझता हूं कि आप यहाँ से जाके एक सही मायने में लीडर बनना है तो पहले आपको एजुकेटर बनना होगा, लोगों को अवगत कराना होगा
और अवेयर कराना होगा। तो अवेयर कराना और अवेयरनेस के माध्यम से काफी सारी चीजें बदली जा सकती है। ये मेरा आप सब लोगों को विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। अखबार देखा है भगत? क्यों, क्या है? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना, इसलिए ये कदम उठाया है। अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो। फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे। धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। और तेरी तो ये साले गोरे लंगूर, इधर ला बॉल, बॉल इधर ला। कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. I said the ball. Didn't you hear? Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey, Darky, we can play wherever we want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. देश का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद कराकर छोड़ेंगे। What did he say? He said that we don't know about the country, but this ground will be free today from Gorelangur. लगता है पिटने का मन बना ही लिया है। काहे किसी का मन दुखाएं? उठा लो भाई एक। चलो भाई। चलो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Would you care to translate, you darky? With pleasure, Gorelangur. Ghosts of kicks do not understand words. ये बाएं से दूसरे वाला मेरा। और ये लंबे मुंह वाला तो मेरे हथे चढ़े। लड़की जैसे चूजे को तो मैं लूंगा। बगैर टोपी वाले का सर मैं फोड़ूंगा। Let's go. We'll get them some other day. ओए ओए, ये तो बिना पिटे ही लौट गए। ओए लौटते कैसे नहीं? इरादा भी देख लिया और मुकद्दरों का साइज भी। इसी बात का तो इंतजार है दोस्त। जिस दिन सारा देश मिलकर खड़ा हो गया ना, ये लोग ऐसे ही लौट जाएंगे। विश्व की भारत अपना भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। Well, my friends, let me tell you, because the feedback I just received from all the podiums, that there are no questions flowing. I hope I have made myself clear the way the activity will go. You have to simply go to the podiums, give your questions, submit your questions. Okay, well,
It's not like that. When the dignitary comes on the dais, then you will have to go and submit the questions. Nothing like that. Now, for example, the very first session after the inaugural is freedom of expression. How much is too much? And as you all know, for example, we are going to have the eminent speaker, Shri Arnab Goswami ji, in that particular session. Now, I don't know why you all are waiting for the questions. Of course, if you want to ask a question to Mr. Arnab Goswami, you can even go right now and submit your question, so that the process begins, and if your question is accepted, you will be given a chance to ask a question. Let me repeat, ask a question to Arnab Goswami, which is probably a very unique experience. Generally, Mr. Goswami asks the question to whole country that the country wants to know. But now, if you want to know something from Mr. Arnab Goswami, you can ask the question, and you don't have to wait for that. You can even go right now and submit your questions for the session 1, which is freedom of expression, how much is too much. And of course, let me share with you, now I can see crowd moving. Now I can see 7, 8 people standing there and submitting questions. Yes, good. Okay, well, of course, please remember, there is a question selection process. It is not mandatory that your question will be selected. Please let me tell you, please, no hard feelings. Don't come to us saying, so my question was not selected. We cannot select all the questions. It is practically impossible to ask 200, 300 questions. We will be selecting a very few questions, and for that, your question needs to have that quality. So please come up with sharp, intelligent questions so that it passes through the selection process and you get a chance to ask a question to all the dignitaries. So you know the itinerary, you know everything, the way sessions are going to go. Let me tell you, every day, the number of sessions we have. Now, session 2, the colonial mindset, a rich heritage or a curse. Session 3, reservation on caste, social justice or total injustice. Session number 4, repositioning India, a global perspective. So you don't have to wait. Okay, of course, you cannot submit tomorrow's questions today, so please don't do that. Please don't submit tomorrow's questions today. You can submit today's question, all these sessions, right now, not a problem. You can submit your questions on Twitter. You can submit your questions through Facebook page of Bharatiya Chhatra Sansad. All possible social media initiatives are working relentlessly. You can take leverage and ask your questions through social media as well. So if you are not present here today, all the audience, those who are live with us on webcast, this particular program is live webcasted throughout the world. So all those who are watching this live webcast, it's a piece of information for them. If you want to participate in this question and answer session, you can do that. You will simply have to tweet us your question or ask your question on Facebook. It will go through the same selection process, and if it gets selected, we will ask your question here from this stage. So please start preparing the questions in your mind. Your question has to be really, really good and qualitative question so that it passes through the process. And for all the questions coming into your mind for that particular day, you can submit in the beginning of day or during the breaks. You don't have to wait for the session to begin. Okay? Thank you. Thank you very much. Take maximum opportunities to have a nice experience in this Bharatiya Chhatra Sansad. My colleague, Neelam Sharma ji, is here. And that indicates that we are going to begin with the session soon. I hope you will enjoy this 7th Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause for yourself and all the participants, those who are participating. Thank you very much. You can see the procession walking in. Over to you. बहुत बहुत शुक्रिया गौतम बापट, और एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करेंगे हम सब यहाँ विवेकानंद मंडप में, मायर्स MIT पुणे के इस प्रांगण में। हम अब सभी छात्रों का, छात्र नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि और हमारे आज के विशिष्ट मेहमान यहाँ पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
अपने मुख्य अतिथि और अपने विशिष्ट अतिथियों का यहाँ विवेकानंद मंडप में हम स्वागत अभिनंदन करें। मायर्स MIT पुणे के विवेकानंद मंडप में 7वीं भारतीय छात्र संसद के इस इनॉग्रल सेशन में, इस उद्घाटन सत्र में 3 दिनों की गंगा यमुना, विचारों की गंगा यमुना भारतीय छात्र संसद के इस मंच से बहने वाली है और हम सब उसमें गोते लगाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय विजय गोयल जी, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच पहुंच गए हैं। हम उनका जोरदार तालियों से यहां अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच पुणे के मेयर प्रशांत जगताप जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच जाने माने महान कंप्यूटर वैज्ञानी डॉक्टर विजय भटकर जी, हम उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं भारतीय छात्र संसद के इस 7वें अधिवेशन में। जोरदार तालियों के बीच हम अपने माननीय विशिष्ट अतिथियों, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विजय गोयल जी और हमारे तमाम विशिष्ट अतिथियों, महानुभावों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 7वीं भारतीय छात्र संसद, जहाँ छात्रों का ये समागम, ये विशाल जनसमूह जो इस बात की ताकीद करता है कि हम यूं ही 7वें वर्ष में प्रवेश नहीं कर गए हैं। ये एक ऐसा सशक्त मंच है जो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में पहला है, जहां भारत के छात्र और छात्र नेता इकट्ठे होते हैं। 7 वर्ष पहले इस अनूठी संकल्पना का जन्म हुआ था और उसके बाद से प्रतिवर्ष ये यात्रा चल रही है। मायर्स MIT के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के तत्वावधान में भारतीय छात्र संसद का जन्म हुआ और 7 वर्षों से विभिन्न विचारों का यहाँ पर समागम, जिनमें राजनीति, समाज, शिक्षा, कला, फिल्म और टेलीविज़न, ये तमाम विषय हैं जिन्हें हम यहाँ पर उठाते हैं और हमारे छात्र नेता अपनी बेबाक राय यहाँ रखते हैं और देश की महान हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं, अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। और ऐसा ही ये समागम भारतीय छात्र संसद 7वां अधिवेशन, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। इस इनॉग्रल सेशन में आप सभी छात्र नेताओं का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच छात्र नेता देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पधारे हैं, नेपाल से पधारे हैं, एम्स्टर्डम से पधारे हैं और मुल्कों से पधारे हैं। हम उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मित्रों, अपनी परंपरा के अनुसार ये विशाल क्लासरूम जिसकी आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है, हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं वर्ल्ड पीस प्रेयर के लिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया हाथ जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे विश्व शांति के लिए। नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु
तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तो 7वां अधिवेशन भारतीय छात्र संसद का हमारे युवा नेता देश भर से यहाँ पधारे हैं, हजारों की संख्या में। और आपको बताएं कि वेबसाइट के माध्यम से सीधे प्रसारण भी हो रहा है वेबकास्ट के जरिए हमारे इस अधिवेशन का, जिसमें अलग अलग सत्रों में विशिष्ट मेहमान यहाँ पधारेंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे। भारत के लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से पुष्ट हो, इसी का एक कदम, इसी का एक प्रयास ये भारतीय छात्र संसद की संकल्पना, जो कि पुणे में आकार लेती है प्रतिवर्ष। और शुरुआत हमेशा की तरह अपनी भारतीय छात्र संसद के इस इनॉग्रल सेशन का सांस्कृतिक कार्यक्रम से। हमारे बीच भारतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना साई लेले परांजपे और उनके साथी अब यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय छात्र संसद, और वंदना के साथ हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद,
नी प म ग म प नि सा ग म ग सा नी प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि म म ग नि ग प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म जवां उमंगे जवां है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जवां उमंगे जवां है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जो भी कमी है हम भर देंगे जो न हुआ है हम कर देंगे भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा ये निश्चय है ना के सपना शान विश्व की भारत अपना भारतीय छात्र संसद 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और अनूठा ये नृत्य बिल्कुल भारतीय छात्र संसद की संकल्पना उसके मूल विचारों पर आधारित। भारतीय छात्र संसद में आए हमारे तमाम युवा छात्र नेता, इनके चेहरों पर खुशी और दमक ये बता रही है कि भारत का लोकतंत्र किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकता, वो दिन पर दिन और मजबूत होगा। और उसकी मजबूती का एक प्रण, एक संकल्प यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से प्रतिवर्ष हम दोहराते हैं, बताते हैं देश और दुनिया को। अपने विशिष्ट मेहमानों से और अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय से हम ये निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर पधारने से पहले ये लोकतंत्र का घंटानाद आप सब देखते हैं, यहाँ पर 2 बेल्स लगी हैं, ये डेमोक्रेसी की बेल्स हैं और हम अपने विशिष्ट मेहमानों से इस बेल को बजाने की गुजारिश करेंगे। ये घंटानाद जो कि देश और दुनिया को गुंजाएगा, ये बताएगा कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और उसकी गूंज कितनी तेज है। इस गूंज के लिए हम प्रतिवर्ष यहाँ पर ये डेमोक्रेसी की बेल्स यहाँ पर लगवाते हैं और अपने विशिष्ट मेहमानों से ये निवेदन करते हैं कि इस डेमोक्रेसी की बेल का वो यहाँ पर इसे गुंजा दें, ये बेल जो कि देश और दुनिया को सुनाई दे। तो अपने विशिष्ट मेहमानों से निवेदन, कृपया मंच पर आने से पहले डेमोक्रेसी की बेल हम सबके सामने बजाएं और इसका नाद हम देश और दुनिया तक पहुंचाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय विजय गोयल जी, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार, पुणे के मेयर प्रशांत जी और जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक भटकर जी और हमारे विशिष्ट मेहमान गवर्निंग काउंसिल भारतीय छात्र संसद के सदस्य, आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि इस डेमोक्रेसी की बेल को बजाएं। तो भारतीय छात्र संसद का ये सत्र जो कि इनॉग्रल सत्र है, 3 दिन तक हमारे यहाँ पर विभिन्न सत्र चलेंगे
और विभिन्न विषयों पर यहाँ बात करेंगे और इस डेमोक्रेसी की बेल के साथ दुनिया को, देश को ये बता देंगे कि भारत के छात्र युवा नेताओं में जो ताब है, जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो आवाज है, वो निश्चित तौर पर भारत की लोकशाही और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। अपने विशिष्ट मेहमानों से मैं निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे भारतीय छात्र संसद के इस 7वें इनॉग्रल सेशन में। और शुरुआत मैं करूंगी एक शेर के साथ कि खुशियों की तरह गम दस्तूर है जमाने का, जब हर तरफ छा जाता है अंधेरा, तब वक्त आता है दिया जलाने का। और मित्रों, ये दिया जल रहा है और इसकी लौ पूरे भारत को प्रकाशित कर रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने मुख्य अतिथि महोदय और अपने विशिष्ट मेहमानों का यहाँ स्वागत सत्कार करेंगे। और ये दिया जलाने का वक्त है, ये अपने आप को और अपने भीतर और अपने बाहर को प्रकाशित करने का वक्त है और इस प्रकाश में डूबने का वक्त है, क्योंकि यही वो प्रकाश है जो कि हमें आगे लेकर जाता है। और इसी प्रकाश की कल्पना लेकर भारतीय छात्र संसद के इस मंच का यहाँ पर गठन हुआ 7 वर्ष पहले। अपने विशिष्ट मेहमानों से निवेदन करेंगे, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तो भारतीय छात्र संसद मायर्स MIT पुणे के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से निकली है ये अवधारणा। और इस अवधारणा के पीछे एक ही मूल मंत्र, एक ही विचार कि किस प्रकार से युवा शक्ति को जागृत किया जाए, किस प्रकार से इस युवा शक्ति को देश को आगे बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। हमारे विशिष्ट मेहमान और हमारे छात्र नेता, मंच पूरा सज चुका है। ये छात्र नेता जो कि देश भर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बार आपसे फिर गुजारिश करूंगी कि इस सजे सजाए मंच का एक बार हम लोग फिर स्वागत करें करतल ध्वनि से, जोरदार तालियां बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन तालियों के लिए। और अब एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगी, आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अपनी परंपरा के अनुसार प्रारंभ हम करते हैं वंदे मातरम से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। आप सभी से निवेदन करेंगे अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तो पुणे शहर में ये भारतीय छात्र नेता जो कि देश भर से पधारे हैं, और पुणे का ये सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष हम देश के इन भारतीय छात्र युवा नेताओं का यहाँ स्वागत, अभिनंदन करते हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान होता है। हमारे बीच यहाँ पर पुणे के मेयर साहब बैठे हैं, उनसे हम सबसे पहले यहाँ पर गुजारिश करेंगे। प्रशांत जगताप जी हमारे बीच हैं, प्रथम नागरिक पुणे के, उनसे हम निवेदन करेंगे कृपया मंच पर यहाँ हमें संबोधित करने के लिए पधारें और तमाम स्टूडेंट लीडर्स का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन करें। प्रशांत जगताप जी। नमस्ते। 7वीं भारतीय छात्र संसद के आज इस अधिवेशन के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारे देश के आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय गोयल सर, मंच पर बैठे हमारी राज्यसभा की सांसद आदरणीय वंदना जी चौहान, हमारे पूना के गौरव स्थान आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़ सर,
आदरणीय भटकर सर, सारे आदरणीय मान्यवर, उपस्थित युवा छात्राओं, मैं आप सभी का पूना में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्र राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो गए 7 सालों से भारतीय छात्र संसद की ये जो संकल्पना है, इसके लिए पूना में बड़ी जोरों शोरों में काम कर रहे हैं। जी हाँ, एज अ मेयर ऑफ पुणे मैं इस संकल्पना का, इस कंसेप्ट का स्वागत करता हूँ और राहुल जी को धन्यवाद भी देता हूँ। आज भारतीय छात्र संसद की पूना में, महाराष्ट्र में, भारत में ज़रूरत है। ज़रूर भारतीय राजनीति में बदलाव आ रहा है, लेकिन 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश, दुनिया का 2 नंबर वाला आबादी वाला ये देश, ये आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में युवाओं का प्रमाण, युवाओं का परसेंटेज 57% है। एज ऑफ 20 to 35, ये सारी उम्र वाले हम जो सामने बैठे हैं, इसमें ये परसेंटेज आज 57% है। लेकिन भारतीय राजनीति में ये परसेंटेज कितना है, ये आप सभी ने सोचना है। हम ज़रूर भारतीय राजनीति में बदलाव लेकर आ सकते हैं। हमारे पहले जिन्होंने काम किया है, ज़रूर उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें अगर विश्व में सबसे बड़ा देश, सबसे अच्छा देश अगर लेकर जाना है, तो उसमें युवाओं की राजनीति में आने की ज़रूरत है। मुझे आशा है कि आप लोग, सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप इस संसद में जो उपस्थित हुए हैं, वो ज़रूर आगे जाकर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। मैं एज ऑफ 38 में पूना का मेयर बन चुका हूँ। आपके सामने मैं ये बातें रखते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद, अच्छे लोगों से जुड़ने के बाद मैं पूना का मेयर बन चुका हूँ। ज़रूर आपको भी इस बातों में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ज़रूर भारतीय राजनीति में आने की कोशिश कीजिए। शायद आप में से आगे जाकर कोई सिटी के मेयर बन जाए, यहाँ पर महाराष्ट्र या अदर स्टेट में कोई मिनिस्टर बन जाए। लेकिन ये कहते हुए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, भारतीय राजनीति में आदरणीय महात्मा जी गांधी जी ने जो नारा दिया था कि आज गए 70 साल पहले हमारे जो विलेजेस है, उनको भारतीय राजनीति की नेताओं की ज़रूरत थी। आज भी वो ज़रूरत महसूस हो रही है। आप आने वाले जनरेशन में ये मैसेज ज़रूर दीजिए कि भारतीय राजनीति में हम अगर आएंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा बदलाव होगा। मैं आप सभी को आने वाले फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये रोकता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और वो कहते हैं ना कि मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता और अपनी तकदीर को हम खुद लिखेंगे। और इस तकदीर को लिखने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है भारतीय छात्र संसद का ये मंच। और इस मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये मंच इसी प्रकार हर वर्ष आगे बढ़ता रहे और हमें अपनी तकदीर को खुद बनाने का हौसला देता रहे। इसी के लिए इस मंच का गठन भी हुआ है। और हम जानते हैं कि ये जो मंच गठित हुआ है, इसकी जो प्रेरणा जाती है, इसका जो मूल विचार जाता है, वो MIT पुणे के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को जाता है, जहां पर राजनीति का एक स्कूल, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन इस अवधारणा को बदल कर रख दिया है पिछले कुछ सालों में। और भारतीय युवा पहुंच रहे हैं इस राजनीति के स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए, जो कि स्कूल ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है पुणे का। और इसके जो प्रणेता हैं राहुल कराड़ जी, और हम जानते हैं कि भारतीय छात्र संसद को एक सशक्त मंच दिया है उन्होंने इन 7 वर्षों में, इसको उठाकर खड़ा किया है। और हम जानते हैं कि देश भर से हमारे युवा छात्र नेता हर वर्ष बहुत उत्साह के साथ इस मंच पर आते हैं, ताकि उन्हें नए नए मार्गदर्शन मिल सकें, दिशा निर्देश मिल सकें, कहाँ उन्हें पहुंचना है, कहाँ उन्हें जाना है और किस प्रकार से अपनी लोकशाही को मजबूत करना है। हमारे बीच मायर्स MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट और स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रणेता और नेशनल टीचर्स कांग्रेस के फाउंडर राहुल कराड़ जी मौजूद हैं। मैं उनसे
निवेदन करूंगी कि वो आएं और हमारे भारतीय छात्र संसद में आए, तमाम युवा नेताओं का हौसला बढ़ाएं और हमारे इस भारतीय छात्र संसद के कॉन्सेप्ट को हम सबके सामने रख पाएं। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे राहुल कराड़ जी का। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। The most respected Honorable Minister, the Chief Guest of today's program, Shri Vijay Goyal ji, the Union Minister for Youth and Sports Affairs, पूना के मेयर श्री प्रशांत जगताप जी, डॉक्टर विजय भाटकर सुपर कंप्यूटर के निर्माता, वंदना चौहान जी जो कि पूना से आते हैं, राज्यसभा के सांसद है, हमारे जितने भी संस्था के पदाधिकारी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, सभी हमारे डायरेक्टर्स, मंगेश कराड़ और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारी संस्था के डायरेक्टर वो सब, और मेरे सभी छात्र यहाँ पे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के जो बैठे हुए हैं। राजनीति का प्रशिक्षण 2003-04 का मुझे समय याद आता है। मेरे स्टूडेंट लीडर्स सभी भारत के सभी कोनों से सब जो आप आए हुए हैं, मैं आपका मन से स्वागत करता हूं कि इस विषय के ऊपर, भारतीय छात्र संसद के इस कंसेप्ट के ऊपर आपने जो विश्वास रिलेंटलेसली पिछले 7 साल से, पिछले काफ़ी सारे बच्चे इसमें से निकले, अपनी अपनी जगह पे बहुत अलग काम वो कर रहे हैं। बट मुझे खुशी है कि 2003-04 में जब इस विषय के ऊपर चर्चा हुई कि राजनीति में प्रशिक्षण, तो लोग हंसे थे हमारे ऊपर कि भाई पब्लिक लाइफ में आने के लिए, राजनीति में आने के लिए तो मसल पावर और पैसे की ताकत लगती है, भारत जैसे देश में ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। बट मैं सभी मेरे युवकों को और मंच के बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को खाली इस पेंडॉल तक सीमित ना रखते हुए मुझे आज बहुत फक्र महसूस होता है। सभी छात्र नेता, जितने भी स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, सोशली एक्टिव लड़के और लड़कियां पूरे भारत से आई हुई, मैं सबको कहना चाहता हूं कि मतलब ये कल्पना खाली इस पेंडॉल में ना रहते हुए आज गुजरात छात्र संसद, मध्य प्रदेश छात्र संसद, बिहार छात्र संसद, पुणे युवा संसद, काफ़ी सारे जगह पे उत्तर भारतीय छात्र संसद, तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पूरे भारत में युवकों को सेंसिटाइज करने के लिए अपनी अपनी जगह के ऊपर ये सभी छात्र यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो कल्पना 2005 में कि राजनीति का प्रशिक्षण, और इसके ऊपर आज गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर सभी विधानसभाओं में इसके ऊपर चर्चा है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, कि सभी बाकी के फील्ड में लोग जाने के लिए झिझकते नहीं है, आई मीन टू से उसमें जाने के लिए झिझकते नहीं, बट राजनीति में आने के लिए राजनीति के प्रति और राजनेताओं के प्रति, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति हमारे सबके मन में जो एक रिजर्वेशंस हमेशा रहते कि राजनेता ये अच्छे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं होती, तो ये भाव कहीं ना कहीं बदलना है। इस बात को बार बार मुझे खुशी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, सभी एकेडमिकली जो लोग रुचि रखते हैं, ऐसे काफ़ी लोगों ने पिछले 12 सालों में इसको समर्थन दिया, और आपके सबके प्रेरणा से, मतलब मुझे कई बार लगता है कि आप, ये पूरा हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सब लोगों को, मुझे मतलब कई बार ऐसा होता है कि पिछली पीढ़ियाँ बोलती है नहीं आगे वाली पीढ़ी जो है ना थोड़ा अलग दिशा से जा रही है और हम बहुत अच्छे थे, हम बहुत ये थे, बट मुझे भारतीय छात्र संसद जब से निकला है, उससे पहले स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जब से निकला है, तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि 3 दिन तक माननीय मंत्री विजय गोयल जी, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं एंटरटेनमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं, काफ़ी सीरियस विषयों के ऊपर 3 दिन तक लगातार चर्चा होती है। ये मंच जो है यहाँ पे आपको इवनिंग में भी एंटरटेनमेंट नहीं है, सुबह भी नहीं है, खाली चर्चा, लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेटिक ढांचा हम कैसा महत्वपूर्ण करें। अमेरिका एक सबसे बड़ा, सबसे पुराना और बेहतर लोकतंत्र माना जाता है, भारत का लोकतंत्र हम सबसे बेहतर कैसे करें बनाए। गुड गवर्नेंस की बात हो, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स तैयार करने की बात हो, यही बात को हम बार बार इस मंच के ऊपर से कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत के, हमारा ये सपना है, और ये सपना नहीं रहा, बट मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक रियलिटी में है कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी इस तरीके के यूथ पार्लियामेंट्स बने, और इस यहाँ से जो युवक बाहर निकले, तो इस क्लासरूम में आज जहाँ जो 7-8 हज़ार बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आज ये करीबन 1 करोड़ युवकों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं पूरे भारत का। मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं अपील करता हूँ कि अगले 3 दिन तक बहुत अच्छे विषयों के ऊपर चर्चा होगी। मैं मंत्री जी को अभी बता रहा था कि ये डेकोरम इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक, पिछले 7-6 जो भारतीय छात्र संसदें हुई, उसमें इसी तरीके से डेकोरम होता है। दोपहर के लंच के बाद की बात हो या उसके बाद की बात हो, तो पिछले काफ़ी सारे जितने भी 6 छात्र संसद के युवकों ने बहुत एक अच्छा बेंचमार्क तैयार किया है। मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं कि अगले 3 दिन में आप काफ़ी सारे अच्छे लोगों को सुनेंगे, उनके भाषण सुनेंगे, उनकी कल्पनाएं सुनेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग आइडियल है, आप यहाँ पे रूबरू हो उनके साथ, और आप आपका ओपिनियन बनाएं, आप आपका माइंडसेट
कैसे तैयार करें कि भाई हमें लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अलग करना है, पब्लिक लाइफ में आके कुछ करना है, और राजनीति के प्रति की घृणा हमें निकालनी है मन से कि भाई सभी राजनेता चोर है, भ्रष्ट है। तो ये आप आईटी या बाकी सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इतनी कम उम्र में कुछ हासिल कर पाते हैं। मुझे लगता है राजनीति में हमेशा ये लगता है कि राजनीति में जो है इतनी कम उम्र में नहीं, जब तक बाल सफ़ेद नहीं होते तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरे सभी स्टूडेंट्स को, छात्र नेताओं को मैं बताना चाहूँगा, मंच के ऊपर बैठे हुए सभी लोग, टाइम चला गया वो। अभी हम जिस युग में है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी आम आदमी भी बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक लाइफ में आके बहुत बेहतरीन अपना नाम कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात हो, बिकॉज आज सपोज कोई भी बात हो, आज प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, आपका उस पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे कुछ अच्छा काम करता है तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप वहाँ तक आपकी बात पहुँचा सकते हैं। तो समय बदल गया है दोस्तों, मैं समझने की कोशिश करिए। और पिछले 10-12 सालों में ऐसे कुछ उदाहरण सरपंच के लेवल के ऊपर से लेके ऊपर तक भी आपको दिख सकते हैं कि काफ़ी सारे नौजवानों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये समझ में आई है बात कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, कि बूढ़ा होने के बाद, थोड़ा सफ़ेद होने के बाद बाल हम पैर छूते हैं। बट मुझे लगता है बाकी सभी फील्ड में इतना बेहतरीन जब युवा काम करता है तो राजनीति में उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाए। तो मैं मंच के ऊपर बैठे हुए सभी राजनेताओं को और बाकी भी लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें ये अवसर है, अभी टाइम बदला है। तो भारतीय छात्र संसद के प्लेटफॉर्म की ताकत आप समझे। अभी जो हुआ आप समझते हैं कि मतलब अमेरिका का भी ये उदाहरण, मतलब कि अभी टाटा का झगड़ा हुआ बीच में, टाटा ग्रुप में, मतलब काफ़ी सारे ऐसे डिमोनेटाइजेशन की बात हो या वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री वहाँ पे हो, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। तो कितने सारे ऐसे विषय जो है यहाँ पे अगले 3 दिन में सभी छात्र नेता यहाँ पे बात करेंगे। मैं 2005 का स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का सपना, उसके माध्यम से जो बच्चे पास आउट हुए, जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए, आज बहुत बड़े पदों के ऊपर अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। और इसी बात को आगे रखते हुए भारतीय छात्र संसद का निर्माण और छात्रों का निर्माण अगर अच्छा करना है, अच्छी पीढ़ी राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, समाज जीवन में लानी है तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करेगा। इसलिए मुझे खुशी है कि नेशनल टीचर कांग्रेस जैसी संकल्पना आगे आई। इसी पेंडॉल में 5000 से ऊपर टीचर्स पूरे भारत से पिछले 4 महीने पहले यहाँ पे इकट्ठा हुए और उनको भी यहाँ पे एक सेंसिटाइजेशन किया गया। सभी फैकल्टीज़ के, पूरे देश में 15 लाख करीबन हायर एजुकेशन के शिक्षक है और 3.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ। और मुझे खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म आगे चल के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, अभी तक आंध्र प्रदेश में भी, आंध्रा सरकार ने भी इसके बारे में, इसकी लास्ट टाइम आइडियल चीफ मिनिस्टर का अवार्ड यहाँ पे माननीय चंद्रबाबू नायडू जी को दिया गया। तो उनको बड़ी ये कल्पना अच्छी लगी। वो बोले राहुल ये ऐसा कुछ वहाँ पे करते हैं, और इमीडिएटली बोला राहुल हम कुछ ऐसा स्टेज पे बैठे थे और यहीं पे बैठे बैठे मुझे याद है उन्होंने बोला कि नेशनल वुमेन पार्लियामेंट जैसी एक महिलाओं के प्रति हम कुछ ऐसी कल्पना हम आगे अगर ला पाए राहुल, और हमारे स्टेट में अमरावती एक अनोखा एक कैपिटल, पहला कैपिटल देश में एक स्टेट में आ रहा है। और आपको खुशी होगी कि 10, 11, 12 फरवरी को नेशनल वुमेन पार्लियामेंट, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश विधानसभा असेंबली और वहाँ के जो डॉक्टर कोडेला राव, वो जिसके चेयरमैन है विधानसभा के, उनके संयुक्त विद्यम से, तो मैं समझता हूँ कि मंत्री जी पूरे भारत में जितने भी विधानसभाएं हैं, इस तरीके के लीड मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लेने चाहिए। सभी विधानसभाओं ने, मतलब एक विधानसभा ने ये इनिशिएटिव लिया आंध्र प्रदेश ने, तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लीडरशिप ट्रेनिंग के हो, ऐसे सब ने अगर लिए तो मुझे लगता है काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ नई पीढ़ी को हम दे पाएंगे, उनको हम दिशा दे पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का आप महत्व समझे। मैं हमेशा खुद को सवाल पूछता हूँ कि US और UK का नौजवान जो है अपने से पेट्रियोटिक है। मेरे बच्चों, मेरे सबको बताना चाहूँगा, मैं कोई बहुत बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं बच्चा, बट आप सभी स्टूडेंट लीडर्स को मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लैंड अमेरिका का यूथ, उनमें पेट्रियोटिज्म, उनका राष्ट्रपति, मतलब एक बार चुन के आने के बाद उनके प्रधानमंत्री हो, उनके राष्ट्रपति हो, वो जो प्राइड है उनकी, हम कहीं ना कहीं बटे हुए हैं कुछ, मतलब हमारा जो डायनामिक्स है पूरे भारत का धागा एक है, जितने भी स्टेट्स है। मेरे सभी युवकों को मेरा अपील है कि हमें इस बात के ऊपर सही मायने में चर्चा करनी होगी कि हमारा ब्रिटिश राज यहाँ से, देश से चले जाने के बाद भी, हमने इतना कष्ट सहने के बाद भी हमारा पेट्रियोटिज्म क्यों ज़्यादा नहीं है। हमें इसके ऊपर सोचना होगा और मुझे लगता है शिक्षा संस्थाओं को ज़्यादा सोचना होगा, शिक्षकों को ज़्यादा सोचना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों का हम ये जो भाव है तो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के ऊपर 11-12 का हो या स्कूल एजुकेशन में हो, आमूलाग्र बदल हम कैसे एजुकेशन सिस्टम में कर पाए। तो इसके ऊपर ये चिंतन है। मुझे लगता है जब तक शिक्षा संस्था है अपनी देश की, मुझे बहुत अच्छी बात बोली एक वेद प्रकाश वैदिक करके एक पत्रकार थे परसों, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। वो बोले राहुल, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण है, उनका काम समाज में बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टियां, परिस्थिति बदलती है समाज की, रोड रास्ते ये वो, बट मुझे लगता है शिक्षा संस्थाएं लोगों की मानसिकता बदलती है, परिस्थिति और मनस्थिति। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी छात्रों को मैं
अपील करूंगा कि अगले 3 दिन तक यही डेकोरम, यही डिसेंसी, यही इसका जो स्टैंडर्ड है वो आप बना के रखिए। काफ़ी सारे अलग अलग लोग, बीच में लंच ब्रेक्स होते हैं, बड़े शॉर्ट लंच ब्रेक होते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। ये बाकी विधानसभा के स्पीकर्स, बाकी काफ़ी सारे वक्ता, कौन कौन आने वाले हैं, उसका डिटेलिंग क्या है, सब आपको बताया गया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़िए। खाली एक दोस्त लोग साथ में ना बैठे, अलग अलग लोगों से इवनिंग में जो 4 बजे जो कनेक्ट, यूथ टू यूथ कनेक्ट की जो कल्पना है, डॉक्टर जोस के बंडल्स, आम्स्टरडैम की टीम, वहाँ के एक 50-100 बच्चे वहाँ से आए हैं यूरोप से, और नेपाल से भी एक 70 बच्चे यहाँ पे आए हैं। विजय गोयल जी, मैं बताना चाहूँगा कि युवा मंत्रालय का जो एक फाउंडेशन इतने सालों से, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि यूथ पार्लियामेंट ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है सर। 1965 से लेके गवर्नमेंट के पॉलिसी में, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के उसके पूरे स्ट्रक्चर में यूथ पार्लियामेंट्स करने चाहिए, ये कल्पना है। बट हम कोई इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, बट ये मुझे खुशी है कि पूना ने काफ़ी सारे थॉट्स, गणेश उत्सव से लेके काफ़ी सारे थॉट्स पूरे देश को दिए, और भारतीय छात्र संसद की ये कल्पना आज पूना से निकल के पूरे भारत के कोने कोने में 27 राज्यों से बच्चे आए हैं। मैं सबका आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो स्पिरिट से आप आए हैं। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं कि मुझे अभिनंदन लगता है कि आप खुद का पैसा खर्च करके, यहाँ की 700 रुपया फी भर के, इतना दूर से आके खाली ये बात सुनने के लिए कि भारत की बात, भारत के लोकतंत्र की बात, गुड गवर्नेंस की बात, अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने की बात, ये चर्चा करने के लिए आप इतने दूर तक आए हुए हैं। मुझे सही में ये मोटिवेट करता है, बहुत प्रेरणा देता है कि सिनेमा के लिए टिकट निकाल के जाने के लिए एंटरटेनमेंट इज अ इंसेपरेबल पार्ट, बट मुझे लगता है ये इस तरीके का विचार भारत के युवा अगर करे तो आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है कि हम वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र अगले 10, 15, 20 सालों में बहुत बन सकते, शायद उससे भी कम समय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कराड़ जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो मंच है, इसे अब यहाँ से और आगे बढ़ना है, एक बड़ी और ऊंची उड़ान भरनी है, और इस उड़ान भरने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथी बनेंगे, सारथी बनेंगे, तभी हमारे इस मंच की जो संकल्पना है वो मूर्त रूप ले पाएगी। अब वक्त आ गया है हमारे विशिष्ट मेहमानों और हमारे आज के मुख्य अतिथि, आज के इस इनॉग्रल सेशन के माननीय विजय गोयल जी और हमारे विशिष्ट अतिथि, हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से। मैं अनुरोध करूंगी राहुल कराड़ जी से कि यहाँ स्वागत अभिनंदन करें माननीय विजय गोयल जी, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री, हमारे बीच भारतीय छात्र संसद के इस इनॉग्रल सेशन में, इस 7वीं भारतीय छात्र संसद में। माननीय विश्वनाथ कराड़ सर के हाथों ये सम्मान और सत्कार और अभिनंदन, जो कि भारतीय छात्र संसद की परंपरा है, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं विजय गोयल जी। और हम स्वागत अभिनंदन करेंगे पुणे के मेयर माननीय प्रशांत जगताप जी का यहाँ पर भारतीय छात्र संसद, और आपकी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच प्रशांत जगताप जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन। भारतीय छात्र संसद के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, मेंबर, और यहाँ पर भारतीय छात्र संसद के मंच पर प्रशांत जगताप जी, पुणे के मेयर, आपका स्वागत अभिनंदन। और अब हम अभिनंदन करेंगे सुप्रसिद्ध कंप्यूटर विज्ञानी डॉक्टर विजय पी भटकर जी, जिनका सार्थक सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है, जिनका मार्गदर्शन हमेशा भारतीय छात्र संसद के मंच को मिलता है। उनकी प्रेरणा से आज हम यहाँ 7वें वर्ष में पहुँचे हैं। डॉक्टर विजय पी भटकर जी, आपका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन। और अब हम प्रार्थना करेंगे अपने विशिष्ट मेहमानों और अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से कि दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप की अभिलाषा प्रकाश को लाना है, अंधेरे को मिटाना है, और इसी संकल्पना के साथ जी, तो हमारे बीच हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि दीप प्रज्वलित करेंगे, और हम सब दीप की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, और मन में ये विचार लाएंगे कि इस दीप के प्रकाश में हम दिन प्रतिदिन और प्रकाशित हों, हमारा मन, वचन और कर्म इसी प्रकार से प्रकाशित होता रहे। यही दीप की अभिलाषा है और यही हमारी भी अभिलाषा है, और इसी के लिए भारतीय छात्र संसद का ये मंच बना है।
एक छोटा सा दीपक लेकिन बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत बड़ा उजाला हमारे जीवन में लाने की ताकत रखता है और हम सबको भी अपने भीतर इसी प्रकार से एक दिया जलाना है और अपने आप को प्रकाशित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशिष्ट मेहमानों के द्वारा भारतीय छात्र संसद के इस उद्घाटन सत्र में इस दिए की अभिलाषा के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विशिष्ट अतिथियों का, विजय गोयल जी, जगताप जी और हमारे। तो ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने और से नहीं खुद से वादा किया है और खुद से इस वादे को हम आगे बढ़ाएंगे। और यही तो वादा है भारतीय छात्र संसद का हम सब से कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। तो भारतीय छात्र संसद युवाओं की आवाज़ और ये युवा जो कि कल के हमारे भाग्य निर्माता बनेंगे, हमारे देश को नेतृत्व देंगे। तो 7 साल का ये सफ़र हमने तय किया है और ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है। बहुत सारे विचारों को हमने सुना है, बहुत सारे प्रस्तावों को हमने यहाँ से पास किया है। आखिर ये 7 साल का सफ़र कैसा है, आइए देख लें इस छोटी सी फिल्म में। India, one of the biggest democracies in the world. A country which is known for its unique structure of unity in diversity. And most importantly, it is a land of youth. India has got the largest amounts of youngsters in the world. This youth stands for radiance, energy and innovation. For last 2 decades or so, the nation is gaining strength and experiencing positive changes on many crucial fronts: economic, educational, social and cultural. What if this flow of youth energy is diverted and focused upon the political revolution in the country? You bet the rest would be history. Realizing the responsibility thrust upon our generation, Shri Rahul V. Karat, the young and dynamic Vice President of Myers MIT Group of Institutions, Pune, India, conceived the idea of imparting education and training in politics and governance to the youth as early as in 2005, when he founded the Myers MIT School of Government, Pune, India. Myers MIT School of Government is the first and only school in India and Asia to conduct a year-long residential program to train the educated youth of India for a career in politics. Nearly 350 alumni of Myers MIT School of Government are now associated with different political parties of India in various capacities. In order to invite participation of more and more youth in the political process of the country, Shri Rahul V. Karat conceived a new thought in 2011. Bharatiya Chhatra Sansad, or Indian Students' Parliament. It brought together student leaders from different universities across the country on a single common platform to voice their opinions and make their voices heard across the length and breadth of the country. Bharatiya Chhatra Sansad is Asia's largest classroom with over 10,000 student leaders who learn from the eminent personalities from different fields, who guide them on how they can participate in developing a better country. For 3 days, the students are exposed to enriching life-sharing experiences of the icons that have made it big in their respective vocations. It is a great platform where the student leaders from all over the nation express their thoughts. Vice Chancellors from the various universities of India set the proceedings of the Parliament in motion. This is followed by the keynote speakers who share their knowledge and life experiences with the participants, which gives direction to the careers of the youth.
During the Bharatiya Chhatra Sansad, various awards and honors are given to the eminent personalities who are inspirations for today's young leaders. Recipients of Jeevan Gaurav Puraskar, Lifetime Achievement Awards, Outstanding Promoter of Spirit of Democracy, National Unity and Integrity. Adarsha Mukhyamantri Puraskar, Ideal Chief Minister Award. Gargi and Maitreyi Puraskar, Women Members of Parliament. Best Use of Parliamentary Practices for Women Empowerment. Adarsh Yuva Vidhayak Puraskar, Best Outstanding Performance in Development Work and Promotion of Parliamentary Democracy. Adarsh Uch Shikshit Yuva Sarpanch Puraskar, Expression of Commitment towards Roots. Adarsh Yuva Adhyatmik Guru Puraskar, Ideal Youth Spiritual Guru Award. Visionary for Spiritual Renaissance of India and Promoter of Vasudhaiva Kutumbakam, Heroes of India Puraskar. Krishi Yodha, Crusader of Agricultural Reforms. After every session, a resolution based on the theme related to the session is put to vote, where the young audience gives votes. If passed by the assembled leaders in majority, it is then sent to the respective government bodies for implementation. The event is widely covered by the electronic and print media at regional, national, and international level. In addition to private television channels, Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV provide full coverage of the event. With each passing year, Bharatiya Chhatra Sansad is gaining new grounds. More and more student leaders are adapting to the idea of entering public life through politics and shouldering the responsibility of serving the nation with determination and devotion. They have taken an oath to rid politics of criminalization and corruption and provide good governance at all costs so that India achieves a place of pride on international scene. Bharatiya Chhatra Sansad is an initiative to be the change. तो भारतीय छात्र संसद का ये 7 साल का सफ़र आपने इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से देखा। आपको कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा। वो छात्र जो कि पहली बार इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और वो मेहमान जो पहली बार शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे युवा छात्र नेता हैं जो कि लगातार कई बरस से इस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे हम। BCS का बड़ा सौभाग्य है, भारतीय छात्र संसद का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सर पर ऐसे लोगों का हाथ रहता है जो कि देश को और उसके विचारों को एक दिशा देते हैं। और ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध जाने माने कंप्यूटर विज्ञानी डॉक्टर विजय पी भटकर जी हमारे साथ हैं, जो कि BCS के साथ जिनका लगातार एक लंबा साथ रहा है, उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा है। वो हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, उनको मैं निवेदन करूँगी, लेकिन उससे पहले आइए ज़रा उनके जीवन और कार्यों पर ये छोटी सी फिल्म देख लें। A scientist, philosopher, educator, educationist, author, articulator, thinker and thought leader, researcher and innovator. Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar is one of the internationally acknowledged scientists and an eminent IT leader of India. Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar developed the first Indian supercomputer, the Param 8000. He is a Padma Shri as well as Padma Bhushan awardee. He also received the Sant Jnaneshwar World Peace Prize from the World Peace Center for promoting synthesis of science and spirituality in the service of humanity. He is among the star pioneers who shaped India's IT industry with supercomputing capability, capacity, and infrastructure as its crowning glory. Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar is the Chairman of Board of Governors of IIT Delhi, Chairman of FTH Research Lab, Founder Chancellor and Chief Mentor of Multiversity, National President of Vijayana Bharati, a people's science movement of over 6,000 scientists across India.
He has authored and edited over 12 books and 80 technical and research papers. Currently, he is working on exascale supercomputing. Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar is also widely known for bringing the technology covering India's 22 official regional languages with 10 diverse scripts. He also initiated Education to Home that brought e-learning to school education, which changed the dimensions of conventional Indian education system. We are honored to welcome Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar. बहुत बहुत तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। यहाँ मंच पर डॉक्टर विजय भटकर जी हमें संबोधित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर विजय भटकर। Honorable Minister, Sri Vijay Goel ji, and who truly now represents the youth of India and the sports of India. Honorable Professor Vishwanath Karad, my dear friend, brother and really a guide to me. We have worked on so many projects together. It has been a great experience. Rahul is taking this movement forward for the students and for the teachers, distinguished people who are present, who have been invited, invitees, and my dear young students, girls and boys, coming from the length and breadth of our country. Friends, often I have repeated, not something original, but I want to say that this century is very critical for India. In the history of nations, the time comes when that nation rises from the slumber and creates a deep impact on the society. It's like a wave. I think we are riding that wave. Which 21st century, the largest democracy of India, the great youth of India, youngest nation of our world, is riding on this wave. If we lose this time, this opportunity, then the millennia to come, thousands of years to come, this opportunity will not come again. So Rahul, this is the importance. Why is this important? For the youth to know our nation and how can we develop this nation as we are learning. Politics is for transformation of social structures. You create laws, you create methods for this transformation, and it's a great role. Though the politics sometimes is abused, misunderstood, but politics is for restructuring the societies, how these nations would go ahead. I have only 2 issues, 5 minutes given to me. I feel that we must recognize at this moment we have made progress in many directions. Remarkable. One of the poorest countries the Britishers had left of the world. Now we are the 3rd largest as far as the economies of the world is concerned. I never thought this time will come in my own lifetime. 3rd largest economy of the world. China, who has just overtaken the US, and now India. This one. It is predicted, it is forecasted, it is foreseen that in the decades to come, in next 2 decades, India will also go ahead in terms of economy, go ahead of US, which we never imagined. And the US had predicted, if we had predicted, we won't believe, but the US had predicted that we will now, in the 4th decade of this century, India would also overtake China and emerge as really the most prosperous, the largest economy of the world. Friends, lot of work remains to be done. Tremendous, our moment is not to be lost, not with doubt, with these questions, and we require incessant, with a great spirit, we have to go ahead. But while we talk about this, in science and technology, I have seen, in the information technology, we have seen how the nation from nothing has really risen to the peaks. But we have a problem. If we have to create Unnat Bharat, really the ascent of India, then
we must look at our villages. India is still the country of villages. 6,41,000 villages of our country. They are not in good conditions. Agriculture is not yet viable. You see, walk through the villages. We have to look at that, how we can do. How we can connect to our villages. Our educational institutions. Sir, for example, has transformed Rameshwar. Look at that, last 2 decades, he has been continuously working, and you see that great transformation occurring in the village. I want to just appeal to you that let's go back to our village. Somewhere or other we are connected to a village, wherever we are, and try to work that what can I do for my village? Not that what politicians can do, what Gram Panchayats can do, but what can I do for the village? I think that, how is it possible that, and we have a movement for this kind of thing. Second issue is that we have great cities of the world. I never thought that India will have the largest cities of the world. Now, world's largest cities, for example, Delhi, largest cities of the world, some of the largest cities of Pune, Mumbai, Kolkata, Bangalore, so many cities. But all these cities, we have 40% slums. Have you ever walked through the slums? We have to look at, sitting here, we have to look at our slums, how our slums can be really improved, bettered, beautified. It's kind of thing, how we can do this kind of thing. I feel these 2 challenges we have to take immediately. We have Swachh Bharat Abhiyan, Honorable Prime Minister has taken. Unnat Bharat Abhiyan, Honorable Prime Minister has taken. This one also for the regeneration of cities. If we take these 2 challenges, just we are in front of us, and put our power together, intellectual, social, cultural power together, then we can really do this within few decades of time. Our villages and our slums are improved, then India will really emerge as a developed nation, what Dr. APJ Abdul Kalam talked about. There's no question of that. I just want that commitment. I just want that innovations, which this can happen. I'm sure you will commit, getting inspiration from here. You will commit to this great cause and do it for you and then talk about it. Here we are talking, we're listening to great thoughts. We are articulating those thoughts, but we have to now also act so that we can do something for which that I have done this for my nation and offer my services to Mother India. Friends, again, I thank you. I think great platform has been created here to converge. Every year people converge, Rahul, to this platform and take inspiration from there and go back. Once again, thank you very much for listening to me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भटकर, आपके इन विचारों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम भारतीय चिंतन, दर्शन और सामाजिक मूल्यों और संस्कारों और सामाजिक सरोकारों को खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का एक महती कार्य और मायर्स MIT की पूरी संकल्पना के जो प्रेरणा स्रोत हैं, फाउंडर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जाने माने शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और वर्ल्ड पीस सेंटर्स ऑफ मायर्स MIT पुणे के डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को चेयर होल्डर फॉर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड पीस, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। उनसे हम निवेदन करेंगे, पर उससे पहले आइए उनके जीवन और कार्यों पर ये छोटी सी वीडियो क्लिप देख लें। Dr. Vishwanath Dadarao Karad, visionary and eminent educationist, started his journey of success more than 3 decades back and still continuing on the same path. A journey in the quest of truth, religious harmony, and amalgamation of science and spirituality. Dr. Vishwanath started his career as a professor after completing his education in engineering in the Government Engineering College and continued for 20 years. And then the day arrived when he expressed his visionary thought in one of his articles, mentioning the important and urgent need of non-aided engineering colleges in the state. His ceaseless pursuit to promote the concept of privately funded higher professional education in Maharashtra completely changed the education scenario in the country, thus benefiting millions of students. It also initiated the formation of one leading educational group, MIT Group of Institutions, under parent body of Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research at Pune. A true follower of the philosopher Sant Shri Gyaneshwar Maharaj and Jagat Guru Sant Shri Tukaram Maharaj, he is also a great believer in the teachings of India's great noble son, Swami Vivekananda. Dr. Vishwanath Karad always thinks of the peace in the world
benefit of science for the mass, which ultimately led him to form and to be a president of UNESCO Chair for the World Peace at MIT. He recently attended and delivered a speech at Salt Lake City, USA, where he was invited for the Parliament of World Religions Conference. His confident, scholar, and a visionary character always is a source of inspiration for the all MITians. संस्कार, अध्यात्म और शिक्षा, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और भारतीय छात्र संसद के इस 7वें सत्र के इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करें। माननीय डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़। Honorable Chief Guest of today's function, Dr. Vijay Goyalji, the Mayor of City of Pune, Mr. Jagtap, and my esteemed friend and a brother, one of the leading scientists of not India alone, but the whole world, Dr. Vijay Bhatkar sir, on all my colleagues sitting on the dais. Friends, it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure and a tremendous sense of satisfaction when I look at you people, the youngsters who have been the chosen leaders of the various universities and colleges in India, our mother India, coming from Kanyakumari to Kashmir, with different ideologies, different thoughts, maybe different philosophies too. But being the children of Mother India, you have a common thread which speaks about the Indian culture and traditions too. Friends, just now Dr. Vijay Bhatkar sir gave a brief glimpse of what is our duty, what should be our commitment in this century, especially when we are talking about the youngsters, the inspiring the youth, and strengthening the democratic system of India. So much has been said, and you are very learned people, even though very young, but when your institutions and colleges have chosen you as their leaders, I feel that you have been having a tremendous sense of commitment and even the courage, conviction, and the commitment, 3 words, with a sense of discipline and sense of character. I'm using 2 words specifically because the whole world is looking to our mother India with a hope and expectation that it is this nation, especially the background of the chaos, confusion, bloodshed, and massacre, horrifying violence world over. Which is that nation? Maybe that nation which has been known in the world in the name of 2 names, Mahatma Gandhi and Gautam Buddha, the messengers of peace as they are called to. These 2 names are recognized world over, friends, as the messengers of peace. They belong to this very country of yours, and now it is our duty possibly. Thank you to Rahul, Mr. Apte and his team for taking up this lead of organizing this Bharatiya Chhatra Sansad. This being the 7th one on behalf of the School of Government, which has been established on the lines of the Kennedy School of Government, Harvard, taking a message and now possibly propagating and conveying कि मदर इंडिया क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, और भारतीय अस्मिता जगाने का यह छोटा सा प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा गर्व की बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखना भाइयों कि आप लोग हैं जो इस भारत माता का नया स्वरूप दुनिया के सामने रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने शब्द का उच्चारण किया, सेंस ऑफ कैरेक्टर एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, 2 शब्द है।
उसके साथ मैंने ये भी जोड़ा कि we should have a decency, decorum and dignity. In your own lifestyle, in your own commitment, इस देश में चर्चा होती है राजनीति की, जिसके बारे में करप्शन की बात होती है, बाकी सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इसको बदलाने के लिए आपका यहाँ आना है। शायद आप में से कौन लोग होंगे, पता नहीं कौन हीरो होंगे, लेकिन you will follow in the footsteps of the words of wisdom spoken by the great noble son of India, Swami Vivekananda, which has been just now stated during this small brief film. But I'd like to repeat to you, friends, of two events and two statements by the same great noble son of India, Swami Vivekananda. You know it very well, I'm not telling you something new, but on this occasion, I feel it is my duty, my commitment, that we have been trying to make the whole world, and especially the education system itself, which we have been talking in MIT and the World Peace Center, as a value-based universal education system. कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है सर, यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? ध्यान में रखना, each country has its own geography, history, their culture and traditions are different, but there are time-tested values which are common. They are the universal values, human values, and which are being always spoken in this country known as Mother India. इसलिए मैंने उच्चारण किया कि अपने को समझना है। स्वामी विवेकानंद ने जब कहा कि what is the role of science and technology and what is the role of spirituality or religion, what you call, and he defined that time, remember friends, religion as not the Hindus or Muslims or the Sikhs. These are the life guiding principles. ये तो सारे जीवन ग्रंथ है भाई, पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, जो भी नाम ले लो, गुरु ग्रंथ साहब हो, लेकिन ध्यान में रखना कि इसके पीछे एक साइंटिफिक मकसद है, साइंटिफिक सिद्धांत है, जिसमें ऐसे भी कहा, शब्द है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि कोहम सोहम नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ये कोई मैं हिंदू वाचक भाषा नहीं कर रहा हूं आपके सामने। एक ध्यान में रखना, ये जो मैंने अभी कहा, इसमें एक भी शब्द, एक भी वचन धार्मिक नहीं है, हिंदू वाचक बिल्कुल नहीं है, ये तो सिद्धांत है। दे आर द वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस and the very universal laws which were spoken by the great noble son again, Swami Vivekananda. And let me tell you friends, when he said in 1893, the first sentence and then repeated the same words in a different fashion in the year 1897, when the great noble son of India, your own brother, spoke to the whole world community in 1897, and he had predicted. His words of wisdom speak like this. He says, 21st century will be the century for Mother India. My Mother India is the pride. And he said, not with ego, but with a sense of pride. And he tells further that in this century, my Mother India will emerge as a knowledge corner of the whole world. सारी दुनिया के सामने ज्ञान का दालन बोल के मेरी भारत माता उभर आने वाली है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, यह कब होगा? जब आप समझेंगे तो। You have to analyze and understand very scientifically in the field of engineering, IT, computer, particle physics, जो भी है, you know it very well where we are standing in the field of science. But remember friends, we have yet to know what is the culture of peace. And India has a role to play to promote the culture of peace through what this Bharatiya Chhatra Sansad is trying to think about. I appeal to you friends on this occasion that within the next 3 days' time, you must learn, interact with each other. No one understand भारतीय संस्कृति का छोटा सा दर्शन, जिसमें कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा लक्षण है, ध्यान में रखना। कुरान में कहा है माँ के पांव के तले जन्नत होती है, ध्यान में रखना। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन we have to understand and study along with whatever engineering or medical or other branches you are learning, but you must know also what is the meaning of this whole philosophy. इसके लिए ये छोटा सा प्रयास है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हैं जो दिशा दे सकते हैं इस भारत माता को। I wish you the best of luck and best of discussions in the next 3 days' time
Thank you, friends. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आप चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हों, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हों, आईटी पढ़ रहे हों, लेकिन दिल से मन से आप क्या हैं ये बहुत ज़रूरी है। और ये संस्कार हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। भारतीय छात्र संसद के इस मंच से, जैसे कि आपने फिल्म में भी थोड़ी देर पहले देखा था, हम तमाम ऐसी विभूतियों को, ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करते हैं इस मंच से, जो कि हमें दिशा देती हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और ऐसा ही एक पुरस्कार भारतीय छात्र संसद के मंच से प्रदान किया जाता है कुछ उन महिलाओं को जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिनका जीवन समर्पित रहा है और नृत्य काम कर रही हैं। हर वर्ष भारतीय छात्र संसद के मंच से गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन महिला सांसदों को हम सम्मानित करते हैं जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और संसदीय परंपराओं को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया है, अपने आप को समर्पित किया है। और भारतीय छात्र संसद की जो चयन कमेटी है उसने इस वर्ष गार्गी पुरस्कार के लिए जो एक नाम जिसका चयन किया है, आप सब उस नाम से परिचित हैं, उस शख्सियत से, उस व्यक्तित्व से आप परिचित हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया है। पुणे से एनसीपी की राज्यसभा सांसद और फाउंडर प्रेसिडेंट सावित्री मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर लेडीज एम्पावरमेंट एडवोकेट वंदना चव्हाण, जोरदार तालियों के साथ इस वर्ष गार्गी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है भारतीय छात्र संसद की चयन कमेटी के द्वारा। आइए उनके जीवन और उनके कार्यों पर इस वीडियो क्लिप के माध्यम से एक नजर डाल लें। Mrs. Vandana Chauhan is an advocate by profession. She was elected thrice as a councillor in the Pune Municipal Corporation from 1992 to 2007 and was the mayor of the Pune city in the year 1997-98. Mrs. Chauhan has spearheaded several initiatives in the city of Pune, targeting mainly the citizens' participation, empowerment of women and sustainable development. Mrs. Chauhan has richly contributed to securing protection of green areas and open spaces in the city of Pune. Recipient of several awards and fellowships, including the prestigious Eisenhower Fellowship in USA, Mrs. Chauhan is a member of the 8-member task force of the Metropolis Women International Network Forum. Through an adult literacy program which educated 44,000 women in just 1 year, coupled with vocational training, Mrs. Chauhan has established a marketing outlet for the goods manufactured by women and mentally and physically challenged by the name SMILE, Savitri Marketing Institution for Ladies Empowerment, which is the first ever such platform in the state of Maharashtra and in India too. Concerned about the issues of climate change, Mrs. Chauhan initiated a network called ALERT, Association for Leadership Education Research and Training, to create awareness among members of the community. Mrs. Chauhan is also a member of the Climate Project India, which has been initiated by the Nobel laureate Al Gore, former Vice President of the USA. Mrs. Chauhan has represented India at several international congregations. From being selected to participate in the Asia Pacific Summit of Women Mayors and Councillors at Bangkok in June 2001, followed by fellowships and presentations at various international cities. She was a member of the panel discussion Beyond the Targets, assessing the political credibility of intended nationally determined contributions, INDCs, organized by the Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, Center for Climate Change Economics and Policy, and the London School of Economics and Political Science during the side event at the COP21 at Paris, France. She was also a part of the Asian delegation of women parliamentarians at the 4th International Women Deliver Conference 2016 held at Copenhagen, Denmark. This conference was the first global conference to deliberate on the Sustainable Development Goals agenda on health, rights and well-being of girls and women. We are honored to welcome Mrs. Vandana Chauhan to the 7th Bharatiya Chhatra Sansad. तो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर इस वर्ष गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच से
हमारे मुख्य अतिथि और भारतीय छात्र संसद के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स के हाथों ये विशेष पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार, एडवोकेट वंदना चव्हाण, जाने माने राज्यसभा सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ, और पुणे का शहर तो उन्हें बाखूबी पहचानता है उनके कार्यों की वजह से। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारी इस वर्ष की गार्गी पुरस्कार से सम्मानित वंदना चव्हाण का। और मैं उनसे यहाँ पर गुजारिश भी करूंगी कि जीवन में उन्होंने अपने लिए जिस प्रकार से अपने कर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया है, अपने विचारों के माध्यम से अपनी एक सशक्त भूमिका को अंजाम दिया है, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें, बांटें। मैं निवेदन करूंगी वंदना चव्हाण जी से कि आएं और भारतीय छात्र संसद के इस मंच से हमारे इन युवा छात्र नेताओं को संबोधित करें। माननीय वंदना चव्हाण जी। Chief guest of today's function, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Vijay Goyal ji, Mayor of Pune, Prashant ji Jagtap, Pitama of most of us Punekars, Dr. Vishwanath ji Karad, Dr. Vijay Bhatkar, the pride of not just Pune but India, Rahul ji, Mangesh ji, Rahul ji, responsible for getting us all here together, dignitaries on the dais, off the dais, and my young electrified friends, girls and boys. First of all, let me congratulate the Bharatiya Chhatra Sansad under the aegis of MITSOC for having organized this wonderful platform for the youth, not only from our country, from other than our country, because I see a lot of foreign delegates for the 7th consecutive year. It is indeed an electrifying platform where the energy, the vibrancy, the vibrations in this entire hall is entirely different and gives us an inspiration to do something for our country. I would like to thank the Bharatiya Chhatra Sansad for having conferred upon me the Gargi Puraskar. As we all know, Gargi was the philosopher in the Vedic times, and an award in the illustrious name in her memory definitely means a lot to me, means a lot to us women. Let me say we not only recognize the contribution of the erstwhile philosopher, but it also casts a responsibility on each of us to do something better, not only for our countrymen, but for women folk as a whole. It also proves us to introspect as to are we doing enough to make sure that the women in our country are really getting justice in all fields. I would like to really congratulate all the young friends who are here, because these 3 days are going to be instilling in you a lot of inputs from experts. Every time that this event happens, I always wish that I sit here all 3 days, but I've not been so lucky. But I have been coming here and attending the lectures on and off whenever this event happens. And it is indeed a great inspiration for all of us. I would like to say to all my young friends that it's not only that if we join politics, can we make a difference? I think each one of us, as Dr. Bhatkar rightly said, each one of us has a responsibility to give back to our nation, give back to the world, and make sure that our future generations really have a happy future. A lot of times when we address people like you, youngsters like you, we say tomorrow is of the youth, tomorrow is of you. But I would say today is the day of youngsters. Today it is you who have to take the country forward. Today it is you who have to take the globe forward. We have so many problems, not only in our country, but the globe over. And if we do not wake up to this call, if we don't wake up to this challenge, I think we are losing on something we have been born here on this earth. I have to say, I have to share with you, just as the Honorable Mayor said, that he had no political background. I too didn't have a political background. And let me tell you that I was a lawyer, 8 years in practice. When 1992, there was 30% reservation for women, probably political parties found it difficult to find women candidates. I was one such find, and I was asked to contest elections. My reaction was, as Rahul ji rightly said, we all shun from politics. We all say, no, no, it's a dirty game.
But I had the same reply. I said, no, I don't want to get into politics. But it was my father and my husband who actually brainwashed me and said that it is our moral duty to do something for our nation. Let me tell you, I got into politics by saying, I'll do it only for 5 years. But once I got into it, sir, I realized that sky is the limit. No matter how much you do, it is still less. We have problems, addressing problems of children face, problems senior citizens face, problems youth face. It could be drug abuse, it could be hurdles in education, it could be the poor boys who are educated to a certain level and don't get employment. It could be climate change problems, which each one of us is being addressed with, confronted with. We have to realize that all over the world, if there are any countries which are vulnerable to climate change, it is India and Bangladesh. And therefore, we are facing its impacts. If we do not act, if we have just the United Nations making rules and regulations, if we have just the country making policies, and you and me do not do anything about it, I think we will be failing in our duties of our future generations. And so, therefore, friends, I would like to make an appeal to each one of you. Let us wake up. Let us today, at this Bharatiya Chhatra Sansad, make a resolve for each one of ourselves that I will do at least one good deed every day. If you're already doing it, let's decide to have 2 good deeds every day. Before we sleep at night, let us ask ourselves, what have I done to contribute to the society? What have I done to contribute for my country? And what have I done to contribute to the world as a whole? And I think if this is the question we each one ask ourselves, we will be satisfied in our resolve. The number of problems are innumerable. We have to become restless. I would never say have a good night's sleep. I will say become restless. Become restless at least for one issue. Decide that you want to work for your children. Decide you want to do something for a women's cause. Even in a city like Pune, when I go to international conferences, they talk about child marriage. And when they talk about child marriage, I mean, always the numbers are always highest in India. Poverty, where it is highest, India. Street children, where is the number highest? India. I mean, all these parameters, India, we are the highest. But if we have to address these issues, each one of us will have to wake up. A city like Pune, which is called the Oxford of the East, a city like Pune, which has so many educational institutes, has 40% people staying in the slums. We have our municipal corporation schools which cater to only 7th standard. As soon as the girl's education is over at 7th standard, her parents want to get her married. She's only 14 years old. That's a child marriage. So her children are malnutrition. She is facing anemic conditions. Let us resolve that we want to make our girl child study. We want to educate her, make sure that at least she reaches the standard 10th so that she will have a better future. Vijay Goyalji is here. All the luminaries from the educational field are here. We have made our right to education up to the age of 16, or rather 14. I would like to make an appeal to all of you and, of course, us parliamentarians. Let us push it till the 10th standard so that we ensure a better future for our girls, better future for our children. Let us get restless on these issues. Let us want to do something. Let us each one resolve that I will do something to make this country a better place to live in. And I would once again like to congratulate Rahulji with this exercise. I think this is the biggest ever platform in India. I don't know whether it's in the world. Definitely in India, the biggest platform that is provided to our young girls and boys to make sure that they air their views, they get inspired, and they build our nation. Thank you once again for giving this award to me, and best wishes to all of you young friends for a nice 3 days conference here. Thank you very much once again. बहुत बहुत धन्यवाद वंदना चव्हाण जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, देश की गर्ल चाइल्ड, देश की बेटी, देश की लड़की, जो कि देश का भविष्य है, देश की आधारशिला है, उसको अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। और इस इच्छा शक्ति के साथ और इस प्रण के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय छात्र संसद का जो जन्म हुआ MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के तत्वावधान में ये पूरा का पूरा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप जानते हैं, देश में राजनीति का पहला स्कूल, एक अनूठा स्कूल जहाँ राजनीति का पाठ सिखाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, राजनीति के गुर सिखाए जाते हैं, किस प्रकार से एक सार्थक सच्ची राजनीति करके देश को आगे ले जाना है, देश को नेतृत्व ले जाना है। इसका काम स्कूल ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है, मायर्स MIT का। और बहुत ही अनूठी संकल्पना राहुल कराड़ जी
ने जिसको अस्तित्व में लेकर आए और आज इतना लंबा सफ़र यहाँ तय किया है। एक पुस्तिका, एक जानकारी पुस्तिका, एक ब्रोशर का यहाँ पर हम लोकार्पण करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथियों से कि MIT के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के इस जानकारी पुस्तिका का यहाँ पर लोकार्पण करें और आपकी तालियों के साथ ये लोकार्पण होगा तो और भी बहुत खूबसूरत बन पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्र, आप जानते हैं ये जो सिलसिला है चल निकला और पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से यहाँ से निकले हुए छात्र देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में ऑफिस बेयरर्स हैं, काम करते हैं अपने इलाके के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, और एक ऐसी स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन करने का प्रण लेकर और संकल्प लेकर वो यहाँ से निकले हैं और इसी अवधारणा और इसी संकल्प को मजबूत बना रहा है भारतीय छात्र संसद का ये मंच भी और MIT का स्कूल ऑफ गवर्नमेंट भी। और ये जानकारी पुस्तिका आप सबके लिए उपलब्ध है, एक ब्रोशर SOG के बारे में, जिसका यहाँ पर लोकार्पण किया माननीय मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से। ये जानकारी पुस्तिका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विशिष्ट मेहमानों का। आप इसे देखें, पढ़ें और इसके बारे में जानकारी लें कि आखिर ये भारतीय राजनीति का स्कूल जो कि SOG कहलाता है पुणे में, देश का अपने आप में अनूठा, आखिर किस प्रकार से देश में राजनीतिक चिंतन और लोकशाही को सबल और मजबूत बनाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय छात्र संसद के मंच से अभी गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया माननीय वंदना चौहान जी को। और ऐसी ही स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन इस मंच के माध्यम से होता है और आजीवन जो शख्सियत, जो व्यक्तित्व आजीवन किसी कर्म में लगते हैं और एक मकाम तक पहुंचाते हैं, एक जन जागरण का अभियान जो चलाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पुरस्कृत सम्मानित करते हैं जीवन गौरव पुरस्कार से। और इस बार ये जीवन गौरव पुरस्कार जो कि पूरे जीवन में आपने जो कुछ समर्पण किया है, जो कुछ आपने काम किए हैं, उसके लिए दिया जाता है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। और इस बार ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, अगर मैं उनके बारे में आपको बताने लगूं तो वक्त बहुत लगेगा, लेकिन अगर संक्षेप में मैं आपसे कहूं कि देश की लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें हमने लोकसभा की कार्रवाइयों को निभाते हुए देखा है, अपनी बात को कहते हुए देखा है, एक ऐसे सांसद जिन्होंने हमेशा जनता के सवालों को संसद में रखा है, एक ऐसे नेता जिन्होंने वामपंथ के आंदोलन को आगे बढ़ाया है, वयोवृद्ध नेता, आप सब पहचान रहे हैं कौन है, जिन्हें इस बार का जीवन गौरव पुरस्कार से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। वेटरन लीडर माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी जी के जीवन और कार्यों पर। आइए देख लें ये छोटी सी फिल्म। Shri Somnath Chatterjee is a multifaceted personality with varied interests that range from education and sports to constitutional studies. He is one of those few public personalities who have kept people's faith in democratic institutions intact with their vision and dedication. He is a people's man in every sense of the term. He is a modern man with strong ideological underpinnings but wedded to liberalism. He combines an unwavering commitment to the basic principles and values of India's democracy with a rare ability to transcend political divides. He believes in giving equal importance to industrial and agricultural sectors and works hard for the advancement of both. He is MA and barrister at law from Middle Temple in UK. Shri Somnath Chatterjee began his career as a lawyer and joined active politics in 1968 when he became the member of the Communist Party of India, Marxist. His ascendance in national politics began with his election to the Lok Sabha for the first time in 1971. Since then, he has served as a member in all successive Lok Sabhas, getting elected for the 10th time in 2004, 14th Lok Sabha. On 14 June 2004, the 14th Lok Sabha unanimously elected Shri Somnath Chatterjee as its speaker and created a history. For the first time, it was electing the speaker pro tem as speaker of the Lok Sabha. It is significant that the leaders of the 18 parties in Lok Sabha had proposed his name, which was seconded by leaders of other parties. On the initiative of Shri Chatterjee, the proceedings of 0R were telecast live from 5th July 2004. To provide a more comprehensive media coverage of parliamentary proceedings, a full-fledged 24-hour Lok Sabha television channel has become operational with effect from July 24, 2006. Another important initiative taken by Shri Chatterjee
has been setting up of the high-tech Parliamentary Museum on India's democratic heritage. The museum lucidly presents the various phases in the evolution of Indian democracy. Apart from conducting regular training programs, BPST, on Shri Chatterjee's advice, has in 2005 started a lecture series for the members of Parliament on various important issues, including water conservation, value-added tax system, children's development, right to information, and many more. Shri Somnath Chatterjee has been a role model for all the parliamentarians and aspiring legislators. A highly accomplished lawyer, a trade unionist, an articulate and effective parliamentarian, and a very effective speaker of the world's largest democracy, Shri Chatterjee has set up new landmarks for all the public figures in India and the world. Throughout his public life, he has been infusing a sense of respect among people in the institutions of democracy and thereby sustaining the people's faith in them. Shri Chatterjee has truly symbolized the values of democracy, transparency, and accountability in the world's largest democracy. तो जीवन गौरव पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष प्रदान किया जा रहा है माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी जी को। अस्वस्थ होने के कारण वो स्वयं यहाँ पर नहीं पधार सके, लेकिन उनको ये पुरस्कार वहाँ उनके निवास स्थान पर जाकर प्रदान किया जाएगा। उनका एक वीडियो मैसेज हमारे पास आया है और हम चाहते हैं कि ये वीडियो मैसेज आप देखें और उनका संदेश क्या है, आइए उसके बारे में जानें। I'm happy to be able to address all of you today, and I would have liked to address you personally, but illness does not permit me to do so. I hope you will all excuse my absence. I congratulate the MIT School of Government for organizing a platform like Bharatiya Chhatra Sansad, intended towards strengthening the ethos of democracy in our country, and to reiterate the relevance of integrating the youth in democratic and political processes. I learned that 6 such annual conclaves have already been organized with great success, in which 8,000 to 10,000 student leaders have participated every year. This itself is a testimony of faith that our democracy and its institutions enjoy amongst our youth. I very strongly hope that the youth assembled here will strive hard to foster a sense of solidarity, bonding, and arduously work towards preservation of values that are integral to our democracy. I must compliment Sri Rahul Karad for the massive efforts he is making in giving the opportunity of students of our country to exchange views and discuss about the importance of democratic structure and roots. I'm sure this exchange of views and listening to others who have greater experience in working the democratic structure will propel and equip the young students and the flag bearers of democracy in its true sense. I wish them great success in their pursuits, and I once again compliment Sri Karad for the great efforts that he is making. I wish great success of this Parliament, and along with its success, it will strengthen our democratic structure, no doubt. I'm sure our youth, particularly our students, will duly discharge their duties towards the country, and that is nothing more important than strengthening our democratic structure. Thanking you, Jai Hind.
मैं सभी छात्र नेताओं को मैं बताना चाहूँगा, मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों को, कि 2003-4 में मैं जब गया पहली बार ये कल्पना की भारत स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्थान, तो पहले जो एक 7-8 लोगों ने मुझे इस विषय के लिए जो समर्थन दिया था, और मुझे सोमनाथ दादाजी के पास में जब गया तो जिस भावना से उन्होंने मुझे बात की, मतलब मुझे अडवाणी जी की भी याद आती है कि अडवाणी जी मुझे बोले थे, सोमनाथ दादा मुझे बोले थे, राहुल 20-25 भी बच्चे आएंगे इसमें तो हम हर साल पढ़ाने के लिए इस पूरे विषय में आएंगे, और ये भाव उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो आज जो अवार्ड, मुझे ये लोग मंदिरों जैसे लगते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग कहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण, तो इस तरीके से भावनाएं मेरे मन में आती है। तो आप सबको ये बताना मेरा फर्ज है कि स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के फाउंडेशन से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल टीचर कांग्रेस का निर्माण और नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण, तो इसलिए आप सही मायने में जितना पेशेंटली उनको सुना, तो इनके सब के बारे में के बायोग्राफीज भी हम अगर पढ़े तो ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। और यही भारत की अपनी परंपरा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो गुरु के समान मुझे ये लोग लगते हैं। तो धन्यवाद वंस अगेन। मैं वो सोमनाथ दादा आए नहीं, बट बड़ा भावनिकता से उन्होंने जो भाव अपने सबके प्रति, संस्था के प्रति, इस विषय के प्रति प्रकट किया, मैं उनका यहाँ पे सही में अभिनंदन करता हूँ और उनको मैं सम्मान करता हूँ, यहाँ से उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आप सभी एक बार खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे हम जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से वेटरन लीडर माननीय सोमनाथ चटर्जी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ अपना संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपने स्थान लें। और यहाँ हमारे बीच मंच पर विराजमान एक जुझारू राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा मामले और खेल, और इसके अलावा राज्य मंत्री जल संसाधन, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, विजय गोयल जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और भारतीय छात्र संसद को उनका मार्गदर्शन मिला है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनके जीवन और कार्यों पर ये छोटी सी वीडियो क्लिप देख लें। Mr. Vijay Goyal is an Indian politician and at present he is the Minister for Youth Affairs and Sports. Mr. Vijay Goyal has got affinity and affiliation with the Bharatiya Chhatra Party. He became the president of the party in Delhi in February 2013. He was elected to the Rajya Sabha in 2014 from Rajasthan. He is an MCom from Sri Ram College of Commerce and an LLB from the University of Delhi. He was a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh and he witnessed the blues of emergency. A former Delhi University Students' Union president, has been a member of parliament in the 11th, 12th and 13th Lok Sabha, representing the Sadar and Chandni Chowk constituencies in Delhi. He also served as the Union Minister of State for Labour, Parliamentary Affairs, Statistics and Programme Implementation of the National Democratic Alliance until 2004. As a Minister for Sports, he ensured that the ministry would take care of all the medical expenses of the players to encourage their committed performance. Under the banner of Lok Abhiyan, a socio-cultural organization, Mr. Vijay Goyal initiated protests against all the state-sponsored lotteries in India in 1993. He led a campaign supported by over 120 MPs. The lottery game finally was banned in 1998. Mr. Vijay Goyal established a toy bank, a non-profit organization, in 1987 that collects toys from donors, restores them and then redistributes them among underprivileged children in Delhi. It is a matter of great pride to welcome Shri Vijay Goyal. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं माननीय विजय गोयल जी का। वो आए और भारतीय छात्र संसद के इस 7वें अधिवेशन के इनॉग्रल सेशन को हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय विजय गोयल जी संबोधित करें।
अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती और मेरा माइक बंद हो जाता तो मैं जरूर कह देता ये ऑपोजिशन वालों की साजिश है। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मैं आप लोगों के बीच में आके कितना खुश हूं। एक बार मुंबई के अंदर मैं बेरोजगारों के सम्मेलन में गया था। आप लोग 10 बजे से बैठे हैं यहाँ, कितने बजे से बैठे हैं? 10 बजे। एक बार मैं मुंबई में बेरोजगारों के सम्मेलन में गया था। ऐसे ही हजारों लोग बैठे थे, एक भाषण, दूसरा भाषण, तीसरा भाषण, चौथा भाषण। जब मेरी बारी आई तो नीचे से एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा, गोयल साहब इससे तो बेरोजगारी हम भले थे जाके। तो मैं आज जो बातें आपके सामने रखूंगा वो अपने अनुभवों के आधार पर रखूंगा। और राहुल साहब, मेरी कोशिश है कि ये कुछ लेकर जाएं, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी है आज आकर। मैं पहले स्वागत करना चाहता हूं वंदना जी का, जिनको आज हमने गार्गी अवार्ड से नवाजा है। और शिकायत भी करना चाहता हूं कि राहुल जी, केवल आप महिला सांसदों को दे रहे हैं, अगली बार से 2 पुरुष सांसदों को भी जरूर देना जाकर। और हमारे बीच में इतनी अच्छी एमपी हैं वंदना जी, सोमनाथ जी को ये अवार्ड दिया गया। वाकई में वो बहुत बड़े नेता थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इससे मतलब नहीं है, किंतु उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जी। विश्वनाथ कराड़ जी के बारे में मुझे आने के बाद पता चला कि किस तरीके से 5 क्लासरूम्स के अंदर उन्होंने इस संस्था को शुरू किया था, और आज उसके बेटे राहुल कराड़ ने इसको इतनी बड़ी संस्था बना दिया है कि मैं कह सकता हूं कि ये भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है जाके। विजय भास्कर जी, पद्म भूषण जी हमारे बीच में हैं। प्रशांत जगताप मेयर हैं पुणे के। डॉक्टर चंद्रकांत पांडव साइंटिस्ट, पीबी जोशी जी ट्रस्टी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश से, विभिन्न कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हजारों के तादाद के अंदर युवा यहां पर इकट्ठे हुए हैं जाकर, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ। और आप देखिए, जब आप हॉल के अंदर आते हैं तो मुझे ऐसा लगाई देता है जैसे पूरा मिनी भारत मेरे सामने खड़ा हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उस उद्देश्य में आपको कामयाबी मिले जाके। ये पूना जो है, ये संत तुकाराम की नगरी, ये पूना गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद और ना जाने कितने महापुरुषों के हैं। यहाँ पर कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, इंजीनियरिंग के इतने कॉलेज हैं। और आज जब मैं पूरे इसका निरीक्षण भ्रमण कर रहा था, जो अपना पूरा कैंपस है, तो मैं चाहता हूँ इतना सुंदर कैंपस जो कि हेरिटेज के तरीके से बनाया गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेज हैं और जिसके अंदर ये MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट भी है। मैं चाहता हूं राहुल कराड़ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो बहुत मेहनती हैं जाके। मेरे को ऐसे 10-20 युवा मिल जाएं तो मैं समझता हूं कि भारत के नक्शे बदल सकते हैं जाके। दोस्तों, भाषण देना आसान बात नहीं है। आप सोचते होंगे यहां पर आना और भाषण देना बहुत आसान बात है। आसान बात नहीं है ये। भाषण देने के लिए जो मैं बोलता हूं उसकी लाइन मेरे अंदर जाती है कि मैं उसका पालन करता हूं नहीं करता जाके। इसलिए आपको, मेरे को भी जानना चाहिए कि ये जो विजय गोयल आपके सामने भाषण दे रहा है, ये अपने आप में इन चीज़ों का पालन करता है नहीं करता है। मैं आपको कहूँगा चोरी नहीं करनी चाहिए, पर मुझे देखना ये है, मेरे अंदर लाइन जाती है कि तू चोरी करता है कि नहीं करता जी। एक गांधी जी की बहुत पुरानी कहानी है। गांधी जी के पास एक बुढ़िया गई, उसने कहा, गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। गांधी जी ने कहा, माई देख कितनी भीड़ लगी हुई है, मेरे पास कहाँ समय है, अगले हफ्ते आइयो जी। अगले हफ्ते फिर बुढ़िया गई, गांधी जी इस बेटे को मना कर दो, गुड़ बहुत खाता है ये। गांधी ने कहा, माई प्रार्थना का समय हो गया है, तू देर से आई है, अगले हफ्ते आइयो जी। उसके बाद गांधी तीसरे हफ्ते बुढ़िया गई, कहने लगा, गांधी जी मैं 2 बार आई थी आपके पास, इसको मना कर दो, गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा, माई अगले हफ्ते आइयो, मैं जरूर बात करूँगा। अगले हफ्ते बुढ़िया गई और उससे कहा
गांधी जी इसको मना कर दो, गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने उस लड़के के ऊपर प्यार से हाथ फेरा और कहा बेटा गुड़ मत खाया कर। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी गांधी तू ये पहले दिन नहीं कह सकता था इस बात को कि गुड़ मत खाया कर? कहता कैसे कहता, मैं भी तो गुड़ बहुत खा रहा था, छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था जाके। तो जीवन के अंदर जब तक आप खुद नहीं उतारेंगे तो आप लाख भाषण दे लीजिए, आपके भाषणों का असर नहीं होगा जी। ये पहला सूत्र पकड़ लीजिए जाके जी। आप सोचेंगे मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं खड़ा होकर कह दूंगा भी शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, और उसके बाद मैं खुद शराब और जुआ कहूंगा, तो कहेगा किसी को पता तो नहीं था कि भाई शराब और जुआ मत मैं खेलता हूं, फिर भी लोगों पे भाषण का असर क्यों नहीं हुआ जी? वो इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि आपका चेहरे का भाव बोलता है। ये लेसन नंबर 2 है। अगर जिस चीज को आप खुद नहीं करते हैं और दूसरे को कहेंगे, वो भाव से पता लग जाएगा जाके। जैसे गांधी जी कहते थे तुम्हारे गाल पर कोई एक चांटा मारे तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दो, उसका मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर इतना तेज होना चाहिए कि दूसरे की हिम्मत नहीं पड़े। इसलिए नहीं था कि वो दूसरा गाल आगे करो और वो खटाक से दूसरा चांटा मारते जाके। आप न्याय पक्ष की तरफ होना चाहिए, ये गांधी जी को था जाके। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको, बड़ी बात यह है कि हम लोग जो हैं अपने जीवन को किधर ले जाएंगे जी। अभी आपने देखा है कि बड़ा अच्छा स्वागत किया गया, मुझे शॉल पहनाए गए, हार दिए गए। ये स्वागत, ये हार, ये शॉल, ये तालियां उत्साहित करती हैं हमको जी, ये उत्साहित करती हैं। और इसीलिए एक बार जब मैं एमपी बना, मुझे याद है जब मैं पहली बार एमपी बना जगदीश टाइटलर को हराकर, तो मेरे गले में बहुत सारी मालाएं बढ़ ली। मैं कभी कॉरपोरेटर और एमएलए तो रहा नहीं, मैं तो सीधा एमपी का चुनाव लड़ा था जी। तो बहुत सारे हार मेरे गले में डले। तो मैंने पड़ोसी को कहा देख कितनी सारी मालाएं। उसने कहा गोयल साहब ये मालाएं नहीं हैं, ये इलाके की समस्याएं हैं जो तेरे गले में डाल दी हैं। एक नाली की, एक खड़ंजे की, एक सड़क की, एक सीवर की, एक बिजली की, एक पानी की। जब ताली बजाओ तो ऐसे खुल के बजाया करो, खुल के बजाओ, खुल के और खुल के और खुल के। ये चौथा मंत्र है आपको जी। एक बार मैं एक इंग्लिश प्ले देख रहा था जाके, और वो कॉमेडी थी, पर ऐसी कॉमेडी थी जिसके अंदर मुझे तो हंसी आ नहीं रही थी, पर मेरे आगे जो 3-4 आदमी बैठे थे वो तालियां बजाते थे दबाकर। तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा तो कुछ डायलॉग नहीं था इसके अंदर ताली बजाने वाला। कहने लगे नहीं गोयल साहब हम तो इसलिए बजा रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, वैसे तो हम ताली बजा नहीं सकते जी। तो जब भी ये कोई हंसने वाली बात कह देता है, चाहे उस पर हंसी नहीं आए, हम जोर से ताली बजाते हैं जी। तो इसीलिए आप भी एक बात समझ लीजिए बात को, जीवन में उत्साहित करना बड़ा जरूरी है जी। आप में से कोई कवि सम्मेलन सुने हैं? किसी ने हाथ खड़े करो, कवि सम्मेलन जिसने जो गए हों। कराड़ साहब आप इधर खड़े हो ना, ये देखो लोगों ने कवि सम्मेलन नहीं देखे। आओ इधर आओ, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो आप आओ ना, इधर आओ, मैं बताता हूँ, पूछना है मुझे। मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, आप में से किस किस ने कवि सम्मेलन देखे जाके? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग हैं। देखो आप लोगों को एक चौथा मंत्र दे रहा हूं, कवि सम्मेलन, फिल्म, कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब आपको देखने हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक बार यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था, हम भी बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि एक कवि जब कोई कविता सुनाता था तो बाकी कवि करते थे वाह 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 वाह। तो मैं कहता था कोई खास कविता भी नहीं है, हंसने वाली बात भी नहीं है, फिर ये वाह वाह क्यों कर रहे हैं? आप में से कोई बता सकता है क्यों वाह वाह करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनका कवि सम्मेलन जम जाए। उनको वाह वाह और ताली बजाते हुए देखकर जो दर्शक हैं वो भी कहें अच्छा ही होगा और ताली बजाएंगे जाके। उस दिन से मैंने ये देखा कि जब नेता भाषण करते हैं तो जब बाकी नेता स्टेज पे बैठते हैं वो कभी ताली बजाते हैं या वाह वाह नहीं करते, कहते हैं अगर ये जम गया तो हमारा क्या होगा जाके जी। आप समझ रहे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट का फर्क है जी। कहते हैं गीत भी चाहिए। आप सब जानते नहीं होंगे बट गोयल साहब बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं युवकों के लिए, तो हम अपील करेंगे लास्ट में आपका गीत भी सुनना है हम।
तो युवको राहुल जी कहते हैं मेरे को गीत गाना है, मैं आपको कहता हूं आपको सब कुछ गाना है। ये जो आप MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एडमिट हुए हैं, उसका मतलब ये है आपको अपने जीवन के अंदर सब कुछ करना है जाके। आपको भाषण की कला आनी चाहिए, आपको अपनी बात बतानी आनी चाहिए जाके, आपको किस तरीके से है वो आनी चाहिए। मैं भी आपकी तरह यहाँ से बैठा करता था जी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको जाकर। मैं भी ऐसे ही नीचे बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए अपने घर से रामलीला मैदान तक पैदल चला जाता था जी, और नीचे जमीन में बैठता था। आप लोग तो कुर्सियों पे हो। तो आज मुझे देखकर आपका याद आ गया कि इसी तरीके से हम वाजपेयी जी की रैलीज के अंदर सुनना चाहते थे, तो पुराना जमाना मुझे याद आ गया अपना। अब तो आप जानते हैं कि 2-4 को छोड़ दो तो बसों में लोग भर के लाने पड़ते हैं जी, खुद सुनने नहीं आते जी। पहले जमाने के अंदर खुद पैदल लोग सुनने आते थे। वाजपेयी जी जब चाहते थे रुला देते थे, जब चाहते थे हंसाते थे जाकर। तो एक नेताजी थे, वो बहुत सालों के बाद अपने कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज के गेट पर पहुंचे, बहुत सालों के बाद गए। कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो कहने लगे अरे वाह वही पुराना गेट। अंदर गए क्लासरूम में, अरे वाह वही पुराना क्लासरूम। फिर लाइब्रेरी में गए, वहां देखा लाइब्रेरी को, अरे वाह वही पुरानी लाइब्रेरी। फिर कैंटीन में गए, अरे वाह वही कैंटीन, वही कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद वो हॉस्टल में गए, अरे वाह वही पुराना हॉस्टल। हॉस्टल में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, अंदर एक लड़का लड़की के साथ बैठा हुआ था जी। तो लड़का तुरंत बोला सर कजन है। अरे वाह वही पुराना बहाना। तो समय के साथ आप लोगों को सब कुछ सीखना है, ये समझ लीजिए बात को जाके जी। मैं अपने स्कूल के अंदर होता था, देखिए मैं खो खो खेलता था, खो खो का कैप्टन था मैं स्कूल के अंदर। मैं बास्केटबॉल खेलता था, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, मैं स्टोरी टेलिंग करता था, मैं पढ़ता था। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो जब मैं कॉमर्स में कॉलेज में गया तो अरुण जेटली जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। मैं भी उनके साथ कॉलेज का सेक्रेटरी बन गया, और फिर मैं वहाँ खो खो खेलता था। वहाँ श्री राम कॉलेज की खो खो में अंदर मैं नेशनल प्लेयर हूँ, अपना यूनिवर्सिटी और स्टेट को रिप्रेजेंट करता था। और मैं फिर कॉलेज का सेक्रेटरी हो गया मैं यूनियन के अंदर। फिर डिबेट करता था मैं, फिर दूसरे जितने कंपटीशन थे सबके अंदर पार्टिसिपेट करता था। हर जगह भाग लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जाके। वो इन क्लासों में नहीं सिखाया जाता, वो आपके मनों के अंदर होना चाहिए जाके। और ऐसा करता करते मैं दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया जाके। पर उससे पहले इमरजेंसी लगी थी, आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो हमारे पिताजी को पहले दिन जेल में भेज दिया गया जी। तो हम विद्यार्थी परिषद में होते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। हमने भी कहा हम भी जेल जाएंगे जाके, तो घर वालों ने कहा नहीं बाप पहले जेल में बैठा है, तुम भी जाओगे तो काम कौन करेगा। पर हमारे अंदर एक जज्बा था कि हम ये जो डेमोक्रेसी का पाठ आज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। और मेरे जैसे पता नहीं कितने नौजवानों ने सत्याग्रह किया और हम तिहाड़ जेल के अंदर चले गए जी। बाप अंबाला जेल में, बेटा तिहाड़ जेल के अंदर बंद था जाके। उसके बाद जब हम निकले, चुनाव हुए, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हुए और प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने हमारी यूनियन का इनॉग्रेशन किया था जाके। लेसन क्या है, कॉलेज में आपके पास बहुत टाइम है जी। आप चाहो आपको अपने जीवन का कैरियर बनाना है, आप चाहो तो सारा समय मस्ती के अंदर गुजार दो जाके, और आप चाहो तो इसी अपने जीवन के भाग को बांटो, क्योंकि यही उम्र है मस्ती करने की, यही उम्र है कैरियर बनाने की, यही उम्र है सोशल वर्क करने की, यही उम्र है अपने आप को सेट करने की कि आपको किस दिशा के अंदर जाना है जाके। तो मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद मैं बीजेपी के अंदर सेक्रेटरी हुआ, फिर मैं युवा मोर्चा का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हुआ। आप ही की तरह छोटे छोटे काम करके मैं आगे बढ़ा जाके। स्कूल तक के अंदर मैं छोटे क्लब बना लेता था। एक मैंने बनाया चंदन तरुण संसार, लोगों को जोड़ लिया जाके। जब खो खो टीम में 12 लोग होते हैं, मैंने 50 लोगों को एडमिट किया ताकि हम जुड़ेंगे। तो आप लोगों को जोड़ने की कला सीखिए, और लोगों को जोड़ना मुश्किल नहीं होता। आपकी आंखों का भाव बताएगा कि आप उसको दोस्त बनाना चाह रहे हैं या आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को अदा कर रहे हैं जाके।
तो दोस्तों जानते हैं ऐसा कर करके उसके बाद मेरे को चांदनी चौक से टिकट मिली, पहली बार लोकसभा की। कभी कॉरपोरेशन नहीं लड़ा मैंने, एमएलए नहीं लड़ा, मेरे से बहुत सीनियर लोग वहाँ बैठे हुए थे, मुझे लगा। पर उसके बाद वो जब टिकट मिली तो मेरे को टिकट कट गई वो। तो कटने के बाद मैंने ऐसा नहीं किया मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं हिम्मत छोड़ दूंगा और मैं अब पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मेरी तो मिली हुई टिकट काट दीजिए। मैं लगातार काम के अंदर लगा रहा और उसके बाद 40 साल की उम्र के अंदर मुझे सदर क्षेत्र से जगदीश टाइटलर का नाम सुना होगा आपने, जगदीश टाइटलर का नाम सुना है, हाँ कि ना? तो जगदीश टाइटलर के सामने मुझे टिकट दी। वो 3 बार का मंत्री था, एमपी था, उसके पास कमांडो थे, उसके बाद धनबल था, वो बहुत बड़ा नेता था कांग्रेस का। और मैं पहली बार, तो वो टाइटलर कहता था हमको कि भाई ये क्या मेरे सामने बच्चा खड़ा कर दिया है, इसने कभी कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो हम कहते थे टाइटलर साहब आपने कभी कोर्ट पीस खेली है ताश के अंदर? अगर तेरी, वो कहता था इस बच्चे के सामने मुझे लड़ा रहे हैं, मेरे को तो अटल और अडवाणी के सामने खड़ा करते तब होता। तो हम टाइटलर साहब को कहते थे टाइटलर साहब आपने कभी कोर्ट पीस खेली है? अगर तुम्हारी 36 को 28 काट सकती है तो मुझे बादशाह लड़ाने की क्या ज़रूरत थी जाके। और वो चुनाव दोस्तों में जीत गया। तो चौथा लेसन क्या है? राजनीति में कभी घमंड, अभिमान, गरूर ये नहीं होना चाहिए जाके, सब शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का। राजनीति में भाग्य भी बहुत काम करता है जाके। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुआ राहुल साहब, तो जगदीश टाइटलर ने मेरे से पहले हराया था हमारे 3 नेताओं को जी, और मैंने हराया उसको। तो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बदल कर और चांदनी चौक भेज दिया गया कि नहीं अगली बार आप चांदनी चौक से लड़ोगे। मैं नहीं लड़ना चाहता था चांदनी चौक से जी, पर उन्होंने कहा अगली बार चांदनी चौक से लड़ोगे। तो 5वां लेसन ये है कि जो पार्टी कहती है अनुशासन आदमी के जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है जाकर। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, अगर आप छोटी बात के ऊपर बाहर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ये सतत लड़ाई है, ये सतत परिश्रम है, इसमें लगातार काम करना पड़ता है। तो मुझे चांदनी चौक से लड़ाया। अब चांदनी चौक से तो हम लड़ने नहीं चाहते थे पर पार्टी ने लड़ाया। कोई बता सकता है हम बीजेपी का कैंडिडेट चांदनी चौक से क्यों नहीं लड़ना चाहता था जी? बताओ। कपिल सिब्बल का तो जमाना बाद में आया था, उस समय तो जेपी अग्रवाल थे। इसलिए कि उस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या के अंदर है, जो बीजेपी को किसी भी कारण से, किसी गलतफहमी से, हमारे कोई कमी के कारण या हमारा काम उनके बीच में और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, कारण वोट कम मिलते थे और हम हमेशा हारते थे जी। तो सब लोगों ने कहा भाई एक मुर्गा और कटने के लिए आ गया है, विजय गोयल हारेगा जाकर। पर दोस्तों आप जानते हो उस चुनाव को मैं जीत गया, और जब मैं उस चुनाव को जीता तो लोगों ने, पहले सदर से मैं जीता था टाइटलर के सामने, अब ये जेपी अग्रवाल भी थे, तो लोगों ने कहा क्या कमाल कर दिया है, क्या कमाल कर दिया है। मैंने कहा तुमने वो कहानी सुनी है, एक बच्चा था नदी में डूब रहा था, किनारे पे बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई इसको बचा नहीं रहा था, तभी लोगों ने देखा एक आदमी ने तेजी से छलांग लगाई और वो बच्चे को बचा लाया। तो लोगों ने कहा वाह क्या कमाल कर दिया, वाह क्या कमाल कर दिया। उसने कहा वाह क्या कमाल कर दिया को मारो गोली, पहले मुझे बताओ धक्का किसने दिया था जाके। तो मेरे को भी पार्टी ने धक्का दिया, पर मैं अनुशासन नहीं तोड़ा ना, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये समझ लीजिए जी। इसलिए आपको सबसे बड़ी बात है कि भाई काम नहीं छोड़ना है आपको जाकर। ये नहीं है, ये ऐसा 2 दिन की बात नहीं है कि मैं 2 नेताओं के चक्कर लगाऊंगा, टिकट लाऊंगा और काम करूंगा जी। सवाल ये है कि आपका जो उद्देश्य क्या है जी। मैं पार्लियामेंट देखने जाया करता था जिस समय मैं एमपी नहीं था, क्यों? मैं प्रोसीडिंग्स को देखता था, मुझे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखने का शौक था। उन दिनों ये लोकसभा राज्यसभा टीवी नहीं थे, इसलिए टीवी पे भी नहीं देख सकते थे। आजकल तो आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते हो। आप में से कौन कौन लोकसभा और राज्यसभा के टीवी के अंदर प्रोसीडिंग्स देखता है? वो हाथ खड़ा करो। अच्छा नीचे करो। अब बताओ कौन कौन युवा जो है अखबार पढ़ता है? हाथ खड़े करो जो अखबार पढ़ते हैं जी। बहुत बढ़िया बात है जी। अब नीचे कर लो। अब मैं आपसे पिछले 3 दिन की खबर पूछूंगा किसी भी लड़के को बुला के। अब हाथ खड़ा करो कौन कौन अखबार पढ़ता है जी। देखो राहुल जी, देखा आपने कितने कम संख्या हो जाती है जाके। इसलिए समाचार पत्र भी
आदत नहीं है हमारी, आप माने या नहीं माने, जितने भी हाथ खड़े हों या नहीं खड़े हों। तो मेरा अगला लेसन है, आपको समाचार पत्र पढ़ना है और समाचार पत्र पढ़ने के बाद न्यूज़ का एनालिसिस जरूर करना है आपने। न्यूज़ का एनालिसिस एक होता है हमने पढ़ लिया और एक होता है कि भाई न्यूज़ का एनालिसिस करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हुई या बलात्कार हुआ या आपने देखा था निर्भया कांड का था, तो एक तो तरीका है कि जिस दिन वो कांड दिखाई दिया आपने उसको पढ़ लिया। दूसरा आपको आता है नहीं, इससे पूरे देश के अंदर एक आक्रोश आएगा जाके, तो वो आक्रोश आएगा, ये आपका एनालिसिस है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में ठीक नहीं चल रहा है जी, उसका आपको एनालिसिस करना है कि अगला उनका मूव क्या हो सकता है जी। दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मत समझना जी कि सब कुछ उन्हीं को आता है जो लोग बड़े हैं जी। ये भी मत समझना कि सारे मंत्री और सारे एमएलए जो है उनको आता है। और मैं राहुल को कहना चाहता हूं कि 2002 में मेरा एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने ये लिखा था, 2002 के अंदर आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जिसमें मैंने लिखा था कि भाई एक इंडियन पॉलिटिकल एकेडमी खुलनी चाहिए जी। क्यों? अभी मैं गया था नेशनल पुलिस एकेडमी को देखने के लिए जी, नेशनल पुलिस एकेडमी को देखने के लिए, सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, उसमें मेरे को एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने बुलाया था जी। तो मैंने देखा वहाँ पर जो आईपीएस के लोग आए थे, 168 लोग थे, उनको हॉर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, उनको क्लास के अंदर सारे जितने भी सेक्शन, लॉ, सीआरपी, ये सारे जितने भी लॉ हैं ये सारे पढ़ाए जा रहे हैं। उनको फिर राष्ट्रपति से मिला रहे हैं, उनको फिर प्रधानमंत्री से मिला रहे हैं, उनको फिर विदेश में भेज रहे हैं, इसलिए कि हमारे पुलिस अफसर और हमारे जो आईएएस के लोग हैं वो पूरा एकदम एजुकेटेड होने चाहिए जी, और ये होने चाहिए जी। तो मैंने भी सोचा जब इस तरीके से आईएएस के लिए एकेडमी बन सकती है मसूरी में और नेशनल पुलिस एकेडमी बन सकती है, तो फिर पॉलिटिकल एकेडमी क्यों नहीं बन सकती है जाके। पर मैंने देखा कि हम तो सोच रहे थे और राहुल कराट ने उसको खड़ा भी कर दिया। इसके लिए मैं एक बार दोबारा उनको बधाई देना चाहता हूं जाके, बहुत अच्छा है जाके, होनी चाहिए जाके। ऐसा नहीं है किसी मंत्री को भी किसी विभाग में भेज दो तो उस विभाग के अंदर सब कुछ आता होगा हमको जाके। ये हमारे ऊपर हम कितना सीख सकते हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था तो मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और मेरा कोई ऐसा लक्ष्य भी नहीं था, पर मेरा एक्टिविज्म पूरा था, एकदम एक्टिविज्म पूरा था। यूनिवर्सिटी के कोई डेमोस्ट्रेशन थे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अंदर, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करता था। उसके बाद मैंने एक संस्था बनाई, लोक अभियान। आपको भी कोई ना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनानी चाहिए जाके, एक ना एक सामाजिक संगठन आपका होना चाहिए, चाहे वो आपका हो, आप उसके प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, चाहे आप दूसरे के किसी एनजीओ के अंदर पार्टिसिपेट करें जाकर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए, एक ही रॉकेट साइंस है सिर्फ कि भी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, आपको विजनरी बनना है, आपको इंटरेस्ट लेके काम करना है। जो लोग इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते हैं वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। जानते हो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। एक तो मेरे सवालों के जवाब बहुत जल्दी दिया करो, आप बहुत सोच के नहीं, एकदम तुरंत देने होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था मैं 1977 में, और मुझे पहली बार टिकट मिली 1996 में। बताओ कितने साल के बाद? जोर से बोलो। 19 साल के बाद। और ये बताओ रामचंद्र जी वनवास से कितने साल में आ गए थे? 14। विजय गोयल को 19 साल का वनवास। तो क्या विजय गोयल ने काम करना छोड़ दिया? क्या उसके एक्टिविज्म में कमी हो गई? क्या मैं ये सोच रहा था मैं पार्टी की मुझे पोस्ट मिली या नहीं मिली, या मुझे पार्टी की कोई पोजीशन मिली नहीं मिली, मैं उसकी तरफ सोच रहा था? क्या नहीं, मैं अपने एनजीओस को बना के काम करता था जी। मेरे को एक ही काम था कि पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि विजय गोयल एक ऐसा आदमी है जो लोगों के मदद करता है जी, सोशल वर्क करता है। तो मैंने अपनी जब लोक अभियान संस्था बनाई तो मेरे पिता भी राजनीति में दिल्ली असेंबली के स्पीकर रहे हैं जाके जी, मेरे स्पीकर रहे हैं जी। तो मैंने बनाई एक संस्था लोक अभियान और लिखा
दिल्ली में स्कूल के दाखिलों में जिस किसी को दिक्कत हो वो आए और मेरे को मिले जी। तो पहला कस्टमर मेरे को आ गया 1 हफ्ते के बाद जाके जी। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कस्टमर, जिस तरीके से हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं हर रोज, अब जितना ज्यादा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ज्यादा कितना बढ़ेगा, उसी तरीके से हमको अपनी सोशल एक्टिविटीज को ही बढ़ाना है। कि मैंने 20 लोगों से तो कांटेक्ट कर लिया, 50 से कांटेक्ट कर लिया, 3 प्रोग्राम तो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए, 2 कल्चर का कर लिया, 1 पेंटिंग कंपटीशन कर लिया। अब मुझे और कैसे करना है ताकि मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई अब तुम पोस्टर लोगों को बुला के घर बुलाओगे और उनको चाय पिलाओगे। तो मैंने उनको कहा फिर मेरा कैसे जमेगा मामला जाके जा। तो उसको जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जाके, उसको जमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा जैसे आपने देखा है कि स्कूल कॉलेज और फिर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, 3 बार मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, 2 बार जयप्रकाश जी को हरा के और 1 बार टाइटलर साहब को हरा के 3 बार लोकसभा में बना। उसके बाद मैं राज्यसभा के अंदर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। और जानते हैं मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर था जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर था। किस लिए था मैं जानते हो? मैं प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना कुछ सुझाव, जो मेरे जैसे अभी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक ऐप बनाई हुई है, किसको मालूम है? हाथ खड़ा करो, जोर से बोलो, कौन बोलेगा? माई गॉड, क्या बोला? भीम नहीं यार, जिसके अंदर वो सजेशन मांगते हैं। माई गवर्नमेंट बनाई है। अब आप हाथ खड़ा करिए, कौन कौन लोग सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हैं, क्योंकि एक बात समझिए, हाथ वही खड़ा करना, नहीं तो मैं किसी को भी बुलाऊंगा और पूछूंगा जी। तो सोशल मीडिया के अंदर जो लोग एक्टिव हैं वो हाथ खड़ा करो। सोशल मीडिया में कितने हाथ हैं, कितने परसेंट हैं? राहुल जी देखो ना जरा, राहुल जी कितने परसेंट हाथ हैं? 10% हाथ हैं। तो सोशल मीडिया में अब एक्टिव होना पड़ेगा आपको। फेसबुक पर, ट्विटर पे, मेरी फेसबुक पर 10 लाख लोग हैं। एक तो आप सब लोग मेरी फेसबुक ट्विटर पे आओ और अपने सजेशन दो। दूसरा मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ जो नए विचार हैं वो इंप्लीमेंट करो जाके। आपने वो फिल्म देखी थी तारे, कौन सी है? तारे ज़मीं पर, देखी आपने जाके? कितनी अच्छी फिल्म थी वो जाके। आपने वो 3 इडियट देखी क्या? हाँ कि ना? और आपने दंगल देखी क्या? बड़े फिल्मों में ही जा रहा है तुम्हारा समय, लग रहा है मुझे ऐसा। बड़ा अच्छी बात है यहाँ पे। क्या मैसेज देती है फिल्म? आज का यूथ बहुत कुछ करना चाहता है, उसके मन में सपने हैं, वो अपने सपनों को साकार होता हुआ देखना चाहता है। जब उसके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, कोई विजन आता है, तो तुरंत उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा जाके। उसके साथी कहते हैं तू कर नहीं पाएगा, हम डिस्करेज करते हैं। ये तारे जमीन पर फिल्म हमारे को बताती थी कि भाई युवाओं का, बच्चों का ख्याल रखना है जाके, और उसको ख्याल रखने के इलाज में इतनी शक्ति है कि वो दर्द के ऊपर मरहम लगाता है जाके। एक आप प्यारी सी झप्पी दे दें और एक प्यारी सी पप्पी दे दें तो यूथ ऐसे खड़ा हो जाता है, समझ लीजिए। और हमारे मंत्रालय का काम यही है कि हम आपको प्यार की झप्पी और पप्पी देंगे, जिसके दिमाग में जो आइडिया हो वो आके सीधा विजय गोयल से मिल सकता है जाके। मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या था? एक आदमी ने सबके दिल जीत लिए जाके। तो आपका अगला मैसेज है, आपको लोगों के दिल जीतने हैं, दिल जीतने हैं जी। ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जिसको आप नहीं कर सकते जी। एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर बनना आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, किस किस को टिकट चाहिए वो हाथ खड़े करो, जिन जिनको टिकट चाहिए चुनावों के अंदर जाके। मैं आपको टिकट का मंत्र बताता हूं, टिकट कैसे मिलती है जाके। टिकट मिलती है जब आप ये अपने दिमाग में मान लेंगे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है जाके।
पर मेहनत डबल कर देंगे जाके। जैसे ही आप ये मानकर चलते हैं, अभी मेरे को एक मिले थे, स्टूडेंट मिले थे, मैंने कहा आप इस एकेडमी में क्यों आए हो जाके? तो उसने कहा जी कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ जाके। जिस दिन उसने अनाउंस कर दिया मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो बाकी के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे जाके जी कि इसको अभी डाउन कर दो जाके। पहला मंत्र यह है कि आपको सोचना चाहिए कि मेरे मन में इतनी भावना होनी चाहिए कि मैं समाज के अंदर किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई काम करूँ जाके। काम करते करते आप निगाह में आ जाएंगे, समझिए। जब मैं छोटा था तो मेरे को जब चुनाव लड़ने की बात थी तो मैंने सबके साइन करा लिए कि भाई आप जो है सबके साइन कराए कि विजय गोयल को टिकट दो। किंतु मैं फिर नेता के पास गया, मुझे टिकट क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी बोलती है जी। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बोलती है? तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से बोलती है कि एक सुगंध फैलती है काम करने वाले आदमी की जाके, एक सुगंध फैलती है काम करने वाले आदमी की कि ये व्यक्ति, ये नौजवान अपने क्षेत्र के अंदर बहुत काम कर रहा है जाके। तो दोस्तों, आप गांव में काम कर सकते हो, आप स्लम में काम कर सकते हो, आप अपनी गली मोहल्लों में काम कर सकते हो, आप स्वच्छता का मैसेज दे सकते हो। प्रधानमंत्री ने इतनी सारी स्कीमें चलाई हैं, उन किसी भी स्कीम के साथ जुड़ सकते हो। आपको रुकना नहीं है जाके जी, आपको रुकना नहीं है। एक कविता है बड़ी अच्छी, ना समझो नदी का बहाव नहीं बदलेगा जी। आप सब कुछ कर सकते हो, इसमें मैसेज है। ना समझो नदी का बहाव नहीं बदलेगा, ना समझो पर्वत का झुकाव नहीं बदलेगा। बदलोगे तो ये आलम जरूर बदलेगा, बदलोगे तो ये आलम जरूर बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलो, जमाना जरूर बदलेगा, जमाना जरूर बदलेगा जी। पिछले 30-40 साल से हम सक्रिय हैं जी। वो सक्रियता आपको अपना रखनी है जाके। नए आइडियाज हैं, लोगों से मत डरो इस बात की कि तुम्हारा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा जी। इस बात की हिम्मत रखनी है आपको कि मेरा आइडिया जो है वो बहुत चलेगा जाके जी। मित्रों, मैं समझता हूं कि आप लोग जो 3 दिन के इस कैंप के अंदर आए हैं, आपको जितना सीखने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है जाके। अपने अंदर एक्टिविज्म लाओ, और कोई नहीं सिखाएगा तुमको, कोई नेता नहीं बनाएगा आपको जाके जी। नेता आपको खुद बनना है, और नेता वो है जो दिशा दे सकता है। नेता वो है जिसके पास विजन है, नेता वो है जिसके पास आइडिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you very much. And we'll now quickly take a question because looking at the paucity of time, I won't be able to take more questions. लेकिन माननीय गोयल साहब से भी अनुरोध है और स्टूडेंट से भी अनुरोध है, छोटा सवाल और छोटा जवाब। The first question is coming from podium number 3, Mr. Satyam. Podium number 3, Mr. Satyam, please, quickly. You will see, sir, you will see the person on the screen, the one who's asking question. On the left-hand side of yours, in the front, yes. Shouldn't the youth ministry represented by the youth? ठीक है. The question is, sir, shouldn't the youth development ministry be represented by youth? दोस्तों, एक और बात ध्यान रख लो जी, उम्र से युवा नहीं है, काम से युवा है, ये समझ लेना बात है। और सुनो मेरी बात को, जयप्रकाश नारायण बुजुर्ग आदमी, दुनिया इकट्ठी कर ली उसने, लोगों ने देखा इसकी आंखों में तड़प है कि नहीं है जी। अन्ना हजारे बुजुर्ग आदमी, फिर मैं तो इतना बुजुर्ग नहीं हूं, इसलिए मेरे बारे में मत कहो। And last question from podium number 2, Mr. Virendra. Mr. Virendra, please go ahead. गुड आफ्टरनून एवरीवन। छोटा सवाल पूछिए प्लीज। भारत एक युवा देश होने के बावजूद भी आज ही इस युवा देश में जो मेहनती और गुणवान खिलाड़ी है उनको आगे लाने के लिए भारत सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? अभी भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जाके, मैं पहले की चर्चा नहीं करूंगा, पर क्योंकि अब मैं खेल मंत्री हूं, आपने अभी देखा होगा कि सबसे बड़ा कदम तो हमने यही उठाया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर
जब कोड का पालन नहीं किया जा रहा था और कुछ दूसरे लोग आए थे तो हमने तुरंत कदम उठाया। पर अभी जो हम उठा रहे हैं, हम एक पोर्टल बना रहे हैं जी। अभी इसी महीने में हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको लॉन्च करेंगे, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल। उस पोर्टल के अंदर कोई गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी कोई भी खिलाड़ी है 8 साल की उम्र के बाद से, उसका आप बायोडाटा और या वीडियो अपलोड कर देंगे तो हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर उसको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। आपके समझ में भी कोई ऐसा खिलाड़ी हो तो मेरे पास लेकर आइए। और ये आप देखेंगे 6 महीने लगते हैं एक पोर्टल को बनाने में, इसलिए इसकी कल्पना हमने जैसे ही मैंने मंत्री बना था वैसे ही हमने इसकी कल्पना करी और उस पोर्टल अब तैयार है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको लॉन्च कर देंगे जी। तो ऐसे ही जितने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं उनको हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लगातार मैं देश के अंदर जितने भी हमारे इस तरीके का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम खिलाड़ियों को हर तरह की मदद दे रहे हैं। आपकी दृष्टि में कोई भी अच्छा एक भी खिलाड़ी हो, सीधा आप स्पोर्ट्स मंत्री के घर पर आ सकते हो। जब बहुत बहुत शुक्रिया विजय गोयल जी आपका, और आपने जो अपने अनुभव साझा किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय छात्र संसद के मंच से विजय गोयल जी को आपने सुना, और अगले सेशन में हमारे बीच जाने माने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी होंगे। उनके लिए अगला सेशन निर्धारित किया गया है। आप सभी समय से पहुंचे, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए अब मैं बुलाऊंगी डॉक्टर शैल श्री हरिदास, डायरेक्टर एसओजी को। अच्छा ठीक है, ओके। वोट ऑफ थैंक्स मुलतवी किया गया, आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले जाने से पहले जनगण मन के लिए हम सभी आपसे निवेदन करेंगे, आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसके साथ ये इनॉग्रल सेशन हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन ठीक 40 मिनट में हम अगला सेशन प्रारंभ कर देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कितनी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ मच इज टू मच, और इसे लेकर हमारा नया पैनल यहाँ मौजूद होगा। आप सभी से गुजारिश है कि समय से पहले अपना स्थान यहाँ नियत कर लें। Thank you, Neelam ji. This is to inform all of you that the next session will start at 3:30 p.m. sharp. 3:30 पर अगला सत्र शुरू किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि अपना खाना जल्द से जल्द खत्म करके पंडाल में फिर उपस्थित हों। 3:30 पर अगला सत्र शुरू किया जाएगा। It's a sincere request to all the participants not to crowd on one gate. You can use multiple gates available. I can see there is a crowding at one corner of the pandal. Please, to avoid any emergencies, please do not do that. Kindly use all possible gates. Do not crowd at one end. It's a sincere request to all to join us back for the next session at 3:30 p.m. sharp. Please let your friends know as well that the next session is going to begin at 3:30 p.m. in which we are going to witness Arnab Goswami ji, and I'm already getting information that our question booths are flooded with the questions. Thank you very much for your response. See you back at 3:30 p.m. Thank you. बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे।
अब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 ना। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 ना। सानी पम गम पनि सानी सा ग म ग सानी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सानी सा सा सानी सा ग ग ग म ग ग रे 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 सानी पनि सा रे सानी सा ग ग रे रे म ग रे ग म म ग म ग म सा ग नि सा पनि म ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance.
It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. The light has gone out, I said, and yet I was a humble believer of the light that surrounds the leader forever. Let's go. Let's go. जियो उठो बढ़ो जीतो तेरा मेरा जहां Let's go. ओ यारो ये इंडिया बुला लिया दीवारों ये इंडिया बुला लिया कदमों में एक भंवर का है दिन जश्न का आज दिन है सीनों में तूफान का है दिन बाजू आजमा ये दिन है तेरा दिन है तू जोर लगा चल आंख मेरा कल ना आए दिन ये जियो उठो बढ़ो जीतो नया जियो Let's go.
Kennedy, one persistent and pressing domestic issue was that of civil rights. In late August 1963, a huge march involving 250,000 people converged on Washington. The march was a massive protest against deep-seated racism in America, particularly in the American South. Its leadership met Kennedy in the Oval Office. The Kennedy administration feared that the march might lead to mayhem, to riots in the streets and ungovernable disorder at the very heart of government. Instead, they got one of the most powerful and moving speeches of the 20th century, delivered by the civil rights leader, Martin Luther King. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. So let freedom reign from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom reign from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city,
we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. We shall never surrender. I have a dream today. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. I pledge you all, in the name of peace, democracy and freedom for all. This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. The idea that anything is possible. We can be the first generation that says no to stupid poverty. This is not about charity in the end, is it? It's about justice. 6,500 Africans are still dying every day of a preventable, treatable disease. For lack of drugs, we can buy in any drugstore. This is not about charity. This is about justice and equality. Your calling isn't something that somebody can tell you about. It's what you feel. It is a part of your life force. It is the thing that gives you juice. And always take a stand for yourself, your values. You're defined by what you stand for. Honor your calling. Don't worry about how successful you will be. Don't worry about it. Focus on how significant you can be in service, and the success will take care of itself. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Stay hungry, stay foolish. Nobody expected me to win the races I've won before. Nobody expected me to win the Tour de France. Nobody expected me to do anything. I had nothing to lose. What we're facing now is a crisis that is by far the most serious we've ever faced. A day will come when our children and grandchildren will look back, and they'll ask one of two questions. Either they will ask, what in God's name were they doing? Or they may look back and they'll say, how did they find the uncommon moral courage to rise above politics and redeem the promise and do what some said was impossible? हम इंडियंस भी बड़े अजीब हैं। 1 रुपया कम करवाने के लिए ऑटो वाले से 1 घंटे तक बार्गेन करते हैं। लेकिन जब चैरिटी की बात आती है तो एक पल भी नहीं रुकते हैं। आज भी नए कंप्यूटर को तिलक लगाते हैं, मगर आईटी में पूरी दुनिया को अपने पीछे भगाते हैं। हम चिल्ड आउट भी हैं और संस्कारी भी। हम डेमोक्रेटिक भी हैं और सरकारी भी।
बड़ी हमारी मेहनत है और बड़े हमारे नसीब हैं। हम इंडियंस भी बड़े अजीब हैं। हम श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में एक साथ मानते हैं। बुरा होने के साथ साथ हम अच्छा होना भी जानते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न होते हुए भी तकियानुसी हैं। चाहे जितनी भी दुनिया घूमे, सिर्फ घर में ही हमारी खुशी है। रंग रंग के कपड़े हैं, भांति भांति की बोली है। हर दिन है त्योहार यहाँ पर, एक अरब हम जोली है। हम एक दूसरे से ही झगड़ते हैं, मगर एक दूसरे के ही सबसे करीब है। हम इंडियंस भी बड़े अजीब हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम इंडियंस हैं। जी।
is without fear and the head is held high, where the world has not been broken up into fragments, where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. My Father, let my country awake. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I'm wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. The light has gone out, I say, and yet I was wrong. The light burst out. कदमों में एक भंवर का है दिन, जश्न का आज दिन है, सीनों में तूफान का है दिन, बाज़ू आज़मा ये दिन है, ये दिन है, तेरा दिन है, तू जोर लगा, चल आंख मेरा, ढलना ये दिन ये, जियो उठो बढ़ो जीतो नया जियो let's go जियो Very good afternoon. I hope you all had your lunch and
I can see some of you are back for the next session. But yes, definitely there are many more students expected because what I see is just 5% of the Pendal full. I request you to kindly start calling your friends and ask them to come back into the Pendal. आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने दोस्तों को फ़ोन करें, उनको विनती करें कि जल्द से जल्द वे पंडाल में आएँ. हमें अगले सत्र की शुरुआत 3:30 बजे करनी थी, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि जब तक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पंडाल में नहीं आते हम सत्र की शुरुआत नहीं कर सकते. मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय श्री अर्णब गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं. वो यहाँ पंडाल के नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन हम सत्र की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि I don't have the enough strength of the student leaders at the venue. So it's a sincere request to all of you to start calling your friends into the Pendal so that we can start this session as soon as possible. Let me tell you once again, all the guests have already arrived long back. So we have them all with us. We all are waiting just for you. So please start calling your friends so that they can come in at the venue as soon as possible and we can start the session. As you all know, this is the first session. This will be called as first session. The session which you witnessed just now was the inaugural session. Now this will be called as session 1 of 7th Bharatiya Chhatra Sansad, titled Freedom of Expression. How much is too much? So this is going to be a really, really interesting session in which we are going to have Professor Taimo Miyabang, Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. We are going to have Honorable Shri Mithilingamji, Honorable Speaker, Puducherry Legislative Assembly and former Chief Minister, Puducherry. We are also going to have Honorable Dr. Rajiv Saizalji, MLA BJP from Solan, Himachal Pradesh. We are going to have 5 student leaders who would be speaking from this stage. We have Honorable Advocate Swati Nakhati-ji, Leader Maratha Andolan and motivational speaker. After that, we'll be listening to eminent speaker Shri Arnab Goswami-ji, Independent Venture Republic and former editor-in-chief of Times Now, which will be followed by question and answers. You have already flooded all the podiums with the questions, but it doesn't stop there. If you still want to ask questions to any of the dignitaries which are going to address all of you in this session 1 of 7th Bharatiya Chhatra Sansad, you can still do so. You can approach the podiums and submit your questions there so that you get an opportunity to ask the question directly to the dignitaries on the dais. Well, let me tell you, friends, after this session 1, that means the session which we are going to proceed with now, we will have the first Youth to Youth Connect session. I repeat, after this session, we will have special session 1, Youth to Youth Connect Part 1, which will be held immediately after this session. Meanwhile, let me share with you that we are present on Facebook, Twitter, and our Facebook. You can find us on Facebook with Bharatiya Chhatra Sansad. Let me just spell the Chhatra for you, C-H-H-A-T-R-A. It's not single H, it's double H, so please mind that well. Bharatiya Chhatra Sansad, with this search, you can find this on Facebook. For Twitter, our handle is BCS Conclave. I repeat, for Twitter, our handle is BCS Conclave. And the hashtag is #7th BCS. Our hashtag is 7th BCS. We are live on YouTube. You can search 7th Bharatiya Chhatra Sansad on YouTube and you can find us online. If your friends are there back at your hometowns, your parents are there, you want to make them see this event, you can ask them to simply log on to youtube.com and search
7th Bharatiya Chhatra Sansad so that they'll be able to watch this conclave from whichever place they are. Where the mind is without fear and the head is held high, where the world has not been broken up into fragments, where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. My Father, let my country awake. Where the mind is without fear and the head is held high, where the world has not been broken up into fragments, where the clear stream of reason has not lost its way, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. My Father, let my country awake. Where the mind is without fear and... Well, my friends, the procession has started walking. So they will reach, all the guests would reach any moment now. It's a sincere request once again to all of you to please call your friends, because even now, it's almost 3:45 and still I don't see enough number of students what you were at the inaugural session. We have to start as soon as possible now, because the guests have started walking already. All those who have already arrived in the campus, in the pandal, I request them to be seated. Please be seated as soon as possible. Guests would be arriving any moment now. I request the security volunteers to please guide the student leaders, those who are still standing. Please help them find a place and sit down. We have to start this session now. I request the student volunteers of the security team to help the student leaders to find a place and settle down. We have to start with this session. I still see many students standing. It's a sincere request. We have to settle down. We have to start this session.
After this session, as I was telling you, we are going to witness the part 1 of Youth to Youth Connect. And that would be the place where you will voice your opinions, you will discuss the issues that you are interested in, and you will find a solution to them and start implementing. Well, I don't know whether I'll get the opportunity to talk to you once again after this session, because you will all start moving towards the places designated for the Youth to Youth Connect Part 1. So let me just share with you that tomorrow program will start at 9 a.m. sharp in the morning. So you all are requested to be there at least 30 minutes in advance so that you can clear all the security checks, collect your refreshments and settle down. You all are requested to be there on time. Tomorrow program will start at 9 a.m. sharp. All the students are expected to be seated by 8:30. Considering the time to entry for such a large number of students, you should at least keep half an hour margin. So we request you to reach the pandal by 8 a.m. so that you will clear all the security checks and be settled down by 8:30 a.m. You will get the refreshment packets at the entrance. Let me repeat. All the students are expected to be seated by 8:30 a.m. tomorrow morning. Considering the time for the entry and collecting your refreshments, you should reach near the pandal at least by 8 a.m. so that you will get your refreshment packets at the entrance and you can settle down. Tomorrow, we have scheduled 3 sessions. Session 2, which will be the morning session tomorrow. Session 2 is Colonial Mindset, a Rich Heritage or a Curse. Session 3, Reservation on Caste, Social Justice or Total Injustice. After the 3rd session, there will be a lunch break. I repeat, after the 3rd session tomorrow, there will be a lunch break of about 40 minutes, just the way you had today. You are required to complete your lunch within the given specified time and to remain seated in the pandal. Arrangement of the lunch, as you must have witnessed today, is done in 3 different pandals. You are requested not to crowd in one single pandal. So that you can complete your lunch quickly, and after the lunch, while entering the pandal, you will get the refreshment packets for evening tomorrow. After lunch tomorrow, we will have 4th session, Repositioning India, a Global Perspective. And after the 4th session tomorrow, there would be the 2nd part of Youth to Youth Connect. I hope most of you have reached. I'd still request, I can see many students walking, standing, talking on mobile phones. It's a sincere request, my friends, to settle down as soon as possible. Over to Neelamji. Thank you. Thank you very much, Gautam. ओपन क्लासरूम में हैं हम, लेकिन क्लासरूम की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं भी होती हैं. क्लासरूम में थोड़ा बहुत फन हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं. और मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी, प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे गौतम भी बार बार कह रहे थे कि डेकोरम को हमको बनाए रखना है, अपनी मर्यादा को हमको नहीं भूलना है, और हमें समय से पहले आ जाना है ताकि हम अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें. और मैं आपसे पीछे जो लोग अभी भी थोड़ा मूवमेंट में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठें, क्योंकि बहुत जल्द हम कुछ ही पलों में ये सेशन यहाँ शुरू करेंगे. आप जानते ही हैं हमारे बीच वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी, आप सब उनके नाम से परिचित हैं. वो यहाँ पधारेंगे, हमारे आज के स्पीकर, और उनकी बातों को, उनके विचारों को हम सुनेंगे, उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, अपने अनुभव वो हमसे साझा करेंगे. और आपके भी सवाल होंगे, जैसे कि गौतम ने आपको बताया कि आप भी अपने सवाल उनसे कर सकते हैं. अक्सर वो लोग जो कि पर्दे पर छाए रहते हैं, उनसे हम बहुत कुछ पूछना चाहते हैं.
वो तमाम सवाल पूछना चाहते हैं जो हमारे जहन में आते हैं जब हम उन्हें देखते हैं टीवी के पर्दे पर, फिल्म के पर्दे पर, और ख़ास तौर से जब टीवी पत्रकार होते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी, उनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये तमाम सवाल हमारे मन में अक्सर उभर कर आते हैं और मन करता है कि कभी मिल जाएं तो उनसे पूछ लें। तो आज ये मौका आपके पास है और उस मौके का भरपूर फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अपने सवालों को तैयार रखिए और आपके साथ में जो भी पोडियम है वहाँ से आपको अपना सवाल करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने सवाल पहुँचा दिए होंगे, जो भी आपके करीब में पोडियम है उनके थ्रू ये सवाल आप उठा सकते हैं। तो भारतीय छात्र संसद के इस मंच से हम लोग सब अपनी बात करते हैं, पर आपको इस बात में कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ आनंद आ रहा है आपको इसमें? कुछ रस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो आप कह सकते हैं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कह दीजिए नहीं आ रहा। आ रहा है? नहीं की आवाज है किसी की क्या? मुझे उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। और देखिए, ये एक इंटरैक्टिव मंच है और इंटरैक्टिव मंच का मतलब ही यही है कि जब बातचीत, विचार, कम्युनिकेशन दो तरफा हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास हमारे जो स्पेशल पैनलिस्ट यहाँ आते हैं उनके पास पूरी की पूरी भंडार, पूरा का पूरा खान रहता है बात करने के लिए, और समय भी कई बार कम पड़ जाता है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम उनकी बातों को सुन सकें, समझ सकें, और हमने उनके बारे में अपनी जो तस्वीर बनाई है अपने जहन में, वो उस तस्वीर में अगर कोई बादल हैं तो वो भी छट जाएं और हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। और यही हमारे इस मंच का उद्देश्य भी है कि वो सारे बादल छट जाएं जो भ्रम के बादल हैं, वो सारे बादल छट जाएं जो रुकावटों के बादल हैं, और हम एक साफ उजली कायनात में अपनी बातों को रख सकें, उनकी बातों को सुन सकें। तो इसी के मकसद से ये भारतीय छात्र संसद की संकल्पना, जो कि अब 7वें वर्ष में प्रवेश कर गई है, और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से आपका जो पार्टिसिपेशन है, आपकी जो भागीदारी है, आप जिस प्रकार से उत्साह से यहाँ आते हैं प्रतिवर्ष, वो ऐसा ही बना रहेगा। 3 दिन अभी हमारे पास हैं। आज ये पहला दिन है और उसके बाद कल का और परसों का दिन है, और अलग अलग सेशंस हैं और अलग अलग विषयों के जानकार हमारे बीच पहुँचेंगे जिनसे हम बात करेंगे और आपकी बातचीत भी करवाएंगे। तो थोड़ी देर में हमारे विशिष्ट मेहमान, मुझे बताया गया, यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम आज का ये सेशन शुरू करेंगे, जिसका, और आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुँच गए हैं। हम तालियों से स्वागत करेंगे हमारे विशिष्ट मेहमान, हमारे पैनलिस्ट, हमारे स्पीकर्स यहाँ पहुँचे हैं। श्री वी वैथिलिंगम, माननीय अध्यक्ष पुदुचेरी विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री पुदुचेरी, जाने माने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिन्हें आपने टाइम्स नाउ के प्रोग्राम्स में देखा है और अब अपने नए वेंचर रिपब्लिक के साथ आपके समक्ष आने वाले हैं। अर्नब गोस्वामी आज के इस विषय पर अपने विचार को रखेंगे। तालियों के स्वागत करेंगे, अपने विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित करेंगे यहाँ मंच पर सीधे पधारें। हमारे भारतीय छात्र संसद के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और हमारे आज के विशिष्ट स्पीकर, आपसे गुजारिश करेंगे आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तो भारतीय छात्र संसद का ये 7वां वर्ष, और MIT पुणे के विवेकानंद मंडप में इसी प्रकार से आपने देखा कि भारतीय टीचर्स कांग्रेस का भी आयोजन किया गया पिछले साल, और एक और आयोजन भी कुछ ही दिनों में 10, 11, 12 फरवरी को अमरावती में नेशनल विमेंस पार्लियामेंट, इसका भी आयोजन होगा आपकी जानकारी के लिए। और हम जानते हैं बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे गुजारिश करेंगे आप सब अमरावती पहुँचे 10, 11, 12 में, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा आयोजन वहाँ भी होने जा रहा है। तो हमारे विशिष्ट अतिथि पहुँच चुके हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ मच इज़ टू मच। सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का यहाँ पर हम स्वागत, अभिनंदन करेंगे। मैं गुजारिश करूँगी राहुल करार जी से, हमारे चीफ कन्वीनर भारतीय छात्र संसद की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के माध्यम से, श्री वी वैथिलिंगम जी, माननीय अध्यक्ष
पुदुचेरी विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री पुदुचेरी हमारे बीच यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि विधानसभाओं के अध्यक्ष महोदय यहाँ पहुँचते हैं, अपनी बात को रखते हैं और स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के एक सेशन को वो संबोधित भी करते हैं। आज हमारे बीच माननीय वी वैद्यलिंगम जी भारतीय छात्र संसद के मंच पर, हम उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हम स्वागत अभिनंदन करेंगे वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी एक जाना माना टीवी पत्रकारिता का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, हमारे बीच अपनी बात को रखने के लिए आज विशेष रूप से पधारे हैं और पहले भी पधार चुके हैं। 2012 में, आपको अगर याद हो तो, पहले भी अर्नब गोस्वामी भारतीय छात्र संसद के मंच पर आए थे और अपनी बात को रखा था। हमारे बीच एडवोकेट स्वाति नखाटे जी, जाने माने नेता और मोटिवेशनल स्पीकर, यहाँ मंच पर मौजूद। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से। आज उन्हें भी सुनने का मौका यहाँ मिलेगा। हमारे बीच हमारे अन्य विशिष्ट मेहमान दानिक रूपानी जी, उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन 7वीं भारतीय छात्र संसद के मंच से और युवा छात्र नेताओं के इस समागम में हम उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियां अगर कम पड़ेंगी तो शुक्रिया। इशारों में आप ज्यादा समझते हैं, कहने से आप कम समझते हैं। चलिए, अच्छी बात है। हमारे बीच प्रोफेसर तमोमी बांग, वाइस चांसलर साहब, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच छात्र नेता, युवा नेता जिनसे ये मंच सज रहा है, उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मित्रों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ मच इज टू मच? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कितनी? एक छोटा सा दोहा मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा गया है, अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आप समझ गए होंगे, न ज्यादा बोलना न ज्यादा चुप रहना। कौन सी ऐसी मर्यादा है, कौन सी ऐसी सीमा रेखा है जो तय कर देती है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कहाँ और कितनी होनी चाहिए? आज का ये विषय है, आपके सामने मंच सज चुका है। एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से आइए जरा इस विषय को और थोड़ा गहराई से समझ लें। Freedom of expression. How much is too much? To be or not to be? Whether the freedom of expression to Indian citizens is absolute is a million-dollar question being debated since the early days of independence. Article 19 of the Constitution of India guarantees all its citizens freedom of speech, expression, peaceful assembly, formation of unions and organizations, to take up any profession, etc. Similarly, Article 25 to 28 of the Indian Constitution guarantee its citizens' right to conscience and to practice and propagate any religion. However, the subsequent subclauses in the Article 19 and Article 25 to 28 provide power to the state to enforce reasonable restrictions on above-mentioned rights of citizens to prioritize Constitution's supremacy, social harmony, and India's unity and integrity. While freedom of expression remains suspended in the case of imposition of emergency, curtailment of freedom of expression itself creates emergency-like situation for citizens. It is evident from many events that freedom of expression as well as provisions to curb it have been misused by some citizens and the government respectively. Let us re-examine how much of freedom of expression is too much. तो हिंदी में आपने समझा, अंग्रेजी में आपने समझा, और मैं जानती हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और आज इसी विषय को हम और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर तमो मी बंग जी हमारे साथ हैं।
हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए और अपनी बात हमारे स्टूडेंट्स लीडर्स जो यहाँ बैठे हैं तमाम उन तक पहुँचाएं। प्रोफेसर तमो मीबंग हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि आएँ और अपने विचारों को रखें। स्टूडेंट्स लीडर आपको सुनना चाहते हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। It is my real privilege to come all along Arunachal Pradesh to join you here to share my views on freedom of expression. How much is too much? Well, my dear young students, India is a multilingual and pluricultural nation. We find people of different languages, culture, with different dress, food habits from north to south and east to west. Here lies the strength and unity of the nation. To rule India itself is a miracle when we see other nations around the world. Problems of different regions and are different, as articulated by our elected leaders in the parliament from time to time. The heart of the Indian Constitution, under Article 19 says, everyone has the right to freedom and expression. This right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media or regardless of frontiers. Freedom of speech and freedom of press lay the foundations of democratic organizations in India. Well, friends, let me see what freedom of expression is really. What you think and what you express and what you implement into action for your own goodness and for the goodness of the society and the nation. I think that is the freedom of expression. What we express, people should at least hear, not necessarily consider. Enough space and opportunity to express our freedom of expression be given to all. Talking too much by a particular group dominating the table amounts to disturb others' freedom of expression. One should understand the sensibility of the subject on which one expresses his views so that his views does not harm or injure the others and create problem in the public. With this, let me underscore few areas. During election campaign, in India, as we have experienced and we have been observing, candidates' speeches are seen to be too high sounding. And with attacking the others, digging at others' activities, without telling himself what he is doing for the people and what he is going to deliver to the people in case he is voted to power. In India,
It is found that our candidates in electoral politics attacking each other is too much. Election speeches are becoming less realistic. It is a fact. No party can fulfill their election manifestos when voted to power. If this is the right of expression, can we think of open debate among the candidates like USA in India? Election campaign and speeches here are like theater to draw the crowds. We can say that even today, many people do not read the party manifestos, yet they go for casting their vote. And that is our democracy. Here in India, we again fight hero or heroine worship, which promotes dynastic rule, leading to family-centric politics, and amount to promoting dictator type of leadership. This practice needs to be discouraged through education, through mass awareness program by the youth of the country. Of late, it is again found across the country that when members are in this session, maybe in the Legislative Assembly or Parliament, leaders of the opposition parties used to shout at each other, disturbing the proceedings of the House. They even resort to such an extent of throwing chairs at each other, making the speaker's position helpless. They even walk out of the Assembly or Parliament in protest against an issue or a bill. Is it an over democracy in the country or an exploitation of democratic ideals and concepts? Young men, please ponder on this because you are the future of the nation. If issues are really genuine, members should sit across the table to discuss and to resolve the issues. Discussion itself is the democratic expression. Intellectual discussion should always be there. Let people speak out the merit of the case. Okay. It is always necessary or almost necessary for any government that the people should have a doubt, people should have a good opinion of it. Nobody should speak against the government or the minister or its policy. But when policies are wrong, when elected representatives are not online, people bound to speak out their mind. And this itself is a step to promote healthy democracy and good governance. Thank you. Thank you very much, Professor Tamo Mibang. Thank you so much for your words. और अब भारतीय छात्र संसद के मंच से आप जानते हैं विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं और एक ऐसा ही सम्मान हमने देखा इनॉग्रल सेशन में गार्गी पुरस्कार प्रदान किया गया एडवोकेट वंदना चौहान को उनके योगदान के लिए और एक ऐसा ही पुरस्कार आदर्श युवा विधायक पुरस्कार की भी स्थापना भारतीय छात्र संसद के मंच से ही हुई है। ऐसे विधायकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने कुछ ऐसा काम अपने क्षेत्र में किया है, अपनी जो भी राजनीतिक जीवन रहा है उसमें उनका योगदान रहा है। उन युवा विधायकों को ये पुरस्कार यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से हम प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं
और आदर्श युवा विधायक पुरस्कार में इस बार इस सेशन में जो नाम हम यहाँ घोषित करने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर राजीव सैजल, कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश से भाजपा के आप एमएलए हैं, जिन्हें इस वर्ष ये आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर राजीव सैजल, कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश से युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। आप नेता के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आपने उसमें पढ़ाई की, आपने कॉलेज से ही लेकिन राजनीति में शिक्षा ली है और जिस प्रकार से अपनी चुनावी जीत को दर्ज कराया है वो अपने आप में बहुत अनोखी। 2 बार चुनाव लड़ा, जीते और बीजेपी के नेशनल काउंसिल के भी सदस्य हैं। आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, आदर्श युवा विधायक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक जिन्हें राजनीति के साथ साथ ट्रैवलिंग, म्यूजिक और किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक है। आपकी तालियों के बीच हमारे युवा छात्र नेताओं के लिए एक आइडल, एक युवा सिंबल जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा छात्र नेताओं को? डॉक्टर राजीव सैजल। सर्वप्रथम मैं आयोजकों का अपने हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए, विशेष तौर से कराड़ साहब का जिन्होंने ये अवसर मुझे उपलब्ध करवाया। मित्रों, राजनीति इतनी बुरी नहीं है जितना उसे समझा जाने लगा है। राजनीति में भी अच्छे लोग हैं। ये बात अलग है, राजनीति में जो बुराई है उसको पब्लिसिटी ज़्यादा मिली है, उसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा हुआ है, इसलिए लगने लगा है, ये धारणा बन गई है कि राजनीतिक क्षेत्र अच्छा नहीं है। इसलिए इस धारणा को बदलना होगा। अच्छे लोग जब राजनीति के अंदर आएंगे, युवा लोग नए सोच, नए विजन के साथ जब राजनीति के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर से ये क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप इस क्षेत्र की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जिस भावना के साथ आपको इस क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाना है वो भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो भावना क्या है? भावना गाँव और गरीब की सेवा। प्रधानमंत्री जी ने आदर्श दे दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। राजनीति में आने के बाद मेरे बड़े बड़े कारखाने हो जाएं, मेरी बहुत बड़ी गाड़ियों का, अच्छी महंगी गाड़ियों का एक फ्लीट हो जाए, बहुत बड़ा भूखंड, बहुत ज़मीन मेरे पास हो जाए, मैं इंडस्ट्रीज़ का मालिक हो जाऊं। नहीं, अगर ये सोच है, अगर ये महत्वाकांक्षा है तो फिर आप राजनीति में आने के लिए फिट नहीं। ये बिजनेस वालों को करना है, ये राजनीतिक क्षेत्र में आने वालों को नहीं करना है। तो शुद्ध संकल्प के साथ आएँ, सादगी की भावना के साथ आएँ। मैंने 2007 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद जो वैगन आर खरीदी थी, आज भी उसी में चलता हूँ। बहुत लोगों ने कहा बदल दो इसको, मेरा मन नहीं माना। जब हम कपड़ा खरीदते हैं, पैंट शर्ट खरीदते हैं तो उसको पैंट के साथ मैच करते हैं। अपने व्यक्तित्व को जो राजनीति में है उसको भी मैच करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का जो गरीबतम व्यक्ति है, क्या मेरा व्यक्तित्व उसके साथ मेल खाता है? क्या गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके मेरे साथ अपना दर्द जो है वो शेयर कर सकता है? तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सादगी की भावना के साथ आएँ, शुद्धता की भावना के साथ आएँ, गांव और गरीब की सेवा करने की भावना के साथ आएँ, तो आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज का विषय भी है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ओनली फॉर 1 मिनट। तो ये, और कई बार टू पुट पॉइंट अक्रॉस 1 सेकंड भी बहुत होता है, और घंटों लगे रहें तब भी कोई बात समझाने में भी समस्या आती है। इस गौरवपूर्ण 1 क्षण 1 मिनट को मुझे देने के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे लिए निश्चित तौर से बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय छात्र संसद के इस मंच से डॉक्टर राजीव सैजल, आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और भारतीय छात्र संसद का एक कार्य और भी है, और वो ये कि अपने युवा छात्र नेताओं को, उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का, और ये काम हम भारतीय छात्र संसद के मंच से प्रतिवर्ष करते हैं। अपने युवा छात्र नेताओं को मंच पर बुलाते हैं और वो आज के विषय पर अपनी बात को रखते हैं सामने। और ऐसे ही एक युवा छात्र नेता जो कि जम्मू कश्मीर से आए हैं, नाम है राशिद अल्ताफ, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के छात्र हैं। आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे राशिद अल्ताफ। Good afternoon, everybody.
I'm Rashid Altaf, and I bring greetings from the land of Jammu and Kashmir to the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj and to the people of Maharashtra. I find this offensive. This is a sentence that most of us might have heard quite often. Somebody says something, somebody else finds it offensive, and an argument starts. So naturally, there are two sides to this argument. One says that he's exercising his freedom of speech. The other says that he's exercising too much of his freedom of speech. This brings us to our topic. How much is too much? Well, the idea of freedom of expression is quite simple. I must have the freedom to express myself. And if I see anybody messing with my future and the future of my country, I should have the freedom to point that out. But the simplicity of this idea ends when the Article 19(2) of our constitutions ironically put certain reasonable restrictions on my freedom of speech, based on vague terms like public order, morality, decency. Who decides what is reasonable? Who decides what is moral? Not only this, the final nail in the coffin of our freedom of speech is when you try to criminalize it. Defamation is a criminal offense and can get you a maximum sentence of up to 2 years. But ironically, at the same time, under Section 352 of IPC, you can get a maximum sentence of just 3 months for assault. This means that if a person threw ink on somebody, he knows that he'd be getting a lesser sentence than if he had used the same ink for writing against that person. Try to think of that. Why is it so hard for people to realize that we are sabotaging our own freedom? Why is it so hard to understand that it is our hypocrisy and the irony of our system that is taking us down? Let me explain. On January 7th, 2015, 2 terrorists barged into the office of a French satirical magazine called Charlie Hebdo. They killed 12 journalists and injured 11 others. It was a tragedy, and everybody went in their support. Even in India, we held candle marches, and everybody was shouting at the top of their lungs, "Je suis Charlie, je suis Charlie." France should be allowed to say whatever it wants. But if we're in India, we're going to hold a debate to see how much freedom of expression should be given to you. I'm not against this. But what I'm trying to say is that we are trying to put restrictions on freedom of speech in a country which doesn't have a perfect free speech system in the first place. Even a country like Zimbabwe has more modern free speech laws than us. They have decriminalized defamation, and so has UK and many other modern European countries. So why not us? But after all this, what people don't realize is that free speech is different from hate speech. Does my freedom of speech allow me to say whatever I want without any fear of consequences? No. But my freedom of speech means that the fear of offending somebody should not stop me from saying whatever I think is right. And that is what we have to stand up for. I'd like to exit by saying, thank you. I'd like to exit by saying that the future of our country lies by letting the youth of our nation open themselves up and not trying to figure out what they should and should not say. I beg you, to everybody present, especially the youth of this country, that please wake up and realize what we are trying to push ourselves towards. This is what India needs. But at the same time, remember that freedom of speech does not mean you're free from the consequences of your speech. Thank you. थैंक यू वेरी मच राशिद अल्ताफ. और राशिद अल्ताफ का भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से. तो युवाओं को आगे आना चाहिए, उनको अपनी बात को रखना चाहिए और उसमें उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ, राशिद अल्ताफ जम्मू कश्मीर से. And now we have here a student from the Netherlands, and his name is Jeroen de Sitter from WU University, Amsterdam. Now we invite him to speak his mind about today's topic. Jeroen de Sitter. Namaskar. I am very grateful and very proud to be here. My name is Jeroen de Sitter, and I'm a student at the Vrije Universiteit in Amsterdam. You and I, we have the same ideals. We are all students wanting the best future that is possible. And we all try to get this future in a different way. In the year 2014, I was president of one of Amsterdam's biggest student organizations. And after that,
I started advising these student organizations on a national political level. Our objective is to give a voice to students in universities and the Dutch politics. There are several ways to do this. For instance, when we had problems with governmental policy, we held a big protest at the parliament in The Hague. We noticed it didn't work. We had to find a different way, a more participative, communicative way. Thus, we set up Holland 2025, a platform for CEOs, key influential stakeholders, key political actors, and students, a platform for conversation. We students want to bring our voice and our expertise into the development of governmental policy. In this platform, our voice was heard. And in this way, we didn't spend time endlessly discussing problems, but got immediate, tangible results. Another problem was our students' organizations' loyalty to big donors. They were loyal to them, but they make us dependent on their ideology. We showed student organizations how to make money from smaller donors. This made the student organizations independent from their big donors' ideology. Student organizations are now free to make their own decisions. And I think democracy is strengthened when we are free to make our own decisions and free to express our own ideas. We have already come so far, but we can do so much more. A parliament such as this is non-existent in Holland. We should have a BCS too. I'm actually jealous. Therefore, I am honored and able to learn how it is done in the biggest democracy in the world. It shows me that there's much to learn from one another. So, I have put myself forward to defend the freedom of expression, and we accomplished to give a voice to many unheard students. By expressing our beliefs, we created pull in even the highest boards of the university. And all of this gave us new ways of expressing ourselves. And now, I have a dream. It would be great to see the start to an exchange program. What would you want to learn in Holland? What do we want to learn in India? Come together, make this plan. And when that plan is there, we all will go to MIT, to the VU, to the university, and make this plan happen. We, as students, are the future of our country and of the world. When we want change, we need to make that happen. We are each other's teachers. We are the future. थैंक यू वेरी मच जेरॉन दी सिटर और आपका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन भारतीय छात्र संसद के मंच पर नेदरलैंड के स्टूडेंट जेरॉन दी सिटर का हम यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एम्स्टर्डम से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जेरॉन। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की मायर्स MIT से BBA के स्टूडेंट रुचा शाह को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और आज के विषय पर अपनी बात को रखें। रुचा शाह। Good afternoon to all the dignitaries and my fellow friends. I, Rutuja Shah, feel empowered to be on this stage and to present my views on the topic. Freedom of expression is a cornerstone of democratic rights and freedom. Even Voltaire had proclaimed, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it." Freedom of expression was identified as a birthright and was exercised right from 339 BC when Socrates had said, "I would prefer to be in jail rather than stop speaking." Inspirational write-ups by Voltaire and Rousseau during the French Revolution brought down the monarchy. Freedom of expression is essential for a democracy to work. India has included freedom of expression in its preamble itself. Freedom of expression is like two sides of the same sword. It has its own pros as well as cons. People have widely used this right to create an impact and to make a difference to the world at large. Tilak's newspaper, like Kesari,
help people be aware of then political situation, and inspired them to protest for their rights. Mark Antony's speech turned the opinion of entire Rome against the killers of Caesar. The free speech can be classified into three meanings. First, the facts. For example, I am wearing a cream dress. Second, opinion. They need not rely on any truths or facts. They differ from one person to another. And third, the insults. Nowadays, people can comment on any issue freely. With the ease of access of social media and internet has brought powerful tools like Twitter and Facebook to the reach of each and every individual. Television news channels are privately owned and each one twists the news to suit their interest and perspective. There is a very apt saying in Marathi, Ati tithe mati. It means excessive use of anything messes up everything. There are many such examples where people have misused this right and have lost the very essence of freedom of expression. One recent example which comes to my mind is where the ruling party MP of Arunachal Pradesh used lowly language to threaten the opposition party leader. Kiran Khan openly says that she does not feel that India is safe anymore. Irresponsible comments like these pollute the mind of the country at large and cause ripple effects. Political and communal leaders provoke the crowd in public meetings and publication, leading to loss of property and life. Freedom of expression is not simply to think and say what you wish, but to speak for yourself, to speak from your heart, and to be accountable for your words. Don't exercise freedom of expression until you have exercised freedom of thought. I am for freedom of expression, given that it is under strict control. Thank you. थैंक यू वेरी मच रुजा शाह, आपने अपनी बात को रखा. आपका भी यहाँ पे अभिनंदन, स्वागत करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से. इस युवा छात्र नेता का हौसला बढ़ाएंगे आपकी तालियों के साथ. थैंक यू वेरी मच. और अब अगला नाम जिसे हम पुकार रहे हैं, श्रेयस सेनद, जो कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, महाराष्ट्र से ही आते हैं. श्रेयस सेनद, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं आज के विषय पर अपनी बात को रखने के लिए. श्रेयस सेनद. अखंड महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, मंचस्थ समस्त विचारवंत और एक उत्तम दिशा में आकार लेता हुआ संपूर्ण युवागण. मित्रों, हम एक स्वतंत्र एवं जनतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं. इस स्वतंत्रता ने, जनतंत्र ने हमें कुछ मौलिक अधिकार बहाल किए हैं. अपने विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को भयमुक्त वातावरण में रखना, यह एक शासन मान्य व्यवस्था है. अग्री टू डिसअग्री, परमिटेड टू डिफर, बट वी बोथ आर राइट इन आर रिस्पेक्टिव पोजिशंस. ऐसे कुछ अर्थ है इस अभिव्यक्ति स्वातंत्र के. लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि स्वतंत्रता होती क्या है? क्या नदी की धारा स्वतंत्र रूप से नहीं बहती? लेकिन स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी की धारा भी दो तटों के बीच में बंदिस्त होती है, जो अपेक्षित है और उचित भी है. अगर तट लांघकर नदी की धारा बहने लगे तो हाहाकार मच सकता है. वैसा ही कुछ विचारधारा का भी है. वह अगर तट लांघकर विचारधारा बहने लगे तो समाज में हाहाकार मच सकता है. मित्रों, राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन यह कथा का केंद्र बिंदु है. अविचार से, अविवेक से कभी कोई लक्ष्मण रेखा लांघता है तो घोर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है. और मित्रों, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन साध्वी सीता मैया ने किया था, कपटी रावण ने नहीं. कपटी रावण ने तो केवल मां सीता को विवश किया, बाध्य किया. ऐसा ही कुछ चित्र हमें इस राम सीता के देश में भी देखने मिलता है. कुछ लोग लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो करते हैं, लेकिन वे उसके परिणामों से अनिविज्ञ होते हैं. किसी रावण के उकसाने पर वह ऐसा कर जाते हैं. नहीं तो जिसका नाम ही कन्हैया हो, जिसका कभी कश्मीर में निवास तक ना हुआ हो, राजनीतिक कुटिलताओं से जो अपरिपक्व हो, ऐसा देशघाती युवा राष्ट्रद्रोही देशघात के अफजल गुरु के गुणगान का कार्यक्रम आयोजित करता है और इसमें चेहरे ढके रावण राष्ट्र विभाजन का नारा लगाते हैं. मित्रों, यह लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं तो क्या है? छात्राओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन उसका उपयोग सृजनात्मक हो, सकारात्मक हो, उसकी निंदा में भी राष्ट्रहित जनहित छुपा हो.
किसी की कठपुतली बनकर राष्ट्रद्रोही कृत्य करने के लिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का उपयोग होगा तो यह कदापि मान्य नहीं। मित्रों, मांसाहार समर्थनीय तो नहीं, यद्यपि हम उसके विरोधी भी तो नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का उपयोग अनादिकाल से माता स्वरूप माने गए गौ माता का भक्षण करने हेतु होगा तो वह कदापि मान्य नहीं। मित्रों, आज हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं। अच्छी या बुरी घटना 2 मिनट में प्रचारित हो जाती है। ऐसे में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अंतर्गत उठाया गया एक गलत कदम मिनटों में प्रचारित होता है। तो यह हम युवाओं की जिम्मेदारी नहीं कि अभिव्यक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण हो, क्योंकि मित्र राष्ट्र है तो हम है और हम है तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। ध्यान रहे, अति सर्वत्र वर्जते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस, और आपका भी यहाँ अभिनंदन। आपके जोश को, आपके उत्साह को सलाम करते हुए भारतीय छात्र संसद के इस मंच से और आपकी तालियों के साथ इस युवा छात्र नेता का हौसला बढ़ाएंगे हम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने जो स्पीकर हैं जिनको विशेष तौर पर यहाँ आमंत्रित किया है, उनका क्या हम परिचय दें? आप नाम से वाकिफ हैं, उनका नाम ही काफ़ी है, आप सब जानते हैं। और हम कह सकते हैं कि नेशन उनके बारे में जानता है और वो नेशन के बारे में जानते हैं। नेशन के बारे में अर्नब गोस्वामी से बढ़िया कोई जान नहीं सकता। हमने उन्हें खूब देखा है टाइम्स नाउ पे, लेकिन अब वो टाइम्स नाउ को अलविदा कह चुके हैं और एक नए टीवी चैनल के साथ वो जल्दी ही अवतरित होंगे आप सबके बीच में, जिसका नाम है रिपब्लिक। एक नया चैनल जिसको लेकर आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी। उनके बारे में आइए पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लें और फिर उन्हें आमंत्रित करें आप सबके सामने। Mr. Arnab Goswami is an internationally popular Indian journalist. He is the first person to appear in everyone's visualization today when the very thought of media comes into one's mind. Dynamism, presence of mind, intellectual bend, situational management, and spontaneous articulation are Mr. Goswami's assets. He was the editor-in-chief and a news anchor of the Indian news channel Times Now and ET. Mr. Goswami is an honours graduate in sociology from the Hindu College, New Delhi, and a postgraduate in social anthropology in the Oxford University. He began his career in journalism with the Telegraph in Calcutta. He later shifted his career to broadcasting daily news at NDTV. He was involved in the transitioning of NDTV 24/7 into the 24-hour slot in 1998. The News Hour show on NDTV was the longest-running news analysis show. Being a senior editor, he was responsible for the entire editorial content of the channel. He was also the host of News Night, another news analysis program on NDTV. Mr. Goswami also worked on a program called News Tonight on DD Metro. He was a visiting fellow at the International Studies Department at Cambridge University in 2000. Mr. Goswami is a recipient of several prestigious awards. He received the Asian Television Award, Society Young Achievers Award for Excellence in the Field of Media, Ramnath Goenka Award for Excellence in TV Journalism by the Indian Express Group, Assam Sahitya Sabha Award, Best News Anchor Asia Award, and the list goes on. He has authored a book on combating terrorism. He states that he is a firm believer in news that is popular but not populist. Before a bunch of 5,000 students in the Indian Student Parliament near Pune at MIT, if you remember. It was fantastic, 5 years back. We are honored to welcome Mr. Arnab Goswami. तो जोरदार तालियों के बीच आइए स्वागत करें और आमंत्रित करें जाने माने टीवी पत्रकार और रिपब्लिक के साथ अब एक नए अवतार में आने वाले अर्नब गोस्वामी। मैं जनरली ये फिल्म के माध्यम से तो इंट्रोडक्शन हो गया था, बट पता नहीं मुझे आज 5-6 साल बाद अर्नब जी का यहाँ पे आना हुआ। जो छोटी सी क्लिप आपने देखी 2011-12 में वो यहाँ पे आए थे भारतीय छात्र संसद में, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी एमएलए थे और वो दोनों एक मंच पे थे। और आज पता नहीं इतने सालों बाद और परसों आईआईटी में उनका एक भाषण हुआ तो वहाँ पे उन्होंने भारतीय छात्र संसद के बारे में बात की और सभी युवकों से आपकी तरफ से डिमांड आई कि अर्नब जी को बुलाया जाए। काफ़ी लोगों ने बोला। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
पत्रकारिता में एक बहुत अच्छे बेंचमार्क्स काफ़ी लोगों ने पिछले 100 सालों में इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी लोगों ने एक बेंचमार्क्स क्रिएट किए। प्रणव रॉय साहब ने, आप जानते हैं कि मतलब जिनको एक फादर ऑफ द, जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने एक काम खड़ा किया, और बाकी भी काफ़ी लोगों के नाम लिए जा सकते, किसी एक दो लोगों के नाम लेना ठीक नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि अर्णब जी ने जिस तरीके से पिछले 5-10 सालों में पूरे भारत में जो काम करके दिखाया, जो करेज, और मुझे नहीं लगता कि इतना करेजियस जर्नलिस्ट पूरे भारत में कोई होगा आज के डेट में, कि जिस ताकत से मैं पत्रकारिता अपनी अपनी तरीके से हर कोई कर रहा है, बहुत बढ़िया से कर रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना। बट मुझे लगता है कि टीवी के ऊपर तो मैं हमेशा जब भी कभी बात करता हूँ उनसे, तो मैं लगता हूँ अर्णब जी आपको बचाइए, आपको प्रोटेक्ट करिए। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, मुझे डर लगता है आप जैसे बात करते हैं ना कभी कभी, यू आर एसेट ऑफ दिस नेशन। तो बोले राहुल मुझे कोई डरने की बात नहीं, ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। अर्णब जी, मैं आई हैंड ओवर टू यू एंड आई एम सो थैंकफुल। योर ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, country sees that, and I think we all love you, and Republic will be the big hit in the vastness of the nation. We are very confident. All my wishes to you. Thank you. Thank you. Thank you. Please participate wholeheartedly, all my dear student leaders. Thank you. Thank you. Thank you, Rahul. And thank you, students and respected members on the dais. I'm not taking all names. Thank you very much. I think in 2012, English में बोलूं? हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, बीच बीच में कोशिश करूंगा. As long as I can communicate to you, I'm fine. So I will have a lot of questions for this audience today. Are you ready to answer some of my questions? Should we talk to each other? Because in TV only I shout and everyone listens. In fact, I said that for the last 2 months, I think 1 month and 3 weeks I have not been on TV. And Rahul, this is a big risk. It's like giving a hungry man a full meal. You put a mic in front of me and you say, "Aap jitna der bolna chahte hain, bol lijiye." I'm very happy because the politicians are getting 3 minutes and I'm getting non-stop time. It's excellent. Anyway, even on my program, the politicians get 3 minutes and I get non-stop time. Very good afternoon to you. I came here in 2012, Rahul, I think you remember that. In 2010, I took on the corrupt political system in this country head on. And I challenged them by breaking a series of scams on our channel. I hope you remember some of them. Do you remember the Commonwealth Games scam? Do you or do you not? You remember the 2G scam, Devasis Row scam, Aircel Maxis scam. It was a season of scams between 2010 and 2011. And in 2011, a marketing genius called Arvind Kejriwal came and said that he has broken all the scams. And I told Arvind, and I will tell him again if required, that Arvind Kejriwal, you did the marketing, we broke the scams. Where was Arvind Kejriwal when we were breaking the Commonwealth Games scam? He built a political party on the basis of our work. But we broke the scams. We took the risk. We challenged the political establishment. We looked at the politicians in the eye and we asked them questions. We made them feel uncomfortable. We made them feel insecure. And we made them feel afraid. And I think it's necessary that the corrupt politicians in this country should be afraid of the media and the people. Am I right or wrong? And that is when, in 2012, I came to the Bharatiya Chhatra Sansad, the Indian Students' Parliament. And in 2011 and 2012, a lot of these politicians, these corrupt politicians, wanted to put me down. And a lot of them did everything possible to silence us. They threatened us. Some of them indirectly put legal cases against us. We were told that you will lose your jobs, but we were not afraid. We were told that you'll have to pay hundreds of crores of rupees because we'll file big cases against you, but we were not afraid.
We were told that you will be on the streets of this country if you take on the central government in India, but we were not afraid. We sat face to face and eye to eye with the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, when he decided to hold a press conference, which itself was breaking news because Manmohan Singh usually didn't speak. We asked him the questions. We were not afraid. And in 2012, in those circumstances, I came to the Indian Students' Parliament. And I addressed this audience like I'm addressing you today. And I went back with so much love, so much affection, and so much support that from this very dais, Rahul, of your Bharatiya Chhatra Sansad, I said in 2012 that the time has come for the birth of independent media in this country. You remember that in 2012. And how time flies, Rahul. If you see that speech, you will remember that from this Indian Students' Parliament, I said that in the next 4 or 5 years, independent media in this country will be born. And I said that in 4 or 5 years, from the soil of India, we will not just have an independent media, but we will have an international news channel if required. We will have a global presence. We will compete with the BBCs and the CNNs. And 5 years from that speech, I'm before you today, and I'm here to announce the launch of my own independent news venture, our venture, your and my venture. And I want to know whether you know the name of this venture. Do you know the name? Do you know the name of what we are launching? Can you say it? Can I feel your support here today? I will say it and then you will say it behind me. Because I have said that one man can't change everything. Neither can a group of journalists change everything. But we, the people, can change everything. And people have told me that they will win and you will lose. And I've asked them why. They said because they have lots of money and you don't have money. They have lots of political influence and you don't have political influence. They have lots of power and money and that is why they will win. And I have said to them that Republic will win and they will lose. And I want today to feel your support. I will ask you in one word, please reply. Please tell me, what is the name of the independent news organization that we are about to build? Can you say it in one word for me? Can I hear your power, please? What is it, please? Republic. Republic. And Republic is for you. And Republic is not a channel. Republic is a people's movement. And I am here today from the Indian Students' Parliament challenging each and every one of those people who say they will win and I will lose. We will say we will win and they will lose because journalism will win and money will lose. Idealism will win and money will lose. People's power will win and money will lose because we have had enough in this country. Enough injustice. We spoke about the freedom of expression and its limits. Who are we to speak about the limits of freedom of expression? In a country where the freedom of expression has only been abused and abused for years by the wrong people. Today is the time to take that power back in our hands. And 5 years back, after the Indian Students' Parliament, I come to you today because me and a small group of journalists have decided the following things. The first is this. The time in Indian media has come to be answerable to nobody but you, which is the people in this republic. The time in Indian media has come when those with big and unlimited sacks of money, black or white, often black, they should not control pressure and try their best to dictate what you and I should do or not do. The time has come in Indian journalism
to say that your voice is something that even the largest bags of money cannot buy. And the time has come in Indian media when, instead of being awestruck by the BBCs and the CNNs, the West should no longer tell us how to think, how to speak, how to function, how to take our country forward or backward. And certainly the West should not try to teach us anymore in the India of 2017 how to do our journalism. The time has come. It is time for Indian journalism to become your voice, the voice of the largest democracy in the planet, and to use it to put a mirror back on the West. For the last 100 years, this Western media, these so-called groups of the BBCs and CNNs, have tried to put a mirror on our great civilization. They have tried to say that they have a right to tell us what we are as a civilization and as a people. And in Moscow, in December 2012, I simply made one statement on a forum where there were people from Al Jazeera, BBC, CNN, Chinese television, and others. And I said, the time for the hegemony of Western media must end. We must have a balance of power in the world. So we are here before you as Republic, not just to be an independent voice in Indian media, but eventually using the power of digital, technology, and youth, and our deep understanding of a language called English, which, believe me, we speak better than those in London. We should be able to use this powerful combination to provide a counterbalance to the narrative in the world. And in 2017, going forward, believe me, we will start a serious challenge to Western media from the soil of this great country. From Pune and Mumbai and Bangalore, we will challenge the dominance of the Western media. And I announce it here today from the Indian Students' Parliament. And that is why we have decided to launch Republic. Over the last 2 months, we've been working 18 hours a day from a tiny workspace in Mumbai. I've been traveling a lot. I traveled to Delhi. I spoke at Mumbai at the IIT Mood Indigo Festival with Mr. Fadnavis. I was recently in Bengaluru at the Under 25 Summit, and today I am among you, the student parliamentarians in Pune. Believe me, wherever I go, through each interaction, I feel an electrifying amount of energy from the youth, which makes me believe more than ever before in this philosophy and this movement called Republic. And let me now tell you why. Republic is not just a news channel. Republic is not just a media technology company. It is not going to be just India's first global footprint in global journalism. Republic is a movement to put the power back in your voice in a country that is the world's most vibrant democracy. And in that pursuit, over the last 2 months that I have been off air, I have often asked myself, what kind of movement do we want it to be? What kind of country do we want India to be? And today I want to ask you some questions because it is for your India that Republic will fight. And here are my questions to you today. Please respond to me as loudly as you can. Do you want a country in which a 16-year-old Kashmiri actor called Zaira Wasim, who acted wonderfully in Dangal, is made to publicly apologize for meeting the democratically elected chief minister of the state? Sitting in India, can we afford to take a quote-unquote neutral position in which this teenager faces abuse and public humiliation
for being Indian? Are we going to allow this country to be dominated by these elements? I want to hear from you today. Do you know about what happened to Zaira Wasim? Do you know what happened to Zaira Wasim? She was made to publicly apologize for meeting the Chief Minister of Jammu and Kashmir. We had someone from Jammu and Kashmir who spoke earlier today. It's a disgrace that we allowed it to happen. We must silence those people who tried to silence her. We must make her feel stronger. We cannot stand by and say it is somebody else's problem. Because if you are quiet today, there will be thousands and thousands of Zaira Wasims there in the future. And in this Indian Students' Parliament, you must take a vow not to let that kind of incident happen. And I want to ask the media of this country. I want to ask the media of this country, where has the fear gone? लोग डरते क्यों नहीं हैं आजकल? मीडिया का डर कहां चला गया है? एक 16 साल की लड़की, एक बच्ची, एक वंडरफुल एक्टर के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, मीडिया कहां थी? एक दिन न्यूज टेलीकास्ट करके अगले दिन कुछ और करने से नहीं होगा. I also want to ask you, do you want a country in which just 45 minutes from where we are gathered today, from here, a 19-year-old girl was threatened, assaulted, and raped in broad daylight in Pimpri. And the national media channels were quiet about it. There was no public movement. There was no campaign. There was no national initiative of it. The national media is more interested in this game going on between Akhilesh and Mulayam. What kind of media is this? What kind of media is this? Who will be afraid of such a media in which you distract people's attention with political games, but the real issues of the people are avoided? Do you want a country in which the media goes silent when on the 27th of December, a terrorist called Masarat Alam is released from jail after 6 years, despite orchestrating the most bloody killings in the Kashmir Valley? Where was the media of this country when Masarat Alam was released? I want to know, where were they? What is wrong with the media of this country of late? Why have they gone quiet? Whose interests are they representing? Are they representing your interest? Are they? I want to hear this louder. A media that does not speak for what happens in Pune. A media that does not speak about what happens with Zaira Wasim. A media that does not speak about what happened with Masarat Alam. And in this country, when 2611 mastermind Hafiz Saeed, on the 12th of January 2017, openly stood in Pakistan and took credit for the brutal killing of our armed forces personnel in Akhnur, the national media, instead of talking about it, went silent about it. Was the national media on a New Year's holiday on the 12th of January? Does it worry you or not about whether your issues are being represented by the media of this country? And what did we see in the media for 2 weeks non-stop? This jugal bandi between Akhilesh, Mulayam, and Shivpal. And by the way, since we are in Pune, I have a friend in Pune and his name is called Suresh Kalmadi. Suresh Kalmadi of Pune. Do we want a country which allows Suresh Kalmadi to stroll about and be bestowed with the honor of being appointed life president of the Indian Olympic Association after being in charge of a scam that choked thousands of crores of rupees of taxpayer money? Where was the national media when Suresh Kalmadi was being reappointed as life president of the Indian Olympic Association? Where was the media then, I'm asking you here today? It's a disgrace. It's a disgrace. And these people
That media which is quiet on Zaira Wasim, on the rape in Pune, on Masarat Alam, on Hafiz Saeed and Suresh Kalmadi. That media, which I call Lutyens media, wants to teach us journalism. Should I learn journalism from them? It is my belief that we don't want such a country. It is my belief that each one of you feels as angry about these incidents as I do. It is my belief that you and I and all the 8 or 9 or 10,000 people who are in this audience, that we can take this anger, we can channelize this anger, and we can channelize the restlessness of not being bowed and weighed down by the status quo, that we can come together and fight for a new India. I believe in a new India. I believe in my heart that this country can change. And I know this country will change, because I know that you will not take it lying down. And I know that somewhere deep down, you believe in the journalism that we are doing. I don't need to put my record before you, but you know that we have fought the Zakir Naiks to say that it is wrong, Mr. Zakir Naik. It is wrong. It is wrong, Mr. Zakir Naik, to use the garb of religion to preach hate. We've said this today. We have fought the Suresh Kalbadis to say that it is wrong, no matter how powerful you are, to tolerate corruption as the norm. And someone mentioned what happened in JNU. I would also say that we have said that it is wrong. It is fundamentally wrong to talk about Bharat ki barbadi. We said today it is wrong to talk about the breaking up of this beautiful, large, and our country called India. It is wrong to make it a fashion to threaten the sovereignty of our nation. It is wrong to say that my freedom of expression allows me to openly speak about the secession and breakup of this country. And if it is wrong, then I will speak up against it, and I hope that I will have your support when we do so on the Republic. We have fought all these people. We did a campaign against VVIP racism. We said it is wrong to use your Lal Batti culture to hold up an ambulance, because inside an ambulance, tomorrow, someone from your family may be held up when a VVIP does not allow the car to proceed. We have fought everything. We have left nothing. We fought everything and everyone. We have fought religion. Those who laugh at our promise to challenge global media must know today that in no country in the world is there a media that challenges religion. We in India have the guts to challenge religion. I want to know which American or British journalist has the courage and the guts to stand up against the most established so-called religious practices of this country. We have fought about why women should not be allowed to enter Shani Shignapur. We have fought about why women should not be allowed to enter the Haji Ali Shrine. We have fought about why women should not be allowed to enter the Sabrimala Shrine. And we have pitted our logic against their beliefs. And we have stood up on the field and in TV studios and said that if you use religion to justify tradition, then remember at one point of time in this country, some people had said that the practice of sati is also a religious practice. But one man had stood up against it. We have put ourselves forward to fight as your front because we believe that a combined 1.3 billion voices coming together to demand change, and we believe once again, as we grow louder, even if our vocal cords tear,
more fearless if the threats are mounting like never before, and we will be completely independent in the way that we are not answerable to any party office or corporate giant. Some people ask me today, what is Republic for? Republic is for those who stand with the right and fearlessly shout loud against the wrong. Republic is simply for those who have an undying belief in their aspirations and idealism to build a better India. Republic is simply for those who speak up when someone pays their way to get through to a college. Republic is for those who take pride in standing up for the national anthem in a theater. Not for people who say that when the national anthem plays and I sit down, it is an exercise of my freedom of expression. Republic is for those who simply refuse to be grey about standing up with the armed forces. We stand up for the armed forces. Republic is for those who believe that they have the power of their voice to change the country, no matter how uphill the task is or who they are up against. Republic is simply to have the fearlessness because we will stand together. And we must stand together. Because all that we have is our common belief. Somewhere I know there are so many of you sitting here today, and I cannot meet your eyes, but I hope somewhere you feel that I'm speaking on your behalf. Because Rahul asked me today that he fears for my security. Rahul, this is my security blanket. This is absolutely everything that I have. And some will ask me why you're doing this. Because I don't think this country can be represented by the Kalmadis. This country cannot be represented by those people who refuse to take sides between India and Pakistan. This country will not be represented for those who fight for women's rights selectively, depending on whether the lady was attacked in New Delhi or Pune. And this country cannot be represented by people who refuse to stand up for the national anthem and talk about Bharat ki barbadi. I challenge them to put their logic against me. Some people say, when we picked up what happened in JNU, some people said that you're speaking up against the students. Are you not students? What is it to say that a group of people who have made the destruction of India into a political slogan should represent all of you? Do these people represent all of you? I'm asking you today. Do they? Do they represent you? And if they don't, then why are you quiet? Don't be quiet. Support us in Republic, because this country is about to change. When I entered college, I entered with good marks and got into a good college. And in my first year, I was reminded through the Mandal Commission agitation that the only thing that matters for the politicians is your caste. Believe me, as a 17-year-old, when you stand after getting entry into a college and when you're taking your bag and you're walking into your college door and you feel optimism in your heart, as a 17-year-old, when you want to do something, and when you know that you worked hard, and I studied in Jabalpur in Kendriya Vidyalaya there. When I entered my big college in Delhi, my dreams were open in front of me. But you know what these politicians did? They introduced the Mandal Commission in my first year of college. And in my first year of college, I was told that it doesn't matter what you are a Goswami. In my second year of college, we used to go and see films in a movie hall called Chanakya in Delhi. I don't know how many of you are from Delhi, but in my time, it was the PVR of its time. We were driving back from watching a second show, and we were wearing bandanas and driving on bikes. And we were stopped near Chandni Chowk. And the police personnel told us, where are you going? आप कहाँ से जा रहे हो? हमने कहा मूवी देख के आ रहे वापस. तो बोले आपको आज रात बाइक चला के अकेले में नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते से नहीं.
और हमने पूछा क्यों नहीं? बोला क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा गया है. So in my second year of college, I was reminded by these politicians that they will divide us once again on the basis of religion. What happens to a teenager who at the age of 17 is reminded of his caste and at the age of 19 is reminded of his religion? Does he become cynical or does he become angry? I am angry. And I'm angrier today, and I was telling Rahul about it. I'm angrier that 25 years have passed. But there are still attempts being made by the same politicians to divide you on the basis of your caste, on the basis of your religion, on the basis of your state and what you believe in. I want to request you, don't let them win. Fight them. Fight them hard. Because your future is at stake. My generation lost out a lot because we allowed the politicians to sit on top of us and divide us apart. Promise me today, as I launch Republic, that you will allow nothing to divide you. All you are is the youth. All you are young people. All that you are is the future of this country. All that you are students and student parliamentarians. You are nothing else. You are just Indian youth. Promise me you will never forget that. Promise me that in a louder voice here today. This country is changing, and this country will change. I couldn't imagine how much this country would change in 10 years. I couldn't imagine that 10 years back, we would uproot the center of Indian journalism from Delhi and take it to Mumbai. आज भारतीय जर्नलिज्म की केंद्र बिंदु नई दिल्ली नहीं है. आज भारतीय जर्नलिज्म की केंद्र बिंदु मुंबई होगी, पुणे होगी, बेंगलुरु होगी, गुवाहाटी होगी, कन्याकुमारी होगी, मगर नई दिल्ली नहीं होगी. क्योंकि नई दिल्ली में जितनी जर्नलिज्म हो रही है वो सारी करप्टेड और कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिज्म हो रही है वहां पे. I could not imagine that change would happen in 10 years. I could not imagine that with what we can do in technology, that nothing in the world can today stop me from reaching you. This is the age of the internet. We are launching Republic as a channel, but we will also be on every digital platform. Nobody today, with the technology that I have, can stop me from reaching you. And I could not imagine 10 years ago that I would be standing here before you with the fearlessness and belief in an independent media in India. But here I am before you today. And I have a team which is working very hard. My team will bring you Republic because we know in our hearts that you deserve better. You deserve better media than what you've got so far. I have tried in the last 7 to 8 years to do what I can. But let me ask you some questions. Will you respond to me, please? Will you back Republic when we fight for each one of you? Will you back Republic when we run behind with a mic behind those politicians who demand accountability? Will you back us then? Because we are just one group of people. Imagine us, a group of people working in Mumbai, but we believe that we can change this country. But I want to hear this louder from you here today. Will you back Republic when we fight those who disrespect the nation or the national anthem? Will you fight with us then? Will you back Republic when we fight for your fundamental rights which you've been denied for all these years, and we fight the politicians who try to divide you on caste and religion? Will you back us then? And will you back Republic when we take to the streets if required to protest for you? Will you back Republic when we fight for democracy to put the citizen first? Will you back Republic when we take the media out of Delhi to Raigarh, Latur, Kolhapur, Kota, Bhopal, Asansol, Gulbarga, Kanpur, Jabalpur, anywhere but New Delhi? Will you back us then as we decentralize the media in this country? Will you back us then?
And will you back Republic when we are fighting for you despite threats and abuse? Will you back us then? Will you back us when we camp day and night from this moment on to put the spotlight back on you? Help us to build a better India. Help us to build an India that you carve out, an India that you want, an India of the future. Help me today to build the India that I wanted this country to be when I entered Hindu College in 1990. 26 years have passed. I will never forget that day. I entered Delhi University with my degree and my books. And I stood there at Kranti Chowk between Ramjas College and Hindu College. And I saw students being pitted against each other on the basis of caste. I was also 17 years old then. How many of you are 17, 18 years old? You want this country to change. Do you believe that 26 years later you can take the future into your hands? Help us build an India in which you choose between right and wrong and fight for it together. Because Republic is not a channel. Republic is our movement. Thank you very much for hearing me here today. Thank you, Rahul. Thank you, students. Thank you for your support. And I hope to come back soon to the Indian Students' Parliament. And I hope that not too long from now. We want a big standing ovation to Arnab ji. I think, thank you so much, Arnab ji. What a fantastic delivery. Thank you. And it is from core of heart. And we all believe this is also a movement, the Bharatiya Chhatra Sansad, and we have to back this very movement of Republic. Thank you so much. Show me your hands. Show me your hands in support today. I love you all. You are the future of this country. Please support Republic and we will not lose. Thank you very much, students. Thank you, Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rahul. बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब गोस्वामी जी, आपका अपने अपनी बात कही, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन आंसर्स अभी कर लें? अभी कर लें? ओके। तो क्वेश्चन आंसर्स मेरे ख्याल से आपके तैयार हैं, पूछिए अपने सवाल। Thank you, Neelam ji. I would like to repeat myself for Arnab ji and as well as for my student friends. Chota sawal, chota jawab, so that I can take as many questions as possible. Okay, so the first question comes from podium number 1 from Mr. Shreyas. Mr. Shreyas from podium number 1. Arnab ji, you will see the question, the one who's asking question on the screen on your left-hand side. Down, yeah. Please go ahead, Shreyas. Shreyas, please go ahead. Chota sawal, chota jawab, quickly. Sir, the nation wants to know why you never gave a fair chance to the views of the people you didn't want to hear. Will that change in your new venture, Republic? Where are you, Shreyas? Right-hand side. There. Oh, Shreyas, hi. Hi, sir. Yeah, I'll try and give people more chance to speak in Republic. I assure you that. But the problem is, Shreyas, can I ask you a counter question? Yes, sir. Bad habit, Shreyas. Shreyas, I have this bad habit. I don't do this at home. But Shreyas, have you ever seen a single politician finish their answer on their own? No, sir. And so I have to interrupt them. But I'll give them a greater chance to speak next time, Shreyas. But I hope that you will also watch and support Republic. Yes, sir. We share same school, St. Vincent's High School. Thank you. Thank you, thank you. And I hope that was Sarthak and not Shreyas. You are Sarthak, right? Yes, sir. Yeah. So I would- Sarthak, I'm sorry for getting your name wrong, Sarthak. Okay. Thank you. Now I would like to call Shreyas Bafna on the same podium. Shreyas Bafna, do we have him there? Podium number 1, Shreyas Bafna. I guess. Okay, we'll move on with podium number 3,
Maitreyi on podium number 3. Good evening, sir. My question is, would you support an independent body to observe media like the Election Commission of India? And who could be a part of it? Thank you for your question. We have a body called the News Broadcasters Association, and we have another body called the Broadcast Editors Association, which does self-regulation of the media. I would not support a body that gets any powers from the government, by which I mean a statutory body, because it will be very dangerous in India if the government, regardless of whether it's Congress or BJP or any government, gets control over the media. I think the right of the media to control itself is its own right. It is given to us by the constitution of this country. It is not a gift given to us by politicians. And can you imagine if they were to monitor us in all our coverage of the scams? Do you think the previous government would have allowed us to do what we did? So we must be very careful against allowing the government any entry into the regulation of media. We must regulate ourselves. Much like you in the Students' Parliament are eventually regulating yourself because you think you are mature enough and responsible enough to carry out your duties, we also believe that as journalists, we are responsible and mature enough to do what we need to do. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. We'll quickly go to podium number 2. Manav Pimpalkar would like to ask the question from podium number 2. Manav, do we have? Yes. Yes, please go ahead quickly. Sir, in recent news, you left Times Now, or you resigned Times Now, and Barkha Dutt too resigned from her channel. So do you think we can expect a collaboration sometime soon? Where are you, my friend? Here. Left-hand side behind. Sir, I can assure you, from the bottom of my heart, there's no... Sir, India wants to know. What does the nation want to know? So I do journalism. I don't know what she does. So I'll do my journalism, she can do what she does. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, do we have Shreyas Bafna from podium number 1? Do we have him? Okay. Arnabji, there is a question which we have received from social media online. Let me ask you the question on behalf of Abhishek Vyas, who's asking this question from Gujarat. Why did you leave the Times Now job? Was it difficult for you to work with it? So this is the question from Abhishek Vyas from Gujarat. I felt I could be even more independent on my own. Simple as that. And I asked myself this question, that how would it be if a group of journalists come together, journalist producers come together and become completely independent? And I said, it's a beautiful idea. And then I'm not making this up, but I remember the roar of support that I got when I came here in 2012. And I felt that the people of this country were with us. And I feel that the youth of this country is with me. So I decided to go out on my own. And I am, as they say in English, floating on hope. You are my hope. I'm floating on your support. And I know somewhere that you will not let me sink. Will you support me? I'm a great believer in the future. So I just decided one day, and I decided to have a fresh start, and here I am. Thank you. For the answer. I think I have received one more very apt question from Maithili, who's from Delhi. She's asking this question from Twitter, and she asks, why media houses, of course, media houses are like a company. Why media houses cannot operate as a charitable trust? Why a company? Why a business company? They can. If people support and people fund media, they can. But we need advertisements to continue. But all we take is advertisements. And I'd also like to tell you one thing, that we are not in the business of making political parties happy
or taking advertisements from political parties. We do our journalism, people advertise. For me, it's not a business. If there was a business, I would do many other businesses. This is not a business. This is my life's work. This is social change. This is a genuine attempt at changing this country. And it comes from my core because people tell us you take risks, you do this and that. There are many other ways to earn money. I am not in this business of media to earn money. I would say those who want to earn money can do something else. I do it because I believe in it. And I think it's a good thing to do. Thank you, Arnabji. And the last question that was designated for Shreyas Bafna, who was supposed to ask this question from podium number 1, but I don't know where is he. So I'll just ask his question. In 2012, the interview of Narendra Modi ji, there were many tough questions from your side. But in your 2016's interview with him, you asked really simple questions. Why is that so? Well, I think if you were to ask that question to Subramaniam Swamy, he would not agree with you. I have asked every question to the sitting Prime Minister of India. And I have not left any question unasked. After my interview with the Prime Minister of India, there were 20 or 30 other journalists who got a chance to ask questions to the Prime Minister from different newspapers. They could not get any headline from their interactions. I asked the Prime Minister about Pakistan. I don't think that's an easy or simple question. I asked the Prime Minister about the financial situation of the country. I asked the Prime Minister about the comments of Subramaniam Swamy. I asked the Prime Minister questions from economy to foreign policy, to the twists and turns of Pakistan policy and China. And I referred to the Prime Minister as Mr. Prime Minister. If anyone believes that simply sitting and disrespecting a sitting Prime Minister of India is fashionable, then I don't agree with that. I believe I did a professional job of my interview with the Prime Minister of India. I also did a professional job of all my other interviews as well. I am not responsible for how the other person answers the question. If the Prime Minister answers the questions in a certain way, but other people answer questions in a different way, those people are responsible. I have done my job professionally as a journalist on each and every occasion. I can assure you that. Thank you. Thank you very much. A big round of applause for Arnab Goswami ji. Thank you very much, sir, for answering all our questions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब गोस्वामी जी। और आपने आज अर्नब गोस्वामी को सुना, कल आप सुन पाएंगे बाबा रामदेव हमारे साथ होंगे, शिव खेड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ होंगे, मानिक सरकार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हमारे बीच होंगे, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ होंगे, और इसके साथ साथ मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी हमारे साथ होंगे और रिकी केज हमारे साथ होंगे। तो तमाम हमारे वक्ताओं को आप कल सुन पाएंगे हमारे कल के सेशंस में। फिलहाल अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आवाज़ देते हैं एक और छात्र नेता को जो कि इस समय मंच पर मौजूद हैं, चंपकलाल जयंतीलाल जोशी, जो कि गुजरात से आते हैं, हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट पॉलिसी एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट हैं, गुजरात से चंपकलाल जयंतीलाल जोशी। नमस्कार, मंचस्थ महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित सभी युवा छात्र नेता, आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो शायद आपको मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको मेरी राय या मेरे विचार आपको सुनने मिलेंगे। आज मुझे बड़े आश्चर्य के साथ यह प्रश्न हो रहा है दोस्तों कि क्या ये वही महान भारत देश है जहाँ पर कभी कबीर साधु संतों के बीच में बैठकर भी बिना हिचकिचाहट के ये कह सकते थे कि पाथर पूंजे हरि मिले तो मैं पूंजू पहाड़, लेकिन फिर भी उन्हें कोई धर्म विरोधी कहकर पत्थर मारने नहीं जाता था। क्या ये वही महान भारत देश है जहां पर कभी 10वीं शताब्दी में बने खजुराहो के मंदिर में शिल्पकारों द्वारा बनाए गए नग्न देवी देवताओं के शिल्पों को प्रजा ने बिना कोई प्रतिबंध लगाए स्वीकार कर लिया था? आज मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की सीमाएं तय करने की बात आज उस देश में की जा रही है जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कभी आधी रात के बाद भी याकूब अब्दुल रजाक मेमन जैसे आतंकवादी को भी अपनी बात अभिव्यक्त करने का मौका दिया है। और दोस्तों, आज इसलिए जो कोई भी इस अभिव्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वो शायद ये भूल गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें कोई खैरात में मिली सौगात नहीं है जो आप कभी 10% या कभी 20% दे पाएंगे। और इसीलिए मुझे अहमद फैज की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जो कि कहते थे कि बोल की लब आजाद है तेरे,
बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल कि सच जिंदा है अब तक। दोस्तों जरा सोचिए, अगर गैलीलियो ने कभी सर्वमान्य बातों का समर्थन करते हुए यदि अभिव्यक्त नहीं किया होता कि पृथ्वी गोल है, तो आज हमारा विज्ञान कहां पर होता? यदि बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर भी अगर चार्ल्स डार्विन को यह कहने की स्वतंत्रता न मिली होती कि हम बंदरों की प्रजाति से आए हुए हैं, तो सोचिए दोस्तों कि आज हमारी समझ कहां तक होती। और रही बात किन्हीं मुट्ठी भर लोगों के द्वारा मेरे देश के खिलाफ लगे नारों की, तो दोस्तों मेरा मानना है कि मेरा देश इतना छोटा या सस्ता नहीं है कि वो किन्हीं मुट्ठी भर लोगों की अनर्गल बातों से उसका सम्मान कम हो जाएगा। और ना ही मेरे देश के महात्मा गांधी जी का कद इतना छोटा है कि वो किसी नथुराम गोडसे की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा उनका सम्मान या कद कम हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि समाज में हर प्रकार की विचारधारा को अपनी बात अभिव्यक्त करने का मौका मिलना ही चाहिए। दोस्तों मैं आप ही से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या मन की बात करने का अधिकार सिर्फ सरकार को होना चाहिए? क्या एक लोकशाही को तानाशाही में परिवर्तित होने से रोकने के लिए क्या एक सक्षम विपक्ष की जरूरत नहीं है इस देश को? दोस्तों सही बात तो यह है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत वाद विवाद होना व विचार विमर्श होना तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह प्रामाणिक असहमतियां व निर्बाधित विचारों के प्रकटीकरण की आजादी ही तो है जो एक सफलतम देश व समाज की रचना करती है। और इसलिए दोस्तों अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सफलता की स्वतंत्रता की कथा पुरानी दोस्तों, किंतु पूर्ण आजादी का युद्ध अभी बाकी है। स्वतंत्रता की कथा पुरानी किंतु पूर्ण आजादी का युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी को यहाँ पर कुछ लोगों ने मर्यादित करने की ठानी है। कोटि कोटि भारतवासी क्या दर्शक बने रहेंगे? सत्ता के बल पर मुट्ठी भर कब तक तने रहेंगे? धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया चंपकलाल जोशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने भी अपनी मन की बात यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से साझा की। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सम्मानित करते हैं आपको यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से। आपकी तालियों के साथ हम इस होनहार युवा छात्र नेता का मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय छात्र संसद में विचारों की गंगा अभी बह रही है और ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने अपने स्थानों पर आप बने रहें। विचारों की गंगा में और डुबकियां लगाने के लिए हमारे बीच यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता और एक मोटिवेशनल स्पीकर, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट स्वाति नखाते हमारे बीच हैं। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, पर उससे पहले आइए उनके जीवन और कार्यों पर एक नजर डाल लें। Ms. Swati Nakhate is synonymous with voice for social justice. She is one of the noted leaders of Maratha agitations in Maharashtra. Ms. Swati was a staunch volunteer of the National Service Scheme during her college studies. Her service spirit was so high that she was selected to lead the National Service Scheme group at the State Republic Day Parade at Mumbai. She was elected unopposed as the General Secretary of the Students' Council in the Manikchand Pahade Law College at Aurangabad. Her college leadership helped Ms. Swati to become a social leader. Ms. Swati is a leading advocate in the Aurangabad bench of the Bombay High Court. Her knowledge of law and social justice made her a noted leader to stand for the rights of the Maratha communities. Ms. Swati is known for productive agitations. She leads agitations peacefully but forcefully. Her voice for the rights of the Maratha community received much appreciation from the political observers and the community members. Her speeches, interviews reflect her commitment for justice. She is an icon of inspiration to many in Maharashtra today. We are honored to welcome Ms. Swati Nakhate. तो आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं स्वाति नखाते जी को कि अपनी बात रखें। भारतीय छात्र संसद के इस पहले सत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर किस हद तक? सगळ्यांना सगळ्यात पहिले राम राम मावळे। जेवण झालंय? जागेवर आहात की नाही हे विचारण्यासाठी फक्त सुरुवात मराठीतनं करते। भारत माता की। माइक न वापरता, बिना माइक के भी मैं आपसे ज्यादा आवाज निकाल सकती हूँ। आखिरी बार पूछती हूँ, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद, थैंक यू।
आज मैं आपके सामने मराठा मुक्ति मोर्चा के एक लीडर बन के बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये खुलासा करना चाहूँगी कि इस मोर्चा के आगे कोई नेतृत्व नहीं है। आप मुझे लीडर समझ के मत देखिए। इसके लीडर पूरे महाराष्ट्र में जो संगठनाएं हैं मराठा समाज की वो भी है, पॉलिटिकल लीडर्स जो मराठा बन के रास्तों पे उतरे थे वो भी है, जो कॉमन लोग हैं जो मोर्चा में आए वो भी है, और यूथ जो आप जैसे और मैं हूँ वो भी इसका एक फेस है। तो मैं अपना मनोगत आपके सामने रखना चाहूँगी। इसका श्रेय पूरे मराठा समाज को जाता है। आजकल की परिस्थिति में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस हद तक महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी आड़ में महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, इस मुद्दे पर मैं अपना मत प्रदर्शित करना चाहूँगी। या उन्हें इन अधिकारों का उपभोग सही मायने में मिलता है, इस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगी। आर्टिकल 19 जो मूलभूत अधिकार हमें प्रदान करता है वह राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में दिए गया है, उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से अगर आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकार न होते तो या तो उनका अंतर्भाव आर्टिकल 20 में होता या फिर आर्टिकल 21 का महत्व कम हो जाता, क्योंकि किसी भी जीवित व्यक्ति को यह अधिकार जो अपने विचार करने और अपने विचार रखने का अवसर देता है वह उसके जीवन को परिपूर्ण करता है। लेकिन हमें यह अपने अंतर में झांककर सोचना होगा, क्या समाज हर एक को उसका अधिकार देता है? मैं ये इसलिए ही नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे राज्य घटनाकारों ने हमें यह अधिकार तो दिया है, लेकिन यह राज्य घटना हम पर किसी ने ना तो थोपी है ना हम पर किसी ने लादी है। ये राज्य घटना उसके प्रियम्बल के अनुसार हमने स्वतः प्रत अर्पण की है, यानी कि इस मुद्दे खुद ही हम ये राज्य घटना उसके प्रियम्बल ने के अनुसार हमें प्राप्त की है। बहुत ज़्यादा मॉब है इसलिए मैं भी थोड़ी घबरा रही हूँ, थोड़ा समझ लीजिए मुझे। इसलिए हम इस अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इस बात का भी विचार करना होगा कि यह अपने लिमिटेशन तो नहीं लांघ रहा। सर्वप्रथम इसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। यह अधिकार हमें खुद सीमाएं बनाकर दिए गए हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 292, 293 और 294। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) में जिसके मुताबिक हर भारतीय नागरिक को अपनी भावनाएं विचार खुले तौर पर निर्भीक होकर प्रस्तुत करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 19(2) में नागरिकों पर कुछ मर्यादाएं इम्पोज की है, जैसे कि हम देश के सार्वभौमत्व एकात्म का भंग नहीं कर सकते और हम ऐसे कोई विचार नहीं रख सकते जिससे सामाजिक शांतता भंग हो और देश का नुकसान हो। भारत में आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन, मैं टॉपिक को मेरे मुद्दे के साथ लेके जा रही हूँ। भारत में आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन घरों की चार दीवारों के अंदर होता है। आज भारत दुनिया में नया सुपर पावर बनकर उभर रहा है, लेकिन आज भी महिलाओं को घरों के अंदर अपने मत प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाती। आज हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन चुनकर आई गई महिलाएं क्या सचमुच अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है? क्या उन्हें प्रैक्टिकली उनके अधिकार इस्तेमाल दिए जाते हैं? इस मुद्दे पर हम अंतर्मुख होकर सच्चे दिल से सोचने पर मजबूर होते हैं। आज भी हर जाति के, चाहे वो सुवर्ण हो या फिर पिछड़े वर्ग का, हर जगह पुरुष सत्ता पद्धति का प्रभाव नजर आता है। मैं यह नहीं कहूंगी हर तरफ यह स्थिति है, बदलाव आ रहा है। महिलाएं अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन उनके रास्ते में दिक्कतें आ रही है। आज इंटरनेट हम सब की जरूरत बन चुका है। इस प्रकार की जानकारी हम हमारे अंगूठे के दम पर, हर प्रकार की जानकारी हम इंटरनेट में अंगूठे के दम पर पा सकते हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च पोर्नोग्राफी की जाती है। इंटरनेट हमारे सुविधा के लिए उस पर दी जाने वाली जानकारी आर्टिकल 19 के अनुसार वैध है, लेकिन
पोर्नोग्राफी आर्टिकल 19 को दिए गए सीमाओं के बाहर है, जिसे हम वैध नहीं कह सकते। इसका सबसे ज्यादा परिणाम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में है। आज का सिर्फ युवक ही नहीं तो हर उम्र का आदमी के मोबाइल में विभत्सक क्लिपिंग पाई जाती है। इसका दुष्परिणाम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बढ़ोतरियों में तब्दील हो रही है। ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं उसकी वजह से बाधित हो रही है, उनकी आवाज वहीं पर दबा दी जाती है और इस दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार लोग खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि समाज में होने वाले अपमान के डर से, या ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी जो पुरुषसत्ताक पद्धति है उसके डर के चलते महिलाएं अपने पर होने वाले अन्याय को बाहर नहीं जता पाती। इक्की दुक्की घटनाएं पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है। इसके परिणाम शहरी या ग्रामीण दोनों भी महिलाओं को भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ साल पहले पूना के कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला के साथ अत्याचार हुआ और उसके ऊपर बलात्कार हुआ। या हाल ही में अहमदनगर के कोपरडी जिले में जो लड़की के साथ किया गया अत्याचार और उसकी बाद में हत्या की गई, या खेरलांजी प्रकरण, ये मैटर तो हम सब जानते हैं। या कल परसों 5 दिन पहले की बात है दोस्तों, सांगली जिले की बिलवड़ी गांव में एक लड़की की हत्या की गई। हत्या अत्याचार के साथ की गई। मैं खुद कोपरडी में जो घटना घटी उसके बाद सामाजिक कार्यों में इस तरह से उतरी हूँ। मैं भी इंटरनेट का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हो रही है ये सुनकर मेरा खून खोल उठता है। मैं चाहती हूँ कि इन पीड़ितों को न्याय तभी मिलेगा जब उनको प्रेरित करने वाले संकेत स्थलों पर बंदी आएंगी। मैं नहीं कहती कि ये सब बंद होने से सामाजिक के दुर्गुण धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से उन पर थोड़ी तो पाबंदी आएगी। हम मराठा क्रांति मोर्चा के माध्यम से इन घटनाओं का लगातार निषेध करते आ रहे हैं। इस मोर्चा को जातिवाचक ठहराया, लेकिन मैं उनका एक छोटा सा प्रतिनिधि होने के हेतु यह स्पष्ट करती हूँ, जब भारत में किसी भी जाति किसी भी वर्ग की महिलाओं पे अन्याय होगा तब ये मराठा समाज उसके सामने उस अन्याय के लिए लड़ उठेगा और उसको न्याय देने की कोशिश करेगा। हमने जब मराठा क्रांति मोर्चा की शुरुआत करना सोची तो हमने सबने मोर्चा क्या स्वरूप से किसी भी प्रकार की अशांतता ना फैले, ये माध्यम रखा। कोपरडी कांड के मुद्दे को बगल ना मिले और राज्य घटना के आर्टिकल 19(2) की सीमाओं का उल्लंघन ना हो, इसलिए हमने यह मोर्चा मुख्य मोर्चा यानी साइलेंट मार्च के रूप में निकाला और यह मोर्चा दुनिया के इतिहास में एक नया रूप लेकर आया है। दोस्तों, मराठा ये जो मोर्चा है ये किसी कास्ट का नहीं है, ये किसी रिलीजन का नहीं है। मैं खुद मराठा होके कहती हूँ, जो दुनिया का इंसान मराठा खुद को कहलाता है और अन्याय के प्रति लड़ता है वो खुद को मराठा कहेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको सिखाया है कि स्त्री संरक्षण यही राष्ट्र का सबसे बड़ा संरक्षण है और उसी मुताबिक मैं चल रही हूँ। क्योंकि बात आज समाज में राज्य घटना की धारा 19 का सही इस्तेमाल उसके दायरे में रहकर और हमारे नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करने की आवश्यकता है। यह बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आज हर घर में भी महिलाओं की आवाज़ दबाई दी जाती है, चाहे वो शहर की हो चाहे वो ग्रामीण की हो। हम आज तकनीकी शिक्षा के अलावा नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रसारित करनी होगी, क्योंकि वही हमें सिखाएगा हाउ मच इज़ टू मच। ये तो मेरा टॉपिक था, मुझे आपने 10 मिनट दिए थे, मुझे जितना लगा मैंने उतना बोला। सर मुझे थोड़ा सा अगर 2 मिनट मिले तो मैं मोर्चा के बारे में कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच राहुल दादा। एक्चुअली सब तरफ, जब मैं खुद औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ, 9 अगस्त को यह मोर्चा शुरू हुआ। इस मोर्चा के आयोजन के समय पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, कहीं उस मुद्दे को बगल ना मिले इसलिए कोई घोषणा नहीं हुई थी। ये मोर्चा 9 अगस्त के दिन क्रांति चौक में क्रांति दिन के दिन शुरुआत हुआ और यह देखते देखते पूरे महाराष्ट्र में फैला और इसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। बहुत से राजनीतिक लोगों को लगा कि हम
अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए 100-200 रुपए देके लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये मराठा समाज बिना पैसे का कैसे इकट्ठा हुआ और सब तरफ चर्चा होने लगी कि इसे राजनीतिक कलह दिया जाए। लेकिन इसमें जितने भी लोग थे वो सब कॉमन लोग थे और जो भी पॉलिटिकल लोग आए वो भी कॉमन होके उसमें मिल गए। ये औरंगाबाद से शुरू होके 9 अगस्त से लेके 14 दिसंबर नागपुर तक बहुत सारे मोर्चा हुए, महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र के बाहर हुए, भारत के भी बाहर हुए। मैं कहती हूँ, मैं मराठा हूँ लेकिन मैं कहती हूँ ठाम दिल से मेरे कि अगर स्त्री पे अन्याय होता है तो कोई जात धर्म वर्ग मत देखो, सिर्फ उसके अन्याय को न्याय कैसे मिले यही देखो। हमने अगर किसी स्त्री को सम्मान दिया तो दूसरे हमें सम्मान देंगे। एक छोटी हूँ लेकिन जाते जाते थोड़ी बात कहना चाहूँगी। सर, स्टार्टिंग तो मैं एंकरिंग मैडम से करूँगी। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। राहुल भैया, आपको भी मैंने बहुत सुना था, कराट काका, उनके बारे में तो क्या कहे, 10 किलोमीटर का गांव था, लेकिन आज पता चला वो हमारे गांव के ही पास के हैं। इतने बड़े मंच पर इतने छोटी से एक व्यक्ति को आपने एक बहुत बड़ा सुवर्ण संधि दी है। एक तो मैं स्टेज जितना छुए आप बहुत कम है, क्योंकि अभी सर ने कहा इतने बने जाने माने पत्रकार कि वो 2012 में आए थे। देखिए मेरा बैड लक कितना है, 2012 में मैं अनइम्पोज जीएस थी, बिन विरोध जीएस, तो तब मुझे आना था लेकिन मैं आ नहीं पाई। इतने बड़े व्यक्ति आके चले गए। देखिए विद्यार्थी सपने देखने चाहिए, सपने देखेंगे तो सपने तुम्हारे पूरे होंगे। 2012 में मैंने एक सपना देखा था कि मुझे भी यहाँ पे आना है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ आ नहीं पाई। सपना मैंने देखा। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। सपने कैसे देखने चाहिए, जस्ट एक गुब्बारा है, फुगा बलून, उसको फुलाओ, उसमें हवा भरो और छोड़ दो उस सपने को। वो कहाँ तक जाएगा ना जाएगा उसके बारे में कुछ मत सोचिए, सिर्फ सपने देखिए। सपने खेल के देखिए, सपने पैसे के देखिए, सपने राजनीति के देखिए, सपने समाज के देखिए, सपने हर एक चीज के देखिए। देखिए मेरे 2005 का सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, सुनने के लिए आना था 2012 में, और सर के जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आपको थोड़ा सा सुनाने का, मेरा वो सपना देखो आज उल्टा पूरा हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ खुद पे इतना भरोसा करो कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाए और हमेशा थैंकफुल रहो, हर एक चीज के लिए थैंकफुल रहो, चाहे वो आपके सामने हो या आपके सामने ना हो। जाते जाते यही कहूंगी, देखो यूथ आप और मेरे और हम सब के ही हाथ में है कि हम भारत को कैसे बदलेंगे और ये जाति पाति के राजकारण से कैसे दूर रखेंगे। जो यूथ, जो दूसरे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को नाम रखते हैं ना, मैं तो उनको खुले दिल से कहती हूँ, बैठ के नाम मत रखिए, अंदर जाके झांक के देखिए वहाँ पे जाके कितनी डिफिकल्टी होती है। जो करते हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, और जिनको पॉलिटिक्स में सुधार लाना है वो खुद पॉलिटिक्स में इंटर होके सुधार लाए, ना कि बैठ के टीका करे। आपने मुझे इतनी बड़ी सुवर्ण संधि दी, मेरे को सुन के लिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरी टूटी मूटी फूटी हिंदी विथ मराठी, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, आपके विचारों को हमने सुना, शुक्रिया बहुत बहुत। और भारतीय छात्र संसद का ये सौभाग्य है कि अलग अलग विचारों को हम सुन पाते हैं, और हमारा ये भी सौभाग्य है कि हमारे हर सत्र में विधानसभाओं के अध्यक्ष महोदय रहते हैं जो कि अध्यक्षता करते हैं हमारे सेशंस की। और आज भी हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ही एक विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। पुदुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय वैथिलिंगम जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूं, इससे पहले आइए उनके जीवन कार्यों पर ये छोटी सी फिल्म देख लें। Mr. V. Vaithilingam is the Speaker of the Pondicherry Legislative Assembly. He was the Chief Minister from 1991 to 1996 and has been the Chief Minister again from 2008 to 2011. Mr. Vaithilingam belongs to one of the most politically influential families. He was born in Kudalur in Tamil Nadu. He was brought up in rural Madurakai, Pondicherry. He went to Loyola College in Chennai. From his very early age, he developed exceptional leadership skill, an example of which was his role as the chairman of Land Development Bank of Pondicherry State. In 1980, at the age of 30, he ran for the Legislative Assembly and lost with a narrow margin of 90-odd votes. In 1985, Vaithilingam won and became the Minister of Public Works and Power. He became a leading figure among the Congress party members.
Mr. Vaithalingam called for a greater participation of the private sector in the developmental tasks. He got a fame as highly sympathetic heart to the concerns of ordinary people. This ensured his return to power to become the Chief Minister in 1991. Mr. Vaithalingam is known for his credit of leading a stable and efficient government in Pondicherry through a complete 5-year term during his first tenure in the office. He is a senior legislator with service in 6 consecutive terms. We are honored to welcome Mr. Vaithalingam. हम आमंत्रित करेंगे अध्यक्षीय भाषण के लिए माननीय वी वैथिलिंगम को और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने स्थानों पर बने रहें। अभी हमारा सत्र खत्म नहीं हुआ है और विचारों को सुनने का मौका है। आमंत्रित करते हैं माननीय वी वैथिलिंगम जी को। धन्यवाद। I think all the student leaders, I think what a wonderful day, you participated so beautifully. I think this is the last speech, concluding speech, which the chairman of the session, Honorable Speaker of Pondicherry. So he is here. Please participate carefully. And after this, as you know, there is Youth to Youth Connect. There are some guidelines my team has given. And after this speech of Honorable Speaker, we will have a national anthem. So please respect the decorum. I think so far you have done wonderful. Next 2 days to go, wonderful. For tomorrow, I think I expect very good questions against like today. Thank you so much, Honorable Sir. Respected dignitaries on the dais, of the dais, ladies and gentlemen, I am grateful to all of you for inviting me here to speak on the topic of freedom of expression, how much is too much. I have great pleasure and privilege in participating in the August annual convention being attended by the elite dignitaries. In fact, it is nice discernment on the part of the organizers in having chosen this topic, which is very relevant in this present scenario. I congratulate the organizers in selecting this topic. The title being Freedom of Expression, How Much is Too Much, is really the cry of the hour. At the outset, I convey my greetings and wishes to the dignitaries and the audience on behalf of the Puducherry. In reality, the Indian Student Parliament, with its noble motto of inspiring youth, strengthening democracy, is also very relevant, and it is high time to deliberate and discuss. At this juncture, I appreciate the organizers for having thought it fit to select this topic, keeping in mind the future of youth, who are the pillars and rulers of tomorrow. No doubt, this topic will give them enough opportunities to make them well prepared and face the future challenges in strengthening the fabric of democracy. In India, the Constitution guarantees freedom of speech, but not the right to offend. The right to freedom in the Article 19 guarantees the freedom of speech and expression. In spite of this constitutional guarantee, the matter has been subject to dispute between the government and the press on several occasions since independence. Though the fundamental rights of the freedom of expression is provided in the Constitution, it is not unconditional. Such freedom does not confer an absolute right to express one's thoughts freely. What is actually necessary for India, which is largest democracy in the world, is that there should be a clear balance between the constitutional rights and the restrictions. On several occasions, we find the restrictions were misused for the political reasons. On several other occasions, we find the name of the constitutional rights. Few individuals and media pass willfully manufactured content to endanger the safety, security, integrity, and sovereignty of the country. We know that for the first half the century of independence, media was controlled by the state. But with the liberalization started in the 90s, private control of media has increased, leading to increasing the independence and greater scrutiny of the government. Hence, at this juncture, I call upon the people of our country, particularly the politicians, writers, artists, filmmakers, bureaucrats, and police, to support and stand for the cause of freedom and expression, as long as it is not endangering the sovereignty of the country. At the same time,
act responsibility. Let us preserve the spirit of democracy. Let us not hinder the freedom of expression just for the cause of electoral consideration. Let us ensure the gender, caste, community, religion, etc. do not come on the way of protecting the guarantee given by our Constitution. Though the Indian model of freedom of expression have been less appreciated across the world, our freedom of speech and expression is well insulated by our Constitution. The issue actually is on what is the limit of such freedom of expression. Before I recline to the chair, I wholeheartedly thank the organizers for having given me an opportunity to chair on this session to offer my views. I wish the deliberation and the annual convention all success in their endeavor. Thanking you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. A big round of applause, please. Thank you, sir. Thank you very much for being with us here today. Thank you. Now, it's time when we go to the important part of this session, and which is the resolution. And this is the time when I request my student leaders to take out their mobile phones and get ready for the resolution. Your vote is really important for us. But before I do that, let me give you a couple of important instructions. And the first one is, as you all know, you all are going to participate into Youth to Youth Connect activity after this, right after this session. But to convert your actions, to convert your ideas into actions, we have developed an app, and you will be seeing the details on the screen. I'll just read it out for you. We have SMSed you a link to download the app, which is going to be with you throughout the year as a continuation of Youth to Youth Connect activity. As you can see the link on the screens near to you, it's https://bcs.mit-events.org/bcs/app/bcs.apk. Please download and install that APK file, complete the registration process, and please do not forget your password. You have to simply open the app, log in, go to Youth Connect button, select the topic of your choice from the 10 topics which are already known to you. The topic icons will show the venues as well. We have made BCS 2017 Open Wi-Fi connectivity available for you. You don't have to consume your own data packs, my friends. You can simply connect. It's an open, non-password protected open Wi-Fi network, BCS 2017. You can simply connect to it, download the app, and please log in. Well, one more unique opportunity comes your way. On the last day, that is 19th of January, which is the last day of the conclave, at 5:30 p.m., because we keep getting many requests that we would like to meet Honorable Shri Rahul Karat sir, we would like to have a dialogue with him, we would like to meet him. So there is an opportunity for you on the last day at 5:30 p.m. at the Plato Hall, which is next to the Jnaneshwara Hall. You can take help of our student volunteers to find this particular venue. Honorable Shri Rahul Karat sir would be available there to meet you without any prior appointments. You can take advantage of this opportunity and you can meet him there on the last day. Let me quickly tell you that we will now be announcing the names of the students. I mean the registration numbers of the students, those who have got lucky from the lucky draw. And tomorrow they would be taking the chairs on the stage. You will see the slide of that particular declaration. We are making an arrangement outside also. You will be receiving SMSs on your mobile phones if you have got lucky. Tomorrow morning, we will also give you a reminder call. Please do find your numbers. I know this list is a little difficult to read, but we are displaying it outside. We are also sending you SMSs. Outside, as I have already told you, there are many stalls of different initiatives made available to you. You all are requested to visit all those stalls in your free time. And I don't have to tell you, tomorrow it's a big day. Next 2 days are here in front of us. Honorable Shri Shiv Kheraji, Ramdev Babaji, Ricky Cage, Manik Sarkar, Maulana Kalbe Rushaid Rizvi ji. There are many
reputed people would be coming in front of you and having a dialogue with you. But now, let me take your attention toward the resolution of the day. May I request my technical team to display the resolution. Freedom of expression, how much is too much? We, the student leaders of Bharatiya Chhatra Sansad, appeal to the government to implement a twin policy of promoting and protecting freedom of expression without political bias and to take legal action against all those who spread hatred in the name of freedom of expression. हम भारतीय छात्र संसद के समस्त छात्र नेता सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वह राजनीतिक पक्षपात से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके नाम पर घृणा फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंधित नीतियों को त्वरित लागू करें. And your time for voting begins now. You have to simply type BCS1 space Y if you want to support this resolution and send that SMS to 92121 48888. If you are positive, if you want to support this particular resolution, please type in your SMS BCS1 space Y and send this message to 92121 48888. Or if you want to oppose this resolution, please type BCS1 space N and send the SMS to 92121 48888. Only 1.5 minutes is left, less than that. Please type your message. Please go to your message windows. Type the SMS BCS1 space Y if you want to support, or BCS1 space N if you want to oppose, and send that SMS to 92121 48888. There is less than a minute left now. Please hurry up. Last few seconds, my friends, please hurry up. Finish the SMS sending process. If you want to support, SMS BCS1 space Y and send it to 92121 48888. मिलजुल कर अब काम करेंगे. Last few seconds. आओ अब कुछ बात करेंगे. मिलजुल कर अब काम करेंगे. तब 10, जाकर कुछ 9, बात 8, बनेगी. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And yes, a big round of applause, please. The resolution passes with 88.89%. Thank you very much. तो ये प्रस्ताव यहाँ पारित हो गया हमारे पहले सत्र में, और कल का सत्र 9 बजे सुबह ठीक यहाँ पर प्रारंभ होगा. लेकिन जाने से पहले आप सबसे अनुरोध करेंगे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. और इसके साथ ही ये सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे. अपने विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद देंगे और आपसे ये कहना चाहेंगे कि कल और परसों 2 महत्वपूर्ण दिन भारतीय छात्र संसद के, जिसमें तमाम विचारों को सुनने का मौका मिलेगा. हमारे साथ बाबा रामदेव होंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार होंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे और तमाम वक्ता होंगे जिन्हें सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचें, लेकिन समय से पहुँचें ये आपसे हम अनुरोध करेंगे. और अब
गौतम आपको कुछ और अनाउंसमेंट्स बताएंगे। Thank you very much, Neelam ji. Let me remind you once again, tomorrow morning we are starting at 9 o'clock sharp. So you make sure that you are on campus at 8 o'clock in the morning. So by 8:30 you can finish all the processes of security check and taking your refreshment packages, and you can be seated by 8:35 or 8:40, but we are going to start tomorrow morning at 9 o'clock sharp. Please make sure that you all are there on time, because we have to start this session right on time, and as I've told you, we won't be able to start this session without your presence. Once again, we are available on Facebook at Bharatiya Chhatra Sansad. We are there on Twitter at BCS Conclave. The hashtag for both is 7th BCS. We are also live on YouTube. Search 7th Bharatiya Chhatra Sansad so that you can find us on YouTube as well. Right now, you all are requested to proceed to your designated places for Youth to Youth Connect activity. I hope you all know your designated places. If not, you can take help at the help desk of Youth to Youth Connect activity. But I have already communicated, before we started with this session, I have communicated you the designated places where you are supposed to be right now for the Youth to Youth Connect activity. I request each one of you to be there at your designated place. Tomorrow morning at 9 o'clock sharp, we are going to begin with this session. All the students are expected to be seated by 8:30 a.m. considering the time for entry for such a large number that you should keep at least half an hour in margin. So we request you to reach the pandal at 8 a.m. sharp. You will get the refreshment packets at the entrance. Tomorrow there are 3 sessions. Session 2, the colonial mindset, a rich heritage or a curse. Session 3, reservation on caste, social justice or total injustice. After the 3rd session, there will be a lunch break of about 40 minutes. You are requested to complete your lunch within the given specified time